अगले 24 घंटे में भारी तबाही मचा सकता है चक्रवात। मंडौर, तमिलनाडु और पुडुचेरी तट से टकराएगा चक्रवात। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। मोर्चा संभालने के लिए एनडीआरएफ और नौसेना की टीमें तैयार हैं। तूफान के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया है कि हमारी टीम सभी उपकरणों के साथ तैयार है। हमारी टीम के सदस्यों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के लखनऊ में ऐतिहासिक स्मारक में आई दरारें। लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजे में पड़ी दरारें। भारी वाहनों के कंपन के कारण रूमी दरवाजे में दरार पड़ गई है। पुरातत्वविद के मुताबिक स्मारक जर्जर हालत में नहीं है। कुछ दरारें अभी सामने आई हैं। हमने स्थानीय प्रशासन को ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कहा है। संरक्षण के कार्य में करीब 4 से 5 महीने लगेंगे। मदुरई के अल्बर्ट विक्टर ब्रिज पर भारी वाहनों को प्रतिबंध करने की मांग। स्थानीय लोगों ने ब्रिज पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित यह ब्रिज 136 साल पुराना है, जिस पर हल्के और भारी दोनों तरह के वाहन गुजरते हैं। अब लोगों ने इस पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स में बोले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। कहा, दुनिया लोगों पर हंसती रहती है, लेकिन अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर किया गया नमन। कश्मीर के बारामूला में लोगों ने दिए और मोमबत्ती जलाकर जनरल रावत को याद किया। 8 दिसंबर 2021 को वेलिंगटन कॉलेज जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था देश के पहले सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु के सुलूर से उड़ान भरने के बाद भारी बादल छाने के बीच उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यूपी के बुलंदशहर में हिजाब को लेकर हंगामा। छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोके जाने के बाद हुआ हंगामा। पूरा मामला सिकंदराबाद के पीजी कॉलेज का है, जहां हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरीके से शांत करवाया। काफी देर समझाने के बाद छात्राओं को ड्रेस चेंज करने के बाद कॉलेज में एंट्री मिली। पंजाबी सिंगर बबू मान से मानसा पुलिस ने की पूछताछ। गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर बबू मान से हुई पूछताछ। मानसा के सीआईए ऑफिस में एसआईटी के अफसर ने बबू मान से सवाल जवाब किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में आरोपी की कोर्ट परिसर में हुई पिटाई। आरोपी पर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप। सुनवाई के लिए लाए गए आरोपी को कोर्ट परिसर में वकीलों ने पीटा। 2 अलग अलग समुदाय से हैं आरोपी और पीड़ित। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर जानलेवा हमला। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में गणेश कोकाटे की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। इससे पहले 18 सितंबर को भी उन पर हमला हुआ था। उस हमले में बाल बाल बच गए थे पीड़ित। पुलिस ने तब मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। कल हुए जानलेवा हमले में पुलिस की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्र से रैगिंग का मामला। रैगिंग करने वाले 10 सीनियर छात्रों की हुई पहचान। पुलिस ने 8 सीनियर छात्रों को हिरासत में भी लिया। सभी पर रैगिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। बाकी के 2 सीनियर छात्रों की तलाश चल रही है। जुलाई में कुछ जूनियर छात्रों ने रैगिंग की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सनसनी प्लास्टिक बैग में बंद मिला अज्ञात का शव। सड़क किनारे पड़े शव के बारे में नहीं मिल सकी कोई भी जानकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फेक आधार पैन कार्ड बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। फर्जी दस्तावेज जब्त। 1000 रुपए में फर्जी दस्तावेज बनाता था आरोपी। चंडीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। 2 से 3 साल से ड्रग्स तस्करी के काम में था सक्रिय। भारत के स्टार महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 की चैंपियनशिप चीन के खिलाड़ी को हराकर रजत पदक जीता। मीराबाई ने 200 किलोग्राम का भार उठाया। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था।
बांग्लादेश ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 5 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 266 रन ही बना सकी। फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा को बाएं अंगूठे में चोट लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद रोहित ने ओपनिंग नहीं की और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। भारत को आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा सिर्फ एक 6 लगा सके। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया भर में दूसरे नंबर के बल्लेबाज बने। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ 28 गेंदों में 51 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन भारत को जीत दिलाने में नाकाम रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये पेंटिंग कतर विश्वविद्यालय के एक फुटबॉल मैदान पर बनाई गई है। ईरानी पेंटर इमाद सालेही ने 9652 वर्ग मीटर में द स्टोरी ऑफ द बॉल नाम से पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में पिछले फुटबॉल विश्व कप की ऐतिहासिक यादें, मेजबान देश, पिछले विजेता और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की झलक है। पेंटिंग बनाने में 5 महीने का वक्त लगा और रोजाना 14 से 18 घंटे तक कलाकार काम करते रहे। पेंटिंग बनाने में 3000 लीटर से अधिक पेंट और 150 ब्रश का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक दिन बाद विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की पहली सालगिरह। दोनों ने पिछले साल 9 दिसंबर को शादी की थी। अपनी पहली सालगिरह से पहले ये कपल वादियों की सैर पर है। कटरीना ने 3 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि तस्वीरें विक्की ने खींची हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि दोनों शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर गए हैं। तस्वीरों में कटरीना येलो और रेड कलर का प्रिंटेड स्वेटर पहने नजर आ रही हैं। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म केदारनाथ को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सारा ने अपने को स्टार सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए भावुक नोट लिखा। सारा ने लिखा कि अभी भी ये एक सपने जैसा लगता है। सुशांत से म्यूजिक, फिल्म, किताबों, आसमान और सितारों के बारे में बहुत कुछ सीखा। जीवन भर की यादों के लिए धन्यवाद। केट विंसलेट और जेम्स कैमरन ने 25 साल बाद एक साथ किया काम। दोनों की टाइटैनिक के बाद एक साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित थे दोनों। निर्देशक जेम्स कैमरन के मुताबिक उन्होंने अपनी साइंस फिक अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए केट को प्रस्ताव भेजा और बस एक फोन कॉल में बात बन गई। केट विंसलेट ने अवतार द वे ऑफ वाटर में मेट काइना की लीडर रोनाल की भूमिका निभाई है। यह फिल्म 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। मैगजीन ने जेलेंस्की के साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी इसी कैटेगरी में जगह दी है। जेलेंस्की के बारे में मैगजीन ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत नहीं हारी। जेलेंस्की ने रूस की हरकत के खिलाफ दुनिया को भी एकजुट किया। इतना ताकतवर नेता कई साल में पहली बार देखा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध को लेकर चेतावनी दी। पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों को दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि रूस हर संभव तरीके से अपनी सीमा और अपने सहयोगी राष्ट्रों की रक्षा करेगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका है जिसने दूसरे देशों में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की सप्लाई को बढ़ाया। पुतिन ने मानवाधिकार परिषद की एक बैठक के दौरान ये बयान दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। एक ओर चीन की अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए सस्ते कच्चे तेल की जरूरत है, तो वहीं अरब राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों में तेजी से बदलाव की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों के सख्त रुख को देखते हुए अरब देशों ने चीन से नजदीकी बढ़ानी शुरू की है। उम्मीद है कि अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन और खाड़ी सहयोग परिषद की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों से भी शी जिनपिंग मुलाकात कर सकते हैं।
जर्मनी में बुधवार को सशस्त्र तख्तापलट की कथित साजिश रचने वाले संदिग्ध चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी हुई। करीब 3000 अधिकारियों ने जर्मनी के 11 राज्यों में 130 जगहों पर तलाशी ली और 25 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी संदिग्ध तथा कथित राइख नागरिक आंदोलन से जुड़े थे। ये सभी जर्मनी में युद्ध के बाद बने संविधान को नहीं मानते हैं और सरकार को गिराने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इस घटनाक्रम में एक रूसी नागरिक सहित 3 अन्य लोगों को संगठन का समर्थन करने के संदेह में पकड़ा गया था, जबकि अन्य 27 लोगों से जांच पड़ताल की जा रही है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक में जानवरों पर जानलेवा परीक्षण के बाद जानवरों के संगठन पेटा ने कंपनी से किए सवाल। पेटा ने ट्विटर यूजर से अपील की कि वो एलॉन मस्क से इस बारे में ट्विटर पर ही सवाल पूछे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने साल 2018 से अब तक जितने प्रयोग किए हैं उनमें से 1500 बंदरों की मौत हो चुकी है। स्पेन के बार्सिलोना शहर के करीब 2 ट्रेनों के बीच जबरदस्त टक्कर में 150 से ज्यादा यात्रियों को आई हल्की चोट। कोई भी गंभीर तौर पर घायल नहीं। मौके पर पहुंची आपातकालीन सेवाओं की टीम ने सभी यात्रियों की जांच की। मौके पर पहुंची जांच टीम ने बताया कि पहले से खड़ी एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी, क्योंकि दूसरी ट्रेन का ब्रेक वक्त पर नहीं लग सका। दोनों ट्रेनों में लगभग 800 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फूटा मौना लोवा ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। मौना लोवा से लगातार और धीमी गति से लावा बह रहा है। बहता लावा धीरे धीरे द्वीप के उस रास्ते की ओर बढ़ रहा है जो रास्ता द्वीप के 2 हिस्सों को जोड़ता है। स्थानीय लोग दुआ कर रहे हैं कि ये लावा बहना बंद हो जाए या फिर अपना रास्ता बदल दे। ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इटली के गुबियो शहर में सजाया गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने वाले इस क्रिसमस ट्री की ऊंचाई 750 मीटर और चौड़ाई 450 मीटर है। इस बड़े क्रिसमस ट्री को रोशन करने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी केबल वायर का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिसमस ट्री के रोशन होने के बाद जबरदस्त आतिशबाजी भी देखी गई। और विश्व बैंक ने वित्त साल 2023 के लिए भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान को 6.9% तक बढ़ा दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.9% बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले 2023 वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% आंकी गई थी। विश्व बैंक के एक बयान के मुताबिक भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी सहयोगी अफरीदा ने विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा से बातचीत की। सुनिए। Mr. Sharma, a number of agencies do growth forecasts, but the World Bank figures are given a certain legitimacy, a certain primacy. And like I said, it has generated a lot of optimism because the growth figures have been revised. Not only that, there are a couple of other pointers with regards to growing investments as well. Take us through, the important parts in the sense that when we say, since the report has spoken about robust economic activities, it has also spoken about how India has dealt with global shocks better than the other countries. Would you like to explain to us how India has fared better? That has that has in fact led to this revision in figures. Sure. Thank you for having me. Look, there are a number of reasons. India, our report makes a particular point about the term resilience. India's economy has become more resilient than it was several years ago. A number of reasons for that, including certain policy decisions, the buildup of buffers, and policy space and policy credibility. A number of measures have been taken over the last decade or so that have put India in this position. India is not immune to what is happening all around the world, but it is better placed to deal with some of those challenges than other emerging market economies in particular. We have, as you mentioned, upgraded our, we've revised our growth forecast for this fiscal year from 6.5% to 6.9%. That's partly a reflection of
that's partly a reflection of our assessment that what was expected to happen this year with global growth prospects, it's not perhaps as bad as initially thought several months ago. However, we did revise our forecast from 7 to 6.6 next year, and that's a reflection of the fact that we expect deteriorating conditions globally to weigh on growth prospects a little bit more next year. देश में कोरोना केसेस की कमी के बाद लोग बड़ी संख्या में हवाई सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड काल के बाद घरेलू यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इन सभी के बीच दिल्ली, मुंबई समेत भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा को लेकर लंबी कतारें देखी गई। इसको हल करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी प्रमुख हवाई अड्डों के प्रबंध कमेटी के अधिकारी भी शरीक हुए। All the security agencies, the various stakeholders at different airports, including airport operators of the bigger airports from Delhi to Mumbai, as well as Bangalore, Hyderabad and other top airports of the country were all present. And clearly the attempt and the message coming in from the ministry was to ensure that, of course, given the fact that there's festival season and there's increased rush expected, this is the time of the year during this point of time when many people take holidays, those traveling from the colder climates in north towards perhaps the coastal areas and vice versa. All of these, of course, are aspects that rush increases, and even, of course, the domestic and international travelers, both incoming and outgoing, increases during this point of time. And therefore, it's very important for the security and other logistical management of this airports to be near perfect. Of course, we are also looking at the fact that Mumbai, which already has, the maximum capacity possible through several hours of the day, operations are smooth so that this does not lead to any kind of backlog and hence difficulty for the passengers traveling in and out of the airport. राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपने पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐतिहासिक एनजेएसी विधेयक जिसे संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इस बिल को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह के विकास की कोई मिसाल नहीं है। The Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support. The Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House, too, passed it unanimously with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court by a majority of 4:1. तो इन खबरों के साथ ये डे ब्रेक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरा नाव के साथ। Powered by us. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight.
And Neha Hebale reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. In the country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। गुजरात की 182 तो वहीं हिमाचल की 68 सीटों के आज आएंगे नतीजे। गुजरात में 182 सीटों की मतगणना के लिए 37 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पुलिस ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक मतगणना की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। वहीं हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर का मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर आज आएंगे नतीजे। नतीजों से पहले शिमला के रिज मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री ने लोगों से की बातचीत। इस दौरान सीएम ठाकुर ने हिमाचल पर्यटन निगम के होटल आशियाना में गोलगप्पे का भी आनंद लिया। उनके साथ हिमाचल बीजेपी चुनाव से प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा, संगठन मंत्री पवन राणा और शिमला शहरी क्षेत्र से प्रत्याशी चाय वाले संजय सूद भी मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा समेत यूपी की खतौली और रामपुर सीट के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। सिसोदिया ने बीजेपी पर आप पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का लगाया आरोप। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो चुके हैं। हमारा कोई पार्षद नहीं बिकेगा। हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि उनका फोन आए या मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर ले। आपको बता दें, एमसीडी चुनाव में आपने 250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का मनीष सिसोदिया पर निशाना। कहा, सिसोदिया इतना घबरा क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार की पोल खुली है, आगे भी खोलता रहूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जब हम संसद में नोटबंदी पर बोलना चाहते हैं, जीएसटी या चीन के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। कैमरा हमारी ओर कभी भी नहीं आता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा के स्पीकर राजस्थान के हैं। लोकसभा टीवी को उनका चेहरा ज्यादा पसंद है। पूरे 24 घंटे वो सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखाते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी। आज सुबह 10 बजे पहुंच सकती है जयपुर। शाम को बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा में हो सकती है शामिल। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को सोनिया गांधी अपना जन्मदिन रणथंभौर में मनाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 9 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम है। राजस्थान कांग्रेस में फिर सामने आई गुटबाजी। नगर निगम द्वारा पायलट समर्थकों के पोस्टर हटाने पर मचा बवाल। जानकारी के मुताबिक कोटा में नगर निगम ने सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए, जिसके बाद बवाल मच गया। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पोस्टर्स को हटाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध किया तो निगम के कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम से पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं है। पायलट गुट ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता नहीं है कि बाकी पोस्टर बैनर लगाने के लिए निगम से अनुमति ली गई होगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी संसद में अपने बहुमत का उपयोग जबरन विधेयक पारित करने में कर रही है। साथ ही टीएमसी सुप्रीमो ने संसदीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की। ममता ने आरोप लगाया कि कम से कम 16 विधेयक ऐसे हैं जो राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में विचार और पारित कराने के लक्ष्य से उनको लिस्टेड किया गया है। ममता ने कहा कि अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो बहुमत के कारण सत्ता पक्ष बिना किसी मतदान के विधेयक पारित करवा देता है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपियों टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की बढ़ी हिरासत। स्पेशल कोर्ट ने 1 महीने बढ़ाई माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत। 7 जनवरी 2023 तक हिरासत में भेजे गए भट्टाचार्य कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर किया। आरोप पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने माणिक भट्टाचार्य, उनके बेटे सौविक भट्टाचार्य और पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य को नामजद किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक जाने वाली 282 बसों को किया रद्द। सीमावर्ती इलाके में तनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की सलाह पर एसटी निगम ने लिया ये फैसला। 1156 बसेस में से 382 बसेस को रद्द किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बीच प्रदर्शन जारी। महाराज में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने सीएम बोम्मई के पोस्टर फाड़े और कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों ने बेलगावी हिंसा पर जताई चिंता। कर्नाटक ने महाराष्ट्र से सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। राजस्थान के उदयपुर में अंतिम चरण में पहुंचा G20 शेरपा सम्मेलन। इस दौरान 19 देशों के 54 प्रतिनिधियों ने कुंभलगढ़ किले का किया दौरा। प्रतिनिधियों ने रणकपुर मंदिर का भी दौरा किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस और कई महकमों के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी दिखाई। शेरपा के आने से पहले दुर्ग पर प्रोटोकॉल के तहत रेड कारपेट बिछाया गया, जिस पर चलकर सभी ने दुर्ग का विजिट किया। वहीं कुंभलगढ़ किले पर पर्यटन विभाग की ओर से आए स्थानीय कलाकारों ने तिलक लगाने के साथ सभी का फूलों से स्वागत किया। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लगा 50,000 का जुर्माना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया ये जुर्माना। इससे पहले कोर्ट ने फेसबुक को सोशल मीडिया पर बनाई जा रही फर्जी आईडी और अश्लील तस्वीरों और वीडियो के खतरे की शिकायतों के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिस पर कंपनी की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा, देश में तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या। गडकरी ने बताया कि देश में 18 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां पंजीकृत हैं। वहीं यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में ईवी बिक्री में उछाल आया है। मंत्री के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा 4,14,000 तो दिल्ली में 1,83,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई हैं। उन्होंने बताया कि देश में कुल 5,151 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हैं और इन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा सुधार। हवा में सुधार के बाद एनसीआर से हटाया गया ग्राफ 3 का प्रतिबंध। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने AQI में सुधार के मद्देनजर ग्राफ 3 प्रतिबंध को हटा लिया है। आदेश के मुताबिक निर्माण, ध्वस्तीकरण और BS 4 पेट्रोल और BS 3 डीजल वाहनों पर लगी रोक हटाई गई। मुंबई में लगातार बढ़ रहे खसरा के मामले। बुधवार को मुंबई में खसरा के 12 मामले आए सामने, जिसके बाद इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 432 हो चुका है। राहत की बात यह है कि इस रोग से मौत होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। BMC के मुताबिक मृतकों की संख्या अब भी 8 है, जबकि खसरा से संदिग्ध मौत के मामलों की संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है। BMC के मुताबिक 51 स्वास्थ्य केंद्रों में 9 महीने से 5 साल तक की आयु वर्ग के 1,88,013 बच्चों में से 17,884 को खसरा रुबेला टीके की खुराक दी गई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने की समीक्षा बैठक। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पुडुचेरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ की मीटिंग। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बनने के कारण जारी की गई है भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटे में भारी तबाही मचा सकता है चक्रवात। मंडौर, तमिलनाडु और पुडुचेरी तट से टकराएगा चक्रवात। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। मोर्चा संभालने के लिए NDRF और नौसेना की टीमें तैयार हैं। तूफान के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश अलर्ट पर हैं।
एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया है कि हमारी टीम सभी उपकरणों के साथ तैयार है। हमारी टीम के सदस्यों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के लखनऊ में ऐतिहासिक स्मारक में आई दरारें। लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजे में पड़ी दरारें। भारी वाहनों के कंपन के कारण रूमी दरवाजे में दरार पड़ गई है। पुरातत्वविद के मुताबिक स्मारक जर्जर हालत में नहीं है। कुछ दरारें अभी सामने आई हैं। हमने स्थानीय प्रशासन को ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कहा है। संरक्षण के कार्य में करीब 4 से 5 महीने लगेंगे। मदुरई के अल्बर्ट विक्टर ब्रिज पर भारी वाहनों को प्रतिबंध करने की मांग। स्थानीय लोगों ने ब्रिज पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित यह ब्रिज 136 साल पुराना है, जिस पर हल्के और भारी दोनों तरह के वाहन गुजरते हैं। अब लोगों ने इस पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स में बोले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, कहा दुनिया लोगों पर हंसती रहती है, लेकिन अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर किया गया नमन। कश्मीर के बारामूला में लोगों ने दिए और मोमबत्ती जलाकर जनरल रावत को याद किया। 8 दिसंबर 2021 को वेलिंगटन कॉलेज जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था देश के पहले सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु के सुलूर से उड़ान भरने के बाद भारी बादल छाने के बीच उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यूपी के बुलंदशहर में हिजाब को लेकर हंगामा। छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोके जाने के बाद हुआ हंगामा। पूरा मामला सिकंदराबाद के पीजी कॉलेज का है, जहां हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरीके से शांत करवाया। काफी देर समझाने के बाद छात्राओं को ड्रेस चेंज करने के बाद कॉलेज में एंट्री मिली। पंजाबी सिंगर बबू मान से मानसा पुलिस ने की पूछताछ। गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर बबू मान से हुई पूछताछ। मानसा के सीआईए ऑफिस में एसआईटी के अफसर ने बबू मान से सवाल जवाब किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में आरोपी की कोर्ट परिसर में हुई पिटाई। आरोपी पर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप। सुनवाई के लिए लाए गए आरोपी को कोर्ट परिसर में वकीलों ने पीटा। 2 अलग अलग समुदाय से हैं आरोपी और पीड़ित। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर जानलेवा हमला। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में गणेश कोकाटे की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। इससे पहले 18 सितंबर को भी उन पर हमला हुआ था। उस हमले में बाल बाल बच गए थे पीड़ित। पुलिस ने तब मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। कल हुए जानलेवा हमले में पुलिस की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सनसनी प्लास्टिक बैग में बंद मिला अज्ञात का शव। सड़क किनारे पड़े शव के बारे में नहीं मिल सकी कोई भी जानकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फेक आधार पैन कार्ड बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। फर्जी दस्तावेज जब्त। 1000 रुपए में फर्जी दस्तावेज बनाता था आरोपी। चंडीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। 2 से 3 साल से ड्रग्स तस्करी के काम में था सक्रिय। भारत के स्टार महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 की चैंपियनशिप चीन के खिलाड़ी को हराकर रजत पदक जीता। मीराबाई ने 200 किलोग्राम का भार उठाया। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। बांग्लादेश ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 5 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 266 रन ही बना सकी। फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा को बाएं अंगूठे में चोट लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद रोहित ने ओपनिंग नहीं की और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। भारत को आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा सिर्फ 1 6 लगा सके। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया भर में दूसरे नंबर के बल्लेबाज बने। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ 28 गेंदों में 51 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन भारत को जीत दिलाने में नाकाम रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये पेंटिंग कतर विश्वविद्यालय के एक फुटबॉल मैदान पर बनाई गई है। ईरानी पेंटर इमाद सालेही ने 9,652 वर्ग मीटर में द स्टोरी ऑफ द बॉल नाम से पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में पिछले फुटबॉल विश्व कप की ऐतिहासिक यादें, मेजबान देश, पिछले विजेता और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की झलक है। पेंटिंग बनाने में 5 महीने का वक्त लगा और रोजाना 14 से 18 घंटे तक कलाकार काम करते रहे। पेंटिंग बनाने में 3000 लीटर से अधिक पेंट और 150 ब्रश का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक दिन बाद विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की पहली सालगिरह। दोनों ने पिछले साल 9 दिसंबर को शादी की थी। अपनी पहली सालगिरह से पहले ये कपल वादियों की सैर पर है। कटरीना ने 3 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि तस्वीरें विक्की ने खींची हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि दोनों शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर गए हैं। तस्वीरों में कटरीना येलो और रेड कलर का प्रिंट स्वेटर पहने नजर आ रही हैं। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म केदारनाथ को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सारा ने अपने को स्टार सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए भावुक नोट लिखा। सारा ने लिखा कि अभी भी ये एक सपने जैसा लगता है। सुशांत से म्यूजिक, फिल्म, किताबों, आसमान और सितारों के बारे में बहुत कुछ सीखा। जीवन भर की यादों के लिए धन्यवाद। केट विंसलेट और जेम्स कैमरन ने 25 साल बाद एक साथ किया काम। दोनों की टाइटैनिक के बाद एक साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित थे दोनों। निर्देशक जेम्स कैमरन के मुताबिक उन्होंने अपनी साइंस फिक अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए केट को प्रस्ताव भेजा और बस एक फोन कॉल में बात बन गई। केट विंसलेट ने अवतार द वे ऑफ वाटर में मेट काइना की लीडर रोनाल की भूमिका निभाई है। यह फिल्म 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। मैगजीन ने जेलेंस्की के साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी इसी कैटेगरी में जगह दी है। जेलेंस्की के बारे में मैगजीन ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत नहीं हारी। जेलेंस्की ने रूस की हरकत के खिलाफ दुनिया को भी एकजुट किया। इतना ताकतवर नेता कई साल में पहली बार देखा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध को लेकर चेतावनी दी। पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों को दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि रूस हर संभव तरीके से अपनी सीमा और अपने सहयोगी राष्ट्रों की रक्षा करेगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका है जिसने दूसरे देशों में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की सप्लाई को बढ़ाया। पुतिन ने मानवाधिकार परिषद की एक बैठक के दौरान ये बयान दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। एक ओर चीन की अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए सस्ते कच्चे तेल की जरूरत है, तो वहीं अरब राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों में तेजी से बदलाव की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों के सख्त रुख को देखते हुए अरब देशों ने चीन से नजदीकी बढ़ानी शुरू की है। उम्मीद है कि अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन और खाड़ी सहयोग परिषद की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों से भी शी जिनपिंग मुलाकात कर सकते हैं। जर्मनी में बुधवार को सशस्त्र तख्तापलट की कथित साजिश रचने वाले संदिग्ध चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी हुई। करीब 3000 अधिकारियों ने जर्मनी के 11 राज्यों में 130 जगहों पर तलाशी ली और 25 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी संदिग्ध तथा कथित राइख नागरिक आंदोलन से जुड़े थे। ये सभी जर्मनी में युद्ध के बाद बने संविधान को नहीं मानते और सरकार को गिराने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।
इस घटनाक्रम में एक रूसी नागरिक सहित 3 अन्य लोगों को संगठन का समर्थन करने के संदेह में पकड़ा गया था, जबकि अन्य 27 लोगों से जांच पड़ताल की जा रही है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक में जानवरों पर जानलेवा परीक्षण के बाद जानवरों के संगठन पेटा ने कंपनी से किए सवाल। पेटा ने ट्विटर यूजर से अपील की कि वो एलॉन मस्क से इस बारे में ट्विटर पर ही सवाल पूछे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने साल 2018 से अब तक जितने प्रयोग किए हैं उनमें से 1500 बंदरों की मौत हो चुकी है। स्पेन के बार्सिलोना शहर के करीब 2 ट्रेनों के बीच जबरदस्त टक्कर में 150 से ज्यादा यात्रियों को आई हल्की चोट। कोई भी गंभीर तौर पर घायल नहीं। मौके पर पहुंची आपातकालीन सेवाओं की टीम ने सभी यात्रियों की जांच की। मौके पर पहुंची जांच टीम ने बताया कि पहले से खड़ी एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी, क्योंकि दूसरी ट्रेन का ब्रेक वक्त पर नहीं लग सका। दोनों ट्रेनों में लगभग 800 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फूटा मौना लोवा ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। मौना लोवा से लगातार और धीमी गति से लावा बह रहा है। बहता लावा धीरे धीरे द्वीप के उस रास्ते की ओर बढ़ रहा है जो रास्ता द्वीप के 2 हिस्सों को जोड़ता है। स्थानीय लोग दुआ कर रहे हैं कि ये लावा बहना बंद हो जाए या फिर अपना रास्ता बदल दे। ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इटली के गुबियो शहर में सजाया गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने वाले इस क्रिसमस ट्री की ऊंचाई 750 मीटर और चौड़ाई 450 मीटर है। इस बड़े क्रिसमस ट्री को रोशन करने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी केबल वायर का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिसमस ट्री के रोशन होने के बाद जबरदस्त आतिशबाजी भी देखी गई। और विश्व बैंक ने वित्त साल 2023 के लिए भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान को 6.9% तक बढ़ा दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.9% बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले 2023 वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% आंकी गई थी। विश्व बैंक के एक बयान के मुताबिक भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी सहयोगी अफरीदा ने विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा से बातचीत की। सुनिए। Mr. Sharma, a number of agencies do growth forecasts, but the World Bank figures are given a certain legitimacy, a certain primacy. And like I said, it has generated a lot of optimism because the growth figures have been revised. Not only that, there are a couple of other pointers with regards to growing investments as well. Take us through, the important parts in the sense that when we say, since the report has spoken about robust economic activities, it has also spoken about how India has dealt with global shocks better than the other countries. Would you like to explain to us how India has fared better? That has that has in fact led to this revision in figures. Sure. Thank you for having me. Look, there are a number of reasons. India, our report makes a particular point about the term resilience. India's economy has become more resilient than it was several years ago. A number of reasons for that, including certain policy decisions, the buildup of buffers, and policy space and policy credibility. A number of measures have been taken over the last decade or so that have put India in this position. India is not immune to what is happening all around the world, but it is better placed to deal with some of those challenges than other emerging market economies in particular. We have, as you mentioned, upgraded our, we've revised our growth forecast for this fiscal year from 6.5% to 6.9%. That's partly a reflection of our assessment that what was expected to happen this year with global growth prospects, it's not perhaps as bad as initially thought several months ago. However, we did revise our forecast from 7 to 6.6 next year, and that's a reflection of the fact that we expect deteriorating conditions globally to weigh on growth prospects a little bit more next year.
देश में कोरोना केसेस की कमी के बाद लोग बड़ी संख्या में हवाई सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविड काल के बाद घरेलू यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इन सभी के बीच दिल्ली, मुंबई समेत भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा को लेकर लंबी लंबी कतारें देखी गई। इसको हल करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी प्रमुख हवाई अड्डों के प्रबंध कमेटी के अधिकारी भी शरीक हुए। All the security agencies, the various stakeholders at different airports, including airport operators of the bigger airports from Delhi to Mumbai, as well as Bangalore, Hyderabad and other top airports of the country were all present. And clearly the attempt and the message coming in from the ministry was to ensure that, of course, given the fact that there's festival season and there's increased rush expected, this is the time of the year during this point of time when many people take holidays, those traveling from the colder climates in north towards perhaps the coastal areas and vice versa. All of these, of course, are aspects that rush increases, and even, of course, the domestic and international travelers, both incoming and outgoing, increases during this point of time. And therefore, it's very important for the security and other logistical management of this airports to be near perfect. Of course, we are also looking at the fact that Mumbai, which already has, the maximum capacity possible through several hours of the day, operations are smooth so that this does not lead to any kind of backlog and hence difficulty for the passengers traveling in and out of the airport. राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपने पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐतिहासिक एनजेएसी विधेयक, जिसे संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इस बिल को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह के विकास की कोई मिसाल नहीं है। The Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support. The Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House, too, passed it unanimously with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court by a majority of 4:1. तो इन खबरों के साथ ही डे ब्रेक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरा नाव के साथ। Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do.
Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? To me, news is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मेट्रो मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। चुनावी दंगल खत्म हो चुका है और आज वोटों की गिनती होगी, नतीजे आएंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात और विधानसभा चुनाव की गिनती। वोटों की गिनती आज से शुरू हो रही है उस बड़ी खबर के साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज क्या कुछ नतीजे आएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के और हिमाचल विधानसभा चुनाव के। आपको बता दें खत्म हो चुका है चुनावी दंगल और अब बारी है नतीजों की। वैसे तो एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों को उनकी जीत या हार से आश्वस्त कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आता जाएगा माहौल बनता जाएगा। सुबह 8 बजे से आपको बता दें वोटों की गिनती शुरू होगी। क्या गुजरात की जनता एक बार फिर से कमल को सर माथे पर चढ़ाएगी या फिर त्रिकोणीय लड़ाई को और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी? हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ होगा, इससे जुड़ी और साथ ही साथ आपको बता दें सबसे पहले गुजरात से शुरुआत कर लेते हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों ने तो बीजेपी को बम्पर जीत दिला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम टर्फ पर बीजेपी इस बार भी बाजी मारते हुए नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। बहुमत का आंकड़ा 92 है। बीजेपी ने पिछली बार 111 सीटें जीती थी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का। फिलहाल अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चुनावी दंगल खत्म हो चुका है, सबकी निगाहें जो बड़ी बड़ी स्क्रीन होंगी उस पर टिकी होंगी। राजनीतिक दलों की निगाहें कैसे कैसे रुझान जब आएगा, राजनीतिक दलों की जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे होती जाएगी। फिलहाल क्या कुछ माहौल है? 1 घंटे बाद अब से वोटों की गिनती शुरू होगी। अगर केंद्रों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरीके की तैयारी चल रही है गुजरात में? अभिषेक जी, जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं, पहले इस वक्त मैं मौजूद हूं सीआर पाटिल जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने उनके घर के बाहर, और जिस तरीके से टाइम जाएगा वैसे यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा हो जाएगा। तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास सीआर पाटिल खुद श्री कमलम जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का वहां जाएंगे। और अगर व्यवस्था की बात करें तो लगभग 33 जिलों में, हर एक जिलों में काउंटिंग सेंटर है। अहमदाबाद में 3 काउंटिंग सेंटर है और सूरत में 2 काउंटिंग सेंटर है और आणंद में भी 2 काउंटिंग सेंटर है। तो लगभग 37 काउंटिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं 33 जिलों के अंदर। और साथ ही साथ 3 लेयर की सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, पुलिस बंदोबस्त के साथ काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी और 8 से 8:30 पहले पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे और 8:30 के बाद ईवीएम में जो वोट पड़े हैं उसकी काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने चालू हो जाएंगे। जिस तरीके से एग्जिट पोल
बता रहा है कि बीजेपी भारी बहुमत से आगे आने वाली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी एग्जिट पोल बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। वो सपने देख रही है कि क्या फिर एक बार या फिर कुछ बदलाव होगा और कुछ जादू होगा और उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो वो संतुष्ट नजर आ रहा है और 15 से 20% का वोट शेयर जो एग्जिट पोल उन्हें दे रहा है उससे वो संतुष्ट है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने की होड़ में आगे बढ़ती नजर आएगी। जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस देखें तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। क्या ये एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शन है वो सच साबित होंगे? ये वोटों की गिनती 8:30 बजे से चालू होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने भारी मार्जिन से जीतते हैं। और सीआर पाटिल की अगर बात करें तो उन्होंने हर बार 3 रिकॉर्ड ब्रेक करेगी बीजेपी ये कहा है। पहला रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सीटों का, दूसरा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लीड का और तीसरा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज। तो आज देखना होगा क्या ये भविष्यवाणी सीआर पाटिल जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के वो सही साबित होती है या नहीं। बिल्कुल अभिषेक हमारे साथ बने रहिए। सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी स्वराली इस वक्त सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। स्वराली, गुजरात में कैसा चुनावी दंगल रहा, आप उसकी गवाह बनी है। लोग किस तरीके से पोलिंग बूथ पर आए, उन्होंने अपना वोट दिया वहां पर पोलिंग बूथ पर जाकर। हालांकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से अभिषेक कर रहे हैं स्वराली की भारी संख्या में बीजेपी आश्वस्त है और एग्जिट पोल भी जिस तरीके से बीजेपी को आश्वस्त कर चुके हैं कि बीजेपी की बंपर जीत होने वाली है। सूरत में जहां पर आप हैं मतगणना केंद्र पर, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और क्या जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं क्या कुछ लग रहा है, कितने आश्वस्त दिख रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, फिलहाल हम हर्ष सांघवी जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर उनके घर के बाहर खड़े हैं और कल भी हमने उनसे बात की थी। तब उन्होंने ये विश्वास जताया था कि बीजेपी इस बार इतिहास रचेगी, सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे। अगर हम गुजरात इलेक्शन की बात करें, हम जहां पे भी गए हैं, सौराष्ट्र में गए, लोगों से जब बात की ये तो नजर आया कि लोग बीजेपी की ओर सीधे सीधे रुख कर रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो एग्जिट पोल भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो है कांग्रेस के मत तोड़े हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने ये कागज पर लिख के जताया था कि इस बार हम गुजरात में जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल्स को देखें, अलग अलग एग्जिट पोल्स को देखें तो हम इसमें से जान सकते हैं कि बीजेपी जो बार बार कह रही है और विश्वास जता रही है कि हम इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री, जैसे कि अभिषेक ने भी कहा, वो करेंगे। खुद पीएम मोदी ने भी ये कहा कि 150 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। अब तक का रिकॉर्ड 139 का है। खैर, अगर हम पिछले 3 इलेक्शंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट जो है घटे हैं और कांग्रेस के वोट बढ़ते गए हैं। 2017 के इलेक्शन में 99 सीटें आई थी बीजेपी की, जबकि तब भी कहा गया था कि 130 से ज्यादा सीटें आएंगी और कांग्रेस की 77 सीट्स आई थी। लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना था। पटेल कम्युनिटी यहाँ की एक स्ट्रांग वोटिंग कम्युनिटी है जो कि पूरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है और इसी की वजह से ये सारे वोट जो है कांग्रेस की तरफ मुड़े थे। उस टाइम पे हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस के एक मुख्य रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन अब हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। तो देखना ये होगा कि पटेल कम्युनिटी के वोट्स कैसे घूमते और जैसे जी स्वराली बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे एमसीडी चुनाव में क्या कुछ नतीजे आए, जीत किसकी हुई, उससे आप भी वाकिफ होंगे। बीजेपी वालों को भी शायद बड़ा झटका लगा हो क्योंकि वो दिल्ली में भी लगातार ये कह रहे थे कि एमसीडी में दोबारा सत्ता पर आएंगे। क्या लग रहा है, क्या आम आदमी पार्टी की, जिसे लोग रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, क्या उससे गुजरात की जनता का जो दिल है वो भी पिघलेगा? तो क्या कुछ लग सकता है कि वोट में सेंधमारी आप पार्टी कर सकती है? देखिए, एक तरीके से जो जिस तरीके से इलेक्शन चला और हर बार अगर बीजेपी को पूछा गया या कांग्रेस को पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि हमारी एक तरफा लड़ाई है और आम आदमी पार्टी कहीं भी यहाँ पर बीच में नहीं आती दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, साफ तौर पे 15 से 20% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी लेते हुए नजर आ रही है और तकरीबन 1 या 2 डिजिट, कोई अगर एग्जिट पोल देखे तो 11 से 12 सीटें तक
तक आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, ऐसा कहा गया है। और उसका सीधा सीधा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट शेयर खाया है, साथ ही साथ उनकी सीटों में भी सेंध लगाई है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का अपना ट्रेडिशनल वोट शेयर रहा है और उसके वोटर्स बूथ तक पहुंचे हैं और मतदान किया है। अगर आपको फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की तुलना में बताया जाए, 2017 के कंपैरिजन में वोटिंग भी परसेंटेज कम हुआ है, साथ ही साथ स्लो पेस, एकदम धीमी गति से वोटिंग की गई, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो बूथ तक पहुंचा है और उसने मतदान किया है। उसके चलते इस तरीके का एग्जिट पोल के नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने जा रही है, उसी से 15 से 20% के वोट शेयर से संतुष्ट नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी का बयान अगर आप सुनेंगे तो वो काफी संतुष्ट है जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया। हालांकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया है, लेकिन वो वोट शेयर में और वोट काउंट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा जब वोटिंग काउंटिंग चालू होगी। लेकिन एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन से अगर जाएं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होता ही नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वह कांग्रेस, जिसके वोट शेयर भी घटे हैं, सीट भी घटी है और 2017 के कंपैरिजन में यहां पर अब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा बचा नहीं, जिसके चलते बीजेपी हावी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, मोरबी हादसा हुआ था, क्या कुछ लग रहा है, क्या जनता उससे नाराज थी या जनता ने उसके लिए बीजेपी को माफ कर दिया है और बढ़ चढ़कर वोट दिया? देखिए, मोरबी की अगर बात करें तो 140 के लगभग लोगों की जाने गई हैं। इतना आसान नहीं रहा कि अगर लोग किसी को माफ कर दे। और साथ ही साथ अगर आप देखें जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है गुजरात सरकार को, मोरबी प्रशासन को, ये सारा रोष लोगों में दिख रहा है। लेकिन उसके चलते जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है, और आपको मैं बता दूं एक बड़ा मुद्दा जो ये पूरे कैंपेनिंग में रहा और बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि एक शांतिपूर्ण वातावरण और साथ ही साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी का, जिसको लोगों ने बढ़ चढ़कर पसंद किया है और बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स ने उसे वोट किया है। हालांकि मोरबी का जो इंसिडेंट हुआ है उसका रोष लोगों में है, लेकिन उतना रोष मतों में परिवर्तन नहीं हो पाया जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान आए हैं। और जिस तरीके से प्रेडिक्शन रहा है, अब वो कितना एग्जिट पोल टर्नआउट होता है असली नतीजों में वो देखना होगा। 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती चालू होगी, 8 से 8:30 के बीच पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। हालांकि बड़ा मुद्दा रहा मोरबी, अपोजिशन काफी तौर पर चिल्लाता रहा कि मोरबी में जिस तरीके से घटना हुई और प्रशासन शांत रहा। लेकिन अगर हम यही प्रशासन की बात करेंगे तो जिस तरीके से एक्शन लिए गए, कमेटी फॉर्म करी और ये सारी चीजें लोगों ने देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा था वो वोटर में नहीं कन्वर्ट हुआ और बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी को वोट कर रहा है। नरेंद्र मोदी को देखकर, अमित शाह को देखकर और खास जो गुजरात की अस्मिता है जिसको लेकर बीजेपी आगे चली है, उसको वोटिंग दी गई है। साफ तौर पे एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन से तो इतना ही समझ में आता है। बैक टू यू। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसी से तो बीजेपी आश्वस्त और उसे लग रहा है कि गुजरात में एक बार फिर से उसकी सरकार बनेगी। फिलहाल स्वराली और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजरात के साथ ही आपको बता दें हिमाचल प्रदेश का आपको बता दें विधानसभा सीटों की भी मतगणना शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हिमाचल राज्य में 68 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मतगणना में चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो हमेशा मौजूदा सरकार को वोट देता रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा या फिर जयराम सरकार का राज बदलेगा? ऐसे में क्या बीजेपी 37 साल पुराने चलन को तोड़ पाएगी? ये तो हुए 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हुए, उनके वोटों की गिनती आज होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, इस बीच सभी की नजरें 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर भी टिकी हुई हैं। उपचुनाव के साथ साथ हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट
उत्तर प्रदेश की, जहां आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मौत के बाद उनकी बहू डिंपल जो है वो उम्मीदवार बनी थी और खासतौर पर इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, ओडिशा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुर्नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा के आज नतीजे आएंगे। यूपी की मैनपुरी सीट, जहां अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण वो सीट खाली हुई थी, वहीं रामपुर सीट एसपी नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई थी। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने मुलायम के भाई शिवपाल सिंह यादव के पूर्व करीबी रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार गुजरात चुनाव की गिनती आज होगी। ये बड़ी खबर, काउंटिंग शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीद की जा रही है, साथ ही आप कार्यकर्ताओं को बधाई दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चुनावी दंगल में गुजरात चुनाव की गिनती आज शुरू होगी अब से कुछ समय के बाद, और काउंटिंग शुरू होने से पहले ये तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उसके बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीद की जा रही है। राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों का किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी से ये पोस्टर अपने दफ्तर के बाहर लगा दिया है। साथ ही आपको बता दें, आप कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी जा रही है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। Co-powered by ArcelorMittal Nippon Steel. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi. I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? To me, news is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight,
direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You've read the headline, now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror Now, you first. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror Now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. In the country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondia. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। सिसोदिया ने बीजेपी पर आप पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो चुके हैं। हमारा कोई पार्षद नहीं बिकेगा। हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि इनका फोन आए या मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का मनीष सिसोदिया पर निशाना। कहा, सिसोदिया इतना घबरा क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार की पोल खोली है, आगे भी खोलता रहूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, जब हम संसद में नोटबंदी पर बोलना चाहते हैं, जीएसटी या चीन के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। कैमरा हमारी ओर कभी भी नहीं आता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा के स्पीकर राजस्थान के हैं। लोकसभा टीवी को उनका चेहरा ज्यादा पसंद है। पूरे 24 घंटे वो सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखाते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। आज सुबह 10 बजे पहुंच सकती है जयपुर। शाम को बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा में हो सकती हैं शरीक। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को सोनिया गांधी अपना जन्मदिन रणथंभौर में मनाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस में फिर सामने आई गुटबाजी। नगर निगम द्वारा पायलट समर्थकों के पोस्टर हटाने पर मचा बवाल। कोटा में नगर निगम ने सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए, जिसके बाद बवाल मच गया। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पोस्टर्स को हटाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी संसद में अपने बहुमत का उपयोग जबरन विधेयक पारित कराने में कर रही है। साथ ही टीएमसी सुप्रीमो ने संसदीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की है। ममता ने आरोप लगाया है कि कम से कम 16 विधेयक ऐसे हैं जो राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में विचार और पारित कराने के लक्ष्य से उनको लिस्टेड किया गया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की बढ़ी हिरासत।
स्पेशल कोर्ट ने 1 महीने बढ़ाई माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत। 7 जनवरी 2023 तक हिरासत में भेजे गए भट्टाचार्य। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर किया। आरोप पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने माणिक भट्टाचार्य, उनके बेटे सौविक और पत्नी को भी नामजद किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक जाने वाली 282 बसों को किया रद्द। सीमावर्ती इलाके में तनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की सलाह पर एसटी निगम ने लिया ये बड़ा फैसला। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बीच प्रदर्शन जारी। मिराज में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने सीएम बोम्मई के पोस्टर फाड़े और कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों ने बेलगावी हिंसा पर जताई चिंता। कर्नाटक ने महाराष्ट्र से सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। राजस्थान के उदयपुर में अंतिम चरण में पहुंचा G20 शेरपा सम्मेलन। इस दौरान 19 देशों के 54 प्रतिनिधियों ने कुंभलगढ़ किले का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने रणकपुर मंदिर का भी दौरा किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस और कई महकमों के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी दिखाई। शेरपा के आने से पहले दुर्ग पर प्रोटोकॉल के तहत रेड कार्पेट बिछाया गया। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लगा 50,000 का जुर्माना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया जुर्माना। इससे पहले कोर्ट ने फेसबुक को सोशल मीडिया पर बनाई जा रही फर्जी आईडी और अश्लील तस्वीरों और वीडियो के खतरे की शिकायतों के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिस पर कंपनी की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, and more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarter, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? About one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते हैं, आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You've read the headline,
Now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror now, you first. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. Was a transformer blast. No arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, and more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on The Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. नमस्कार, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मिरर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आज का दिन बहुत ही खास है। 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें क्या कुछ आज नतीजे आएंगे उस बड़ी खबर के साथ। तो खत्म हुआ चुनावी दंगल और अब बारी है नतीजों की। वैसे तो एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों को उनकी जीत या हार से आश्वस्त कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे माहौल बनता जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। क्या गुजरात की जनता एक बार फिर से कमल को सर माथे पर चढ़ाएगी या फिर त्रिकोणीय लड़ाई को और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी? ये सब आज देखने लायक होगा। आपको बता दें गुजरात में 182 सीटों पर आज वोटों की गिनती शुरू होगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल्स के नतीजों ने तो बीजेपी को बम्पर जीत दिला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम टर्फ पर बीजेपी इस बार भी बाजी मारते हुए नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। बहुमत का आंकड़ा जो है आपको बता दें वो 92 है। बीजेपी ने पिछली बार 111 सीटें जीती थी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये लड़ाई अब त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। और सीधे रुक कर लेते हमारी सहयोगी स्वराली का, जो लगातार गुजरात में मौजूद है। आपको बता दें चुनावी दंगल की वो गवाह बनी। स्वराली, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि महज कुछ ही समय बाकी रह गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हालांकि वही दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी खेमे में उत्साह जरूर होगा, क्योंकि एग्जिट पोल उन्हें बम्पर जीत दिला रही है। स्वराली, जी फिलहाल हम हर्ष सांघवी जो कि होम मिनिस्टर है गुजरात के, उनके घर के नीचे ही खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं 37 काउंटिंग सेंटर्स है जहां पे काउंटिंग होने वाला है। अहमदाबाद में 3, सूरत में 2, आनंद में 2 और बाकी सारे 30 डिस्ट्रिक्ट्स में 1-1 काउंटिंग सेंटर्स है। मैं आपको बता दूं बीजेपी के खेमे में बड़ा ही उत्साह है, क्योंकि जो उन्होंने विश्वास जताया पूरे कैंपेन में कि 150 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जिन्होंने 30 से भी ज्यादा रैलीज की, रोड शोज के लोगों तक पहुंचने के पूरे प्रयास किए। और एग्जिट पोल भी वही बता रहा है कि हिस्ट्री बनेगी इस बार, बीजेपी खुद के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। हालांकि अगर हम
पिछले 3 इलेक्शंस की बात करते हैं श्वेता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें घटी थी और कांग्रेस की सीटें धीरे धीरे ही ना क्यों ना हो बढ़ी थी। लास्ट टाइम 99 सीट्स बीजेपी की और 77 सीट्स कांग्रेस की आई थी। हालांकि उसका रीजन जो है पाटीदार आंदोलन रहा। पटेल कम्युनिटी जो कि एक मेजर वोटिंग कम्युनिटी है जिससे पूरा गुजरात इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है और इसी की वजह से ये सारे वोट्स जो हैं मुड़े थे कांग्रेस की ओर। हार्दिक पटेल भी तब खुद कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। देखना यह होगा कि इस बार में दिलचस्प बात यह है कि ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी लोगों के दिमाग में अपनी जगह जरूर बनाई। अलग अलग कैंपेन्स हुए, प्रोमिसेस हुए, लेकिन अब वो वोट्स में कैसे टर्न होता है ये देखना होगा, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन में उनका 13% के आसपास वोटिंग शेयर रहा। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें उसमें भी 15 से 20% आम आदमी पार्टी का वोटिंग शेयर रहने वाला है, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसे प्रेडिक्शंस है। लेकिन ये जो वोट शेयर है वहां पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका गैर फायदा हुआ है, क्योंकि उनके वोट बटे हैं और बीजेपी का जो डेटा जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो लास्ट ईयर से इस बार कुछ अलग है और शानदार विक्ट्री उनकी होने वाली ऐसा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल स्वराली, इस बार अगर नुकसान किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी को होता नजर आ रहा है। उसके वोट बैंक में सेंध लगती नजर आ रही है और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, स्वराली भी जिस तरीके से बता रही है और खासतौर पर एग्जिट पोल भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि पहले भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी दंगल में एंट्री लेट हुई, यानी चुनाव प्रचार जो करना था उसमें थोड़ा पीछे रह गए और अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जो ये त्रिकोणीय लड़ाई थी उसमें कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती है, खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि कई पोस्टर भी आपको बता दें गुजरात में जो आप पार्टी का मुख्यालय वहां पर छप चुका है, राष्ट्रीय पार्टी खुद को घोषित करने के चक्कर में इन नतीजों के बाद गुजरात के। अभिषेक जी, जाहिर तौर पर देखिए एक चीज है जो एग्जिट पोल से बाहर आई है कि कहीं ना कहीं जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है 15 से 20% का। और मैं आपको बता दूं कि अगर 2 सीटें भी आम आदमी पार्टी को मिलती है तो नेशनल पार्टी का टैग उन्हें मिलेगा और कहीं ना कहीं 2 सीटें से ज्यादा ही बताई जा रही है, लगभग 11 या 12 के सीटों के आसपास ऑल ओवर अगर एग्जिट पोल देखेंगे तो बताया जा रहा है। और ये क्यों हुआ? जाहिर तौर पे जिस तरीके से उनका एग्रेसिव कैंपेन रहा, वोटर से कनेक्ट रहा और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के वोटर्स रहे उनको वहीं पर टारगेट किया गया और कहीं ना कहीं और उसी तरीके से कांग्रेस को डेंट हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी सीटें कम नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2017 और 2022 में क्या फर्क रहा, क्यों ऐसी चीजें थी। अगर 2017 की बात करें, डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा फैक्टर था, जीएसटी दूसरा फैक्टर था और तीसरा हार्दिक पटेल द्वारा किया गया पाटीदारों का आंदोलन, अल्पेश ठाकुर द्वारा किया गया ओबीसी का आंदोलन और जिग्नेश मेवानी जो कि एक बड़ा दलित चेहरा रहा जिसने दलितों के लिए आवाज उठाई। तो ये 3 प्रमुख चेहरे आज पॉलिटिकल पार्टी में विलीन हो चुके हैं। हार्दिक पटेल की और दूसरा अल्पेश ठाकुर की बात की जाए तो कांग्रेस में जाने के बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भी दोनों को टिकट दिया है। हार्दिक पटेल विरमगाम से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से। जिग्नेश मेवानी की बात करें तो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और वडगाम से कर रहे। बट यही बात है कि अब 2022 में कोई आंदोलन नहीं दिखाई दिया, न जीएसटी से लोग परेशान दिखे, न डिमोनेटाइजेशन से, और साथ ही साथ जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटा आ गया है 10% का, वही बीजेपी पाटीदारों को समझाने में संतुष्ट नजर आई कि आपको इसके चलते आपको आरक्षण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर जो 2017 में कांग्रेस के फेवर में थे, जिससे उन्होंने 77 सीट निकाल ली, अब कोई प्रमुख विरोध नहीं दिख रहा था और कोई प्रमुख फैक्टर नहीं था जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ चढ़कर सामने आती। और वहीं रहा प्रचार की बात, 1 या 2 रैली राहुल गांधी ने की, 3 से 4 रैली मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, तो उसके चलते इतना एग्रेसिव कैंपेन नहीं रहा और कहीं न कहीं जो ट्रेडिशनल वोटर बेस रहा है कांग्रेस का, वहां पर आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है और जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है बीजेपी का, वो उनके साथ खड़ा दिखा।
भले ही स्लो वोटिंग हुई, भले ही परसेंटेज कम हुए, लेकिन बीजेपी के वोटर बूथ तक पहुंचे हैं और उनको मतदान किया है। इसी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आए हैं और वहीं 8:30 के बाद तस्वीरें साफ होनी नजर हो जाएगी। क्या एग्जिट पोल के नतीजे टर्न आउट होते हैं और भारी बहुमत से बीजेपी जीतती है, ये आने वाला समय तय कर देगा। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। जिस तरीके से रुझान आते जाएंगे उस तरीके से तस्वीरें बिल्कुल साफ होती जाएंगी। फिलहाल अभिषेक और स्वराली, आप दोनों का शुक्रिया। और आपको बता दें, गुजरात विधानसभा के साथ साथ आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सीटों की भी मतगणना शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हिमाचल राज्य में 68 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मतगणना में चुनाव लड़ने वाली 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा आज। हिमाचल एक ऐसा राज्य है, आपको बता दें, जो हमेशा मौजूदा सरकार को वोट देता रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा। क्या बीजेपी 37 साल पुराने चलन को तोड़ पाएगी? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज आप सबके सामने होगा। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और किस तरीके से जो रिवाज है पुराना वो बदल पाएगा। बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी, क्या कुछ होगा, क्या आंकड़े कहेंगे। जो भी तस्वीरें हैं जिनमें बादल अभी लगे हुए हैं, आपको बता दें, वो तस्वीरें धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, आपको बता दें, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे रुझान शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे ये जो सभी तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस बाजी मार जाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनावी दंगल खत्म हो चुका है। जनता को जो कुछ करना था उसने ईवीएम में अपने मतों का अधिकार दर्ज कर दिया है। जनता किसे चुनेगी ये ईवीएम में दर्ज हो चुका है और साफ बात यह है कि अब महज औपचारिक, जो हम कहते हैं कि औपचारिकता ही बची है। जब वोटों की गिनती शुरू होगी, रुझान आएंगे। और हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या लग रहा है, क्या हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज चला आ रहा है वो बदलेगा? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और चूंकि हर बात जो है इस तरह के जो राज्य हैं जहां पर परंपरा रहती है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो दोबारा वापसी नहीं करती है, तो उसी आधार पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस वापसी के पूरे उम्मीद को लेकर आगे बढ़ रही है। और इस वक्त जहां मौजूद हैं ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है राजीव भवन शिमला में। और एक बार मैं तस्वीर तो दिखाना चाहूंगा, चूंकि ठंड का वक्त है, 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर उस तरह की हलचल नहीं है। लेकिन एक बार जो 10 गारंटी की स्कीम जो है कांग्रेस लेकर आई थी, जो कि चुनाव से पहले, जिसके आधार पर कांग्रेस वापसी समझ रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ओल्ड पेंशन स्कीम। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेकर आई, हिमाचल जैसा राज्य जहां पर तकरीबन 2.5 लाख से आसपास जो है सरकारी कर्मचारी हैं और अगर उनमें बड़ी संख्या कांग्रेस को वोट करती है, उनके परिवार में से 2-2 आदमी भी वोट करते हैं, तो एक अच्छा खासा एज जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। और कांग्रेस अगर सत्ता में आती हुई दिखाई देती है तो जाहिर तौर पर सीएम के चेहरे की लड़ाई होगी। और कुछ चेहरे मैं आपको तस्वीरों के जरिए दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर वीरभद्र सिंह की विरासत को लिए हुए उनकी पत्नी जो है प्रतिभा सिंह हैं, इसके अलावा सुखविंदर सिंह सक्खू हैं और इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री हैं। ये कुछ चेहरे हैं जो कि सीएम की रेस में नजर आएंगे, लेकिन ये सब कुछ तय होगा जब रुझान जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और 68 सीटों पे मतदान हुआ था और अब जो काउंटिंग है वो पोस्टल बैलेट के जरिए पहले शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे तक हिमाचल प्रदेश की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ दर्शकों को यह भी बता देना जरूरी है कि चूंकि हम अगर जिले के वर्गीकरण के हिसाब से देखें, 12 जिले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं और उसमें कांगड़ा जिला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में कांगड़ा में जो पार्टी बढ़त बनाएगी वो जाहिर तौर पर शिमला तक पहुंचेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। शिमला में 8 सीटें हैं, कांगड़ा में 15 है, मंडी की बात करें वहां 10 सीटें हैं, तो ये 3 जिले जो हैं वो बहुत
महत्वपूर्ण है किसी भी राजनीतिक दल की। अगर हम राजनीतिक दलों के नजरिए से बात करें तो जो सीनियर ऑब्जर्वर कांग्रेस के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो नजर बनाए हुए हैं। और अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा माहौल तो उनकी यहाँ पर मौजूदगी होगी। राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी हैं वो दिल्ली में हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से विनोद तावड़े जो हैं जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, वो शिमला में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस जो दो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी नजर है। आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा इसको लेकर जरूर संशय है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पीक में आते आते खुद को पीछे खींचना शुरू किया और उसकी सक्रियता यहाँ पर ज्यादा दिखाई नहीं दी, उससे समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी को उस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला है। लेकिन जो 35-37 सालों की परंपरा है, जो तरीका रहा है, वो क्या दोहराई जाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल शिमला और हिमाचल में जिस तरह की ठंड पड़ रही है वो ठंड जो है वो राजनीतिक माहौल में नहीं नजर आएगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब चहल पहल बढ़ेगी और रुझान आना शुरू होंगे, जाहिर तौर पर लोग उम्मीद करेंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल्स रहे हैं ज्यादातर उनमें औसतन भारतीय जनता पार्टी को एज दिया गया है, लेकिन कुछ एक एग्जिट पोल्स में जो है कांग्रेस भी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है जहां पर गुजरात से ज्यादा कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश से सरकार में वापस आने की उम्मीदें हैं। जी गौरव, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसके सिर सजेगा ताज, कुछ ही घंटों के बाद ये हो जाएगा साफ। ये तो हुए विधानसभा चुनाव के बाद। अब आपको बता दें कि कुछ जगहों पर उपचुनाव हुए विधानसभा में और सभी की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। 5 राज्य हैं जहां पर 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए और आज उनके भी वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट भी है जहां समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गढ़ को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी गई है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, ओडिशा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुर्नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा के आज नतीजे आएंगे जहां पर उपचुनाव हुआ है। यूपी के मैनपुर सीट आपको बता दें जो अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हो गई थी, वहीं रामपुर की सीट जो है एसपी नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई थी। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, जबकि बीजेपी ने मुलायम के भाई शिवपाल सिंह यादव के पूर्व करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। तो इस चुनावी खबरों के साथ यहाँ एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains
and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? To me, news is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते हैं, आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You've read the headline, now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror Now, you first. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror Now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? भारत के स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 की चैंपियन चीन के खिलाड़ी को हराकर रजत पदक जीता। मीराबाई ने 200 किलोग्राम का भार उठाया। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। बांग्लादेश ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 5 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 266 रन पर ही सिमट गई। फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा को बाएं अंगूठे में चोट लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद रोहित ने ओपनिंग नहीं की और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। भारत को आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा सिर्फ एक 6 लगा सके। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया भर में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 28 गेंदों में 51 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन भारत को जीत दिलाने में नाकाम रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये पेंटिंग कतर विश्वविद्यालय के एक फुटबॉल मैदान पर बनाई गई। ईरानी पेंटर इमाद सालेही ने 9,652 वर्ग मीटर में द स्टोरी ऑफ द बॉल नाम से पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में पिछले फुटबॉल विश्व कप की ऐतिहासिक यादें, मेजबान देश, पिछले विजेता और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की झलक है। पेंटिंग बनाने में 5 महीने का वक्त लगा और रोजाना 14 से 18 घंटे तक कलाकारों ने काम किया इस पर। पेंटिंग बनाने में 3000 लीटर से अधिक पेंट और 150 ब्रश का इस्तेमाल किया गया। Co-powered by ArcelorMittal Nippon Steel India. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarter, Mirror Now. Big fan. Hi. I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? To me, news is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते हैं, आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You've read the headline, now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror Now, you first. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror Now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street.
We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, and more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. Hi everyone, good morning. It's good to see you. It's the big counting day in two states, Gujarat and Himachal Pradesh. Exit polls are telling us that Gujarat is a done deal. The fight to watch out for today is Himachal Pradesh, a state that has never repeated a government. The tagline for this fight in the hill state is Raj Badlega Ya Riwaz. Counting just about getting underway is what I'm getting to know. As you know, postal ballots are the first to be counted. By 8:20 or so, the first real trends should start reflecting, should start coming in. We'll get you those numbers as and when we get them. We'll get you the accurate picture here on Mirror Now. Maybe not the fastest, but definitely the most accurate. Before we go to our reporters who are spread across Himachal Pradesh, Delhi and Gujarat, let's quickly take a look at the big headlines we are tracking this morning. It's the big election result today. In the run-up to 2024, counting of votes has begun in Gujarat and Himachal Pradesh and at 6 crucial by-polls in 5 states. All eyes on battleground state of Gujarat. The BJP, confident of a record 7th term, announces an oath-taking date as well. The AAP in the running to make a serious dent. Counting of votes underway for 68 seats in the Himachal Pradesh Assembly elections. The BJP seeks to buck the trend of the state voting out the incumbent government. Congress is hoping to wrest power from the ruling party. Irrespective of the results, it's a big day for the Aam Aadmi Party. If it manages 6% votes in any of these 2 states, it will become a national party, India's 8th. Also, result day for 6 by-poll seats across 5 states. A prestige battle between the BJP and the Samajwadi Party for Mulayam Singh Yadav's home seat, Mainpuri. Question is, will daughter-in-law Dimple Yadav swing it? Just hours after AAP's big Delhi win, big charge by Manish Sisodia. He is alleging the BJP is trying to poach its councillors. The BJP hits back, says the party believes in its own strength. As tensions simmer at the Maharashtra-Karnataka border, politics is peaking. Top Aghadi leaders will be meeting at NCP MLA Ajit Pawar's residence today. And no respite for Delhi and Mumbai residents. They continue to breathe poison. Air quality in both cities in the poor category. It's the Thursday potboiler, the election finale as it were. The mega verdict of BJP-ruled states Gujarat and Himachal Pradesh will be out today.
Counting has begun in both the states, so postal ballots being counted right now. I think we are already seeing the first trends coming in from both Gujarat and Himachal Pradesh. One for the BJP and one for, again, the BJP in Gujarat and Himachal Pradesh. So that's a good beginning, many would say, for the BJP. The BJP under the leadership of Prime Minister Modi, of course, aiming to create history in Gujarat, a record 7th win. Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party is hoping to dislodge the Congress as the main opposition in Gujarat. The Congress, of course, is trying to win Himachal Pradesh from the BJP. Now, exit polls, you already know this, have predicted a huge win for the BJP in Gujarat, while there's going to be a close contest between the BJP and the Congress party in Himachal Pradesh. Just a caveat here, exit polls often get it wrong. We've seen that happen yesterday. So the big breaking coming at the top of this hour is that counting has gotten underway for both Gujarat and Himachal Pradesh. And the first trends coming in, and these are just very initial trends that are coming in because the postal ballots have now been opened, but it's a good beginning. It's a good beginning for the BJP. One for the BJP in Gujarat and one for the BJP in Himachal Pradesh. Well begun is half done. Is that how we are looking at things? I'm going to go to our reporters to ask them that very question. A quick look at how Gujarat stands. If exit polls are to be believed, then the BJP is all set to sweep Gujarat. Prime Minister Narendra Modi's home turf for the 7th consecutive time. The battle is on for 182 seats in the assembly, and the majority mark is 92. So that's the magic figure, 92. The BJP had won 99 seats last time. The Congress had done very well because of the Patidar agitation. They had won 77 seats. While the contest in Gujarat has traditionally been a two-way fight between the BJP and the Congress, this year it became a three-cornered contest with the Aam Aadmi Party's entry into the elections. Let me go across to our reporters who are joining us on this broadcast. We have Swarali, we have Abhishek, both who are reporting to us from the state of Gujarat. We also have a guest from Gujarat who is joining us on the show. We have Yuvraj Pokrana, who's a columnist from Surat, who is with us in the studio as well. Good morning, Abhishek. Good morning, Swarali. Good to see you. Abhishek, over to you. What we are getting to know is that the BJP is so confident of their win in Gujarat that they have already decided a date for vote taking and who the chief guest is going to be. Of course, Prime Minister Narendra Modi. Yes, definitely. And, if we go by the predictions of exit poll, it is giving a thumping majority. And BJP has always maintained a stand from the beginning that has a direct fight with the Congress. And it's a bipolar battle, underestimating the undercurrent of Aam Aadmi Party. Definitely, if we go by the exit poll, you can see that 15 to 20% of the vote share is being definitely given to the Aam Aadmi Party. Will it turn out to be true is something that we will have to wait and watch out for. But celebrations and posters are out by Aam Aadmi Party of the celebration that they are going to be known as National Party after this, as the election turns out to be. And definitely, if we go about how BJP has led this entire campaign on safety, security, and, making prominence of the security, the peace in the state, and the way Prime Minister has done over 30 rallies across the state, touching urban and rural connect, is something that is, very prominent. In fact, BJP has also said that they are confident, they wanted that they are going to again come back to power, but this time they want to break all records. In fact, I am standing outside C.R. Patil's residence, the BJP state president. He has said that, BJP is going to break 3 prominent records of the highest seat this time, highest leads of its candidate, and highest voting percentage. I would also like to point out, despite of slow pace of voting, in fact, slow voter turnout in both percentage-wise, also in first and the second phase, but the traditional voter of the BJP has come down on the boot to vote. Definitely, there were some percentage down when we come to the urban areas, and the traditional voters of the Congress, I don't know where they were, but they didn't come out to the vote. In fact, the Aam Aadmi Party has dented the Congress vote share. In fact, the numbers of the Congress has also reduced if we go by the exit poll. So definitely the major loser at this given point of time when we look at the exit poll is definitely Congress, and somehow the other line, Aam Aadmi Party is satisfied with the exit poll, and the predictions of the exit poll
that the BJP will come back with a thumping majority is something that we will have to wait and watch out for. The number of seats, because last, if we compare it to 2017, they had 99 seats. Just look Whether at the numbers. they will cross the double digit and go to the... Just look at the numbers that are coming in, Abhishek. Yeah. Already 11. Already 11. Now these are initial trends. And of course, you know, we'll wait for another hour to have a clearer picture. But as far as Gujarat is concerned, I think the picture is fairly clear. If you look at the numbers that are coming into us, initial leads from postal ballots, you already have the BJP at what? I think it is 11 or was it 13? And the Congress is at some 2. Even in Himachal Pradesh, the BJP is at 2, the BJP is at 11, and in Gujarat and Congress is 3. Hardik Patel, I believe, is speaking to the press, very confident of a BJP win. I think everyone is confident of a BJP win in Gujarat, and it will be a historic win for multiple reasons. Quickly, let's listen into what Hardik Patel is saying. सर, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि आप अभी आए हैं काउंटिंग सेंटर में, कैसे आशाएं हैं आज के लिए? हमारी आशाएं नहीं है, पूरे गुजरात की आशाएं है कि ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात तय होने वाला है। ये चुनाव आने वाले फ्यूचर को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। और इसी कारण मेरा ये मानना है कि परिणाम 135 से 145 सीटों के साथ आएगा और एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस टाइम पहली बार एक एजिटेटर की तरह खुशी थे, अभी इस टाइम आप एक पॉलिटिशियन की तरह कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी से। पहले आप कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस, आप इसमें आपका क्या मानने हैं? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब से वो राजनेता ही होता है, क्योंकि पोलियो का टीका ही शुरू होता है ना तब से। तो एजिटेशन हुआ, फिर राजनीतिक पार्टी आई, लेकिन बेसिकली जो एजेंडा है वो है पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस करता है वो सफल होता है। बीजेपी को एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि बीजेपी लीड कर रहा है 125 से 135 सीट्स में, और ये सब कहा गया है कि जो ओबीसी एंड पटीदार कम्युनिटी में वहाँ पे बीजेपी का एक मैजिक फॉर्मूला सा चल गया है। तो उस पर आप लोग गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 7 करोड़ लोगों का भरोसा है, 50% से अधिक वोट मिल रहा है, तभी तो इतनी सीटें आ रही है ना। तो फिर किसी एक समाज से नहीं, सभी समाज का प्यार और सहयोग है, इसी कारण ये परिणाम आ रहा है। और एक जानना चाहेंगे कि एक भारत में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के जो एग्जिट पोल्स में भी दिखा जा रहा है कि वहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। क्या इलेक्टोरली वो इफेक्ट नहीं आ रहा है? उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? शादी जो घर में बीवी होती उससे होती है, फिर पड़ोसन के वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार गुजरात का चुनाव है, फिर आप दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो आपका विजन समझ आ जाता है कि आपका विजन गुजरात के लिए है ही नहीं। जहां शादी हुई है वहीं रिश्ता निभाना चाहिए। गुजरात का चुनाव है और आप यात्रा भारत जोड़ो के दूसरे राज्यों में करते हैं, फिर आप ये भरोसा रखते हो कि हमको गुजरात पसंद करेगा, कैसे करेगा? आपका विजन है गुजरात के लिए कि आने वाले 5 साल में गुजरात कैसा होना चाहिए? कोई विजन तैयार किया है कांग्रेस ने? नहीं किया, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आप एक्सपेक्ट करते, कितना सीट आएंगे इस बार बीजेपी को गुजरात में? 100 आपका एग्जिट पोल है, उसी हिसाब से सीट आएगा। आप टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल से सहमत हैं? यस। Obviously, Times Now के exit poll से सहमत होंगे. The news is good for the BJP as far as Gujarat is concerned. Just keep taking a look at the lower ticker there, and you'll be updated on where this fight is going. I think the picture is fairly clear as far as Gujarat is concerned, not just because of what the exit polls are predicting, because, well, frankly, you have to believe exit polls at your own risk. But seems for Gujarat, the exit polls have been fairly accurate already. The BJP leading in 23 seats, the Congress in 7, and the Aam Aadmi Party in 2. And if the Aam Aadmi Party even manages to win those 2 seats that they are leading in Gujarat, they become a national party. It's a big milestone for the Aam Aadmi Party there. I'm coming to Yuvraj, who's a columnist from Surat. He's joining us in the studio here in Mirror now. I think, Yuvraj, the picture as far as Gujarat is concerned is clear, and I'm not just going by these initial trends. Of course, we'll call the election much later. But the exit polls have been fairly confident of a 7th BJP win in Gujarat. Obviously, given the fact that this is the BJP's Garh, Prime Minister Modi comes here, look at the amount of effort that has been put, and the Congress has been missing from the ground, right? So, and though the Aam Aadmi Party was fairly visible. Our reporter Abhishek was telling us that the BJP's traditional voter that in 2017 had deserted them because of the Patidar agitation is now back with the BJP. Is that the only reason for the BJP win? Frankly, Gujarat elections, the moment they were declared, it was a done
signed and sealed a deal. There was no contention on the fact that BJP is going to come back to the power, and that too for the 7th time. The only issue was the voter turnout and the ground issues. And if anybody who's a student of politics, and especially Indian politics, and that too who follows BJP from very close, knows that Gujarat has been the laboratory of Hindutva. So there's no issue in Gujarat except for the fact that Narendra Modi is the face. And if you observe the election, the slogan campaign of BJP is "Aa Gujarat main banaviyu." That means I am the one who created this Gujarat. And this I does not mean Narendra Modi. This I does not mean the chief minister. This I means the common man. So this slogan resonated with the common man. That means the Narendra Modi has directly strike the chord of Gujarati Asmita. So there are no much issues. It was only Gujarati Asmita, Hindutva, safety for women, and a bunch of such minor issues. But the thing to be underscored is, back in 2017, the key factor was Patidar Anamat Andolan. That is the Patidar agitation, to be precise. But since 2017 to 2022, there is a gap of 5 years. And if anybody who has observed BJP's polity, BJP successfully engineered 21 or 22 defections since then. And out of that, nearly 14 defections focused entirely on Congress leaders, Patidar leaders, and that too from the Saurashtra belt, which did not bode well with BJP. So for now, I predict, what I predict is BJP is gonna a very bumper margin, bumper number of seats, especially with the Patidars of Gujarat. And what the aim is for this win to actually be the biggest win that the BJP has seen in the state of Gujarat. The 7th should be the biggest is what the aim is. Let me go across to Swarali, who is joining us from Surat. She's reporting from your city itself, Yuvraj. What's the mood in Surat? I mean, Swarali, the fact is that urban centers across India are a letdown when it comes to the vote percentage. That has happened in Gujarat as well. Surat is a place where the Aam Aadmi Party has done well in the past. Is that something they are hoping? And there's a lot of drama, by the way, that has played out in Surat as well. With a missing candidate, lost and found. From the Surat East constituency, and then he opted out of the race altogether. And the Aam Aadmi Party said that the BJP has threatened him and blackmailed him, and etc., etc. So all that drama is out of the way. But is the Aam Aadmi Party hoping to do well in Surat, or has everyone resigned to the fact that this is going to be a cakewalk for the BJP? Post all the controversies and events that are taking place during the entire event of Gujarat elections, let me tell you that it's a clear mood for BJP out here. It may be Surat, or if you look at the entire Gujarat, even when we have talked with people of Gujarat while traveling various cities to cover for the Gujarat elections, they have clearly opted out for BJP. But let me tell you, this time it's a triangular fight between, as compared to the traditional bipolar fight between BJP and Congress. This time AAP has definitely made undercurrents, as always Abhishek keeps on saying. They have made their space in the minds of people of Gujarat. Now it will be very interesting to see how much the voter turnout will be, because if you look at the local body elections before this main Gujarat election, 13% was the vote share for Aam Aadmi Party, and even if you look at the exit polls, it's more than 15%. So there is clear growth in Aam Aadmi Party's seat share. But let me tell you, the way Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal had, expressed his strength and believe that they are going to get the power in the state of Gujarat, that's not definitely happening right now. We are standing in front of Home Minister of Gujarat, Harsh Sanghvi's residence, and he may come out anytime and speak to us. Now, the fact being, as BJP has been saying in their rallies, and PM Narendra Modi himself did more than 30 rallies, somewhere they had shown this belief that more than 150 seats they are going to win, and the exit poll is resonating what they have been saying. Now, if you look at the Congress's seat, they have been dented by the Aam Aadmi Party, and somewhere they have also fallen short of the campaigning, as Rahul Gandhi just came 2 times in Gujarat, in Rajkot and Surat, and somewhere it falls short of campaigning if you look at the total scenario of Gujarat election.
Okay, Swarali, do stay on with us. Look at the numbers on your seats. Out of 182 in Gujarat, and that's what we are focusing on right now, not Himachal Pradesh. Out of 182 seats, the BJP already leading in 50, the Congress in 16 there. Himachal Pradesh, 68 seats, 22 leads are out, 13 for the BJP. But the Congress is not doing badly. This was billed as a close contest. So look at the numbers. Congress at 10, the BJP at 12. And you'll see a bit of a variation in these numbers as they come in, because as I said, they are just leads right now. You wanted to come in, Yuvraj, on the issue of Surat. Yes, there's a small interesting hack with regards to Surat. The very infamous seat of Surat East, the seat that Aam Aadmi Party candidate Mr. Kanchan Jariwala forfeited before elections. And interestingly, Manish Sisodia and Aam Aadmi Party Delhi unit alleged that he was kidnapped and hacked by BJP men. But contraventing this fact, the former Aam Aadmi Party candidate filed a complaint with the Surat police asking for security from the so-called alleged goons of Aam Aadmi Party and the alleged goons of Congress. And this contradicts the fact that he was tortured by BJP. According to his complaint, he needs support from police, and he fears for his life from Congress and Aam Aadmi Party people. No, that's what he said. Yeah, that's what he said. Very interesting. A lot of things got said during the election, you know. Kuch sach tha, kuch jhoot tha. So we'll just let that be, because... a small hack. Yeah. But I want to ask you where you think the Congress will do well in Gujarat. I know you lean towards the BJP, but fact is, let's not forget that they did manage 77 seats in 2017. So they must have got something right. In the last 5 years, have they managed to, you know, sort of lose all that goodwill? Or in Swarashtra, in the tribal belts, where traditionally the Congress has done well, are we expecting to see a repeat performance? Firstly, I'm sorry to let you down. I don't actually lean Look at the towards much numbers. BJP. 17 for the Congress that's party. That's where I'm coming. I don't lean much towards BJP. It's about pragmatic politics. And frankly, I've never undermined the role of Indian National Congress in Gujarat. I'll tell you why. Because Gujarat polity, just like UP and Bihar, runs on casteism, communities, and Congress has successfully groomed community leaders over the years. Let us say, for instance, Porbandar and Saurashtra region. So there is an OBC community, dominant community called MERS, M-E-R-S, the infamous community from which Miss Santokba Jadeja hailed. So they have successfully groomed community leaders, local leaders, and yes, Congress has its own strongholds where no party, let me underscore this, no party can skip those seats. So where Congress is, there Congress is. BJP cannot make a dent. And this is not coming from me. This came from the highest chaired authority of India. The Prime Minister himself said it publicly that we cannot undermine the role of Congress. Congress is involved in silent work. So yes, Congress is a very strong contender. And with regards to Aam Aadmi Party, frankly, kudos to them for their campaign, for they kick-started their campaign back in March 2022. They declared their candidature prior to BJP, prior to Congress. But yes, Congress is going to be the main opposition to the best of my knowledge. That is true, but as I said, you know, it could be a major milestone for the Aam Aadmi Party today. Because if they manage even 6% votes in either Himachal or in Gujarat, it means that they get the tag of a national party, and they will be India's 8th national party. So obviously, they are not winning either of these elections, but if they even manage this much, it will be a second day of celebrations for them. Yesterday, of course, was a day of celebration. They have won the civic polls, defeating the BJP. The BJP had been power in the MCD in Delhi for 15 years, so they have ended that 15-year rule. And when it comes to today, no one is expecting them to form a government either in Himachal Pradesh or in Gujarat, but today could be, as I said, a second day of celebrations. The Aam Aadmi Party, a quick, you know, before I go to Himachal Pradesh and we keep looking at these numbers, look at Himachal's 2017. This was built to be a close contest, and that's exactly what it is turning out to be. Yes. So that's Himachal Pradesh is the contest to watch out for. Gujarat, I think, fair, everyone is fair. Yeah, it's lopsided. Everyone knows where this election is going. But the Aam Aadmi Party in Gujarat, you're saying they've made a dent. They've made an impression, right? That we are here, we are also an alternative. See us, feel us this time, and see if you want to vote for us the next time. See, firstly, if you ask me on a personal note, I feel Aam Aadmi Party definitely has a future. But since they're the new kid in the block, so they lack a lot. They lack a lot of things, including their ideology. I'll tell you how.
Mr. Kejriwal increased the stipend of the Maulanas and Muslims, but on the contrary, when elections came and to appease the Hindu voters of Gujarat, he sorted to soft Hindutva. Let us say, for instance, printing the images of Bhagwan Ganesh and Ma Lakshmi on the notes. So somewhere he is vacillating between ideologies, and he doesn't seem to have a long-term goal. But yes, he's a very serious player. He's a key player, and I'll tell you how. Because the anti-BJP voters, they need a spare to land in. And when Congress is nowhere to be found, when Mr. Rahul Gandhi is busy the Jodoing Bharat Yatra, so anti-BJP votes or anti-Modi votes or so-called secular votes, they need a spare to land, and the best alternative that they can get is Aam Aadmi Party. But for that, Aam Aadmi Party needs consistency. If you observe the Gujarat campaign, of course, they kick-started the campaign the earliest out of the three parties or many parties that are in the fray. But as came November 2022, Aam Aadmi Party was again in the doldrums. They were nowhere to be found because they were occupied with the limited cadre, of course, hiring from Punjab and Delhi. They were occupied in the Delhi MCD elections. So they lack cadre, they lack ideology, and they lack consistency. Else, if they work on these points, I definitely see them as the main opposition in the coming 10 to 15 years. And they are going to achieve Congress's vote, and that is for sure. Punjab, Delhi are a living historical fact of that. Okay, the fact is that what they lack a lot of things in Gujarat right now, but what they have displayed is, and this is grudging admiration for them, that they have fire in their belly. Which is missing as far as the Congress party is concerned. Maybe state leaders, yes, there is still fire in their belly, but not the national party. Going across to Ahmedabad to our reporter Naved is there. Hi, where are you? Could you tell us where you're reporting from and what you're seeing right now? The pictures, I think, fairly clear as far as, oh my God, look at Himachal Pradesh. Give me a minute. Look at Himachal Pradesh, neck to neck. 21-21. This is the fight to watch out for. This is the fight to watch out for, and that's exactly what I'm going to go to next. But quickly to go to our reporter on the ground, because I believe, look at that, 108-24. So this is as clear as it can get. Naved? Naved, can you hear me? Right now, this is one of the... Yes, we are here in front in Ahmedabad right now. This is the counting center in the Gujarat Polytechnic College, and already senior leaders such as Hardik Patel and Congress candidates have already gone inside. The counting has already begun. From 8 to 8:30, the postal ballots will be counted, and from 8:30, the rest of the votes will be counted. A high-stake election, the counting underway here, and as you see that there is also security, heavy security that has been deployed to monitor the entire counting process. The BJP is very confident. We spoke to Hardik Patel. He says that he is standing by the exit poll and is expecting more than 130 seats. And the Congress candidate from Nicole Ahmedabad is also saying that the Congress will also do well and even more seats from the previous election. And they are also very confident to do well in Ahmedabad. Ahmedabad has 16 seats in the city, and the Congress is saying that they are going to get at least 7 to 8 seats in Ahmedabad itself and also the rest of the area. So the contest seems heated. Also, we spoke with the Aam Aadmi Party candidate. The Aam Aadmi Party also looks confident. They are seeing this election as an attempt to become a national party, and they are seeing that Gujarat will give them the platform to become finally a national party. So overall, all the sides are very confident, the Aam Aadmi Party, the BJP as well as the Congress. However, the counting has just begun, and we will soon know that what is the final results when the counting takes underway. Yes, the final result is, I think, an hour away, at least. But look at the trends coming in, and majority of the trends are already out as far as Gujarat is concerned. And the BJP, this is looking like a clean sweep to me. 182 seats, 148 trends out, and the BJP is leading in a majority of them. In fact, the BJP, I think, has crossed the halfway mark already. 114, there you have it. The Congress at 29. So a huge dip for the Congress party. Aam Aadmi Party 0, others 0. Last time, I think, independents had won some 6 seats or so. I'm just going to quickly shift our focus now to the hill state of Himachal Pradesh, where the real battle is actually brewing.
Gujarat possibly done and dusted, and it's not even 8:30 right now. But Himachal Pradesh, look at the numbers coming in. Out of 68 seats, 43, the first trends are out, and you have a neck-to-neck race between the two parties. This is dead heat, 22 for the BJP, 21 for the Congress party. The question is, who will form the government here? That is what is going to be extremely interesting. Raj badlega ya rivas? If tradition is to hold, then it is the Congress's turn to form a government this time. But what has the BJP shown us? The BJP has shown us that they don't care too much about tradition, because look at what has happened in Himachal Pradesh. For that matter, I beg your pardon, look at what has happened in Uttar Pradesh. Look at what has happened again in the state of Uttarakhand. Again, a state where that doesn't repeat its government, yet it has happened for the BJP in Uttarakhand. If it can happen in Uttarakhand, it can definitely happen, according to the BJP, in another hill state where they have a certain degree of goodwill, that is Himachal Pradesh. But let's see how things play out, because like most exit polls predicted, the race is neck to neck, Yuvraj. Yes, if we analyze the polity of Himachal, first of all, it's a hilly state, it's a small state. And on the contrary to Gujarat, see, we cannot gauge everything with the same parameters. On the contrary, where Gujarat even has had a margin of 1 lakh or 1,25,000, that is the winning margin. Correct. But if we analyze the seats of Himachal, Himachal is such a tiny state that the constituency size is barely 80,000, 90,000. And the polity of Himachal has been always bipolar. It used to vacillate between Congress and BJP, but as you rightly pointed out, BJP does not believe in the concept of jinx. It believes in hard work, and yes, we cannot undermine the hand of Congress. Congress has a fair chance, and if I were to give my prediction, I think Congress might win Himachal. Well, this is what the Congress is hoping as well. Of course, there is so much infighting in the Himachal unit of the Congress that there will be a fight over who becomes chief minister. Same is the case with BJP. Same is the case with the BJP. Yeah. In fact, I hear that there had to be intervention, from the highest level to sort out these issues before the BJP launched its campaign. If you remember, and I was being told that even after PM himself called a candidate to back out, it did not. He chose to fight as an independent candidate. Well, Hill people are independent people. They have a mind of their own. The BJP, if you remember, had won 44 seats in Himachal last time, and the Congress had won 21 seats last time. A neck-to-neck battle has been predicted in the state between the BJP and Congress. Although most exit polls had given an edge to the BJP, there was one exit poll that Aaj Tak had done, that India Today had done, which had said that the Congress is going to take this one because it is the Congress's turn to win. Plus, there has been infighting as far as the BJP is concerned, but then there has been infighting as far as the Congress is concerned in Himachal Pradesh. That is part of the DNA of Himachal's politics. Gurpreet, you're joining us from Himachal Pradesh. You're joining us from Shimla. Look at the numbers that are coming to us, 25, 24. So you are going to be busy, and very, very busy for the rest of the day today and possibly tomorrow as well. Well, yes, of course, we are reporting in front of the Chief Minister residence, Jairam Thakur. We have seen that a lot of political activities is going inside, and very close watch by the leader who are sitting inside. We have seen that not only the BJP, even the Congress central leadership, they have already reached at Chandigarh. What we have learned from the sources, Bhupinder Hooda as well as the Rajiv Shukla, they are sitting there, and once they will be able to see the trend, they will come here. So as of now, what we have seen that this time the traditional the way of polling here, this time they are expecting something interesting, because BJP has fought this election on the basis of the development, and the Congress had brought an agenda of unemployment as well as the old pension scheme. The both things they had given to the people, and they have given the promise to the people. But as of now, we have seen the trends. They are this neck to neck fight. This is happening here. And even I'll request my Vijay to show once again how
the political activities are going inside this Chief Minister residence, where we have seen Jairam Thakur along with some of the top level leaders. They are also sitting inside. They are also keeping a watch on the trends, and lot of people, lot of mixed responses coming on. We have seen the exit poll has already indicated the BJP is going to form the government, but this is the tradition in Himachal Pradesh. One time the Congress gets the opportunity, other time the BJP is getting the opportunity, but this time it seems that the BJP is in a mood to just break this tradition which was going on. And if we can talk about the overall situation in Himachal Pradesh, we have seen the Congress netas, they have already given direction to all the Congress MLAs. Once they are going to get the certificate, immediately they are supposed to report to the Sangathan members who are the central leadership, so that they will be able to make a plan that if they are going to shift from here, Himachal Pradesh, to some other state. At the same time, we have seen yesterday the Chief Minister of Himachal Pradesh, he has already said that all the MLAs are intact. In the BJP, this type of poaching is not expected at any cost, but yes, Congress people, they are worried. We have seen even some of the leaders, they had already indicated that some of the MLAs as well as some of the leaders, they can be poached any time, so that's why they are already taking all the precaution. And if we can talk about the Congress, yesterday we have seen that marathon discussion has already been gone between the leaders, and finally they had expelled the 30 leaders from the BJP who were indulged in that anti-Congress activities during the election campaign and during the voting also. So all these things are being previewed. But if we can talk about even these trends which we are getting at this point of time, the fingers are crossed from the both sides, whether it's the BJP side or the Congress side. And all the top leaders of the Congress from Himachal Pradesh and from the central leadership, they are keeping an eye on each and every trend, because this time both the sides, Congress was thinking that they will be able to encash anti-incumbency, and we have seen so many times there is a lot of revolt against the sitting Chief Minister of BJP, Jairam Thakur, and they were expecting that this anti-incumbency they will be able to encash. And OPS, that is one of the prominent promise which was given by the Congress, that old pension scheme, because if we can talk about the Himachal Pradesh, a lot of employees are residing here, lot of voters from the employee side, so they thought that they will be able to win with this OPS scheme. But now we have to wait and watch to find out whether this development agenda will be prevailing, because we have seen Prime Minister, he has visited many times in Himachal Pradesh, or this OPS scheme will work. We have to wait and watch, and we will see that how the trends are going to be shift toward the BJP or Congress. Back to studio. The wait is going to be a bit long. Thank you. The wait is going to be a bit long for Gujarat, because no one in their right minds is going to call this election till the time the final figures are out. Because just take a look at how neck to neck everything in Himachal Pradesh is playing out. Look at the numbers, 29, 25. A short while ago, 2 seconds ago, they were 25 and 25. But Gujarat, I think, is clear. 131 comfortably crossed the halfway mark. Ho gayi Gujarat ki kahani, 8:30 baje khatam. Yuvraj. Chief Minister, what about the Chief Minister? Because, you know, we've seen Chief Ministers have not particularly had a good stint as far as the BJP is concerned. 3 of them were changed. Is the BJP likely to repeat any of the 3? Are we going to see a new face? How's this going to work out? I know the swearing-in ceremony ka date has already been fixed. 10th to 12th? What are you hearing? Yes, 10 to 12th, and this has been declared by none less than the BJP Gujarat chief. But I'll tell you a very interesting story, and I'd prefer to speak in vernacular. हिंदी में जैसे कहा जाता है कि हमारे रामायण में है कि जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तो उनकी पादुकाएं रख के भरत ने राज किया था. So that is the case with Gujarat. No matter who is the chief minister, people do juxtapose that CM with Narendra Bhai. And that is the love that we Gujaratis have for PM. आप लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, but an आम आदमी like me calls him नरेंद्र भाई. So no matter who is the CM, कुर्सी पे कोई भी होगा, हम नरेंद्र भाई से कंपेयर करेंगे, और हमको लगता है कि नहीं, इसमें इनमें इतना मजा नहीं आया, तो ये ऊपर तक बात जाती है. और नरेंद्र भाई जैसे लोगों से जुड़े, still as a network and connect with the local guys. I'll share a very small hack with you. Before elections, what Narendra Modi does is,
जो कार्यकर्ता उनके हैं इन द अर्ली 80s, इन द लेट 70s, पुराने लोग उनको लैंडलाइन से, पीएमओ से ही अपने घर से कॉल करते हैं और बात करते हैं, और उठा के सीधा आपसे बात नहीं करनी, सीधा अरे बहन को फोन दे, उनकी वाइफ से बात करेंगे. एंड दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद द पीपल ऑफ गुजरात. इट डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर, इट डज नॉट नीड लोकल और रीजनल लीडरशिप. वो डायरेक्ट कनेक्ट बनाते हैं और उनको ऐसे फीडबैक मिलता है. दैट इज व्हाई आई थिंक ही कीप्स ऑन चेंजिंग द सीएम. जो टॉपलिंग होती है ना, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक रिव्यू. गवर्नेंस की बात हुई तो गवर्नेंस का नरेंद्र मोदी has set a standard, he has set a benchmark. So no matter who is the CM, just hypothetically, if assuming that you become the CM or even I become the CM the next day, तो गवर्नेंस का जो मॉडल है that is set by PM Modi himself, that is perpetually, that will perpetually keep on going. It is not about governance, it is not about corruption, it is about the people getting a connect with the CM. Okay, so which means one man has won this election for Gujarat, for the BJP in Gujarat, and that one man is Prime Minister Narendra Modi. Chief Minister, Chief Minister koi bhi ho, for Gujarat, forever, Narendra Modi is the Chief Minister and the Prime Minister. Okay, those numbers on your screens, as I said, Gujarat done, Himachal, this is where the dead heat is. The hill state is throwing up a battle for the ages, as they say. 31 for the BJP, 33 for the Congress. But this is changing very, very fast. It's a neck-to-neck battle. We are keeping track of it right here on Mirror Now. For the moment, I'm slipping into a quick break on the show. But do remember that there are by-polls in 5 states across the country. So their results are going to be out today. Mainpuri is looking very interesting as well. Will Mulayam Singh Yadav's daughter-in-law swing Mainpuri, which is her father-in-law's constituency and traditional seat? That is something we are keeping an eye on as well. For the moment, with these numbers on your screens, I'm slipping into a quick break. The rest of the news with Samia. Do stay with us. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror Now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? News is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो. We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every
tax-paying, law-abiding urban Indian. Because honestly, we deserve better. You've read the headline, now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror now, you first. Every day we wake up to new possibilities. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. Good morning, hello and welcome. You're watching Mirror Now and I'm Samya Kapoor, and today is the big political potboiler of a day with the verdict coming in for the states of Gujarat and Himachal. And on this big day of election results today, in the run-up to 2024, countings of votes begin for Gujarat and Himachal. And let's take you through what's making headlines today. The big day of election results today in the run-up to 2024. Counting of votes begins for Gujarat and Himachal Assembly polls and at 6 crucial by-poll seats in 5 states. All eyes on battleground of states of Gujarat. BJP confident of a record 7th term announces oath-taking dates. Aam Aadmi Party in the running to make a serious dent. Counting of votes underway for 68 seats in the Himachal Assembly. BJP seeks to buck the trend of state voting out the incumbent government. Congress hopes to wrest power from the ruling party. Irrespective of the results, a big day for Aam Aadmi Party. If it manages a 6% votes in any of these 2 states, it will become a national party, India's 8th. Also results, a day for 6 by-poll seats across 5 states. Prestige battle between the BJP and the Samajwadi Party for Mulayam Singh Yadav's home seat, Mainpuri. Will Dimple swing it? And here on Mirror Now, our prime focus is going to be the results all day. But we are going to start the bulletin first with the by-poll stories that are coming in, where all eyes on the by-poll counting for 6 assembly constituencies across 5 states, as well as high-profile Mainpuri Lok Sabha seat, where the Samajwadi Party is competing in a prestige battle to retain founder Mulayam Singh Yadav's turf. Rampur and Kathauli in Uttar Pradesh and Padampur in Orissa, Sardar Shahar in Rajasthan, Kurhani in Bihar and Bhanu Pratap in Chhattisgarh are the assembly seats where results will be declared today. A high-stakes contest was witnessed in Uttar Pradesh's Mainpuri seat, where the by-elections was necessitated by the demise of the Samajwadi Party patriarch Mulayam Singh Yadav in October. And in Rampur, Sardar seat that fell vacant due to senior leader, SP leader Azam Khan's disqualification. Mulayam Singh Yadav's elder daughter-in-law and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's wife Dimple Yadav is the Samajwadi Party's candidate in Mainpuri, a pocket borough of the Yadav family. While BJP has fielded Raghuraj Singh Shakya, a former confidant of Mulayam Singh Yadav's brother Shivpal Singh Yadav. Well, while our prime focus is going to be the result day, where the verdict for Gujarat and Himachal Pradesh is going to be pronounced today, as people have sealed the fate as to who is going to be their leaders, their government in these 2 respective states. But the by-polls is also going to be very, very interesting, and especially from Mainpuri, which is a seat of the Samajwadi Party, the senior patriarch who passed away earlier this year, and after which the entire seat of Mainpuri fell vacant, and that's the reason why Akhilesh Yadav's wife Dimple Yadav has decided to contest from there against the BJP's senior leader, who was also a close confidant of Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav's brother Raghuraj Singh Shakya, a former confidant of Mulayam Singh Yadav's brother Shivpal Singh Yadav. And these are going to be a close contest, although
And I'm joined by my colleague Amir to get us more details. Amir, it looks like a nail-biting situation over there in Mainpuri because the BJP is not willing to give up on this prestigious seat. And as far as Samajwadi Party is concerned, it's a matter of retaining their family legacy if they hold on to the Mainpuri seat. Well, right, Samya, and although this is more a battle of prestige rather than making or breaking government, like Gujarat or Himachal, but then all eyes are focused here on the Mainpuri seat because this definitely happens to be a very crucial fight that the ruling party here, BJP, is putting up against Samajwadi Party, and this is all happening in the stronghold, the bastion of Samajwadi Party and its founder Mulayam Singh Yadav, especially just 2 months after his demise, and therefore there is no stone unturned that the Samajwadi Party leadership has left as far as making this contest, very, very difficult for the BJP as well. In fact, right now I'm opposite the counting center in Mainpuri. I'll ask the camera person to show you the visuals here. The counting here started a bit late at around 8:15 a.m. And the recent trends, the latest trends coming in from the Jaswant Nagar area wherein postal ballots have been counted over the last half an hour or so. Actually show that Samajwadi Party's Dimple Yadav is actually leading in terms of at least postal ballots being cast in favor of Samajwadi Party. But then BJP, as I said earlier, also did not leave any stone unturned. But Amir, if I could come back to you, remember it was Akhilesh Yadav who held a press conference and claimed that there were attempts being made by the BJP government, especially by Yogi Adityanath's administration, to try and rig the polls. We also saw how the Samajwadi Party was very, very vigilant, where they decided to depute their party karyakartas and senior leaders to even follow the EVMs to the strong rooms. What does the Samajwadi Party say? If at all they lose the election, are they already building a ground for it to be a case of rigged elections? Well, right, and this has been the case in the, earlier this year concluded 2022 Assembly elections as well, wherein Samajwadi Party at a number of places claimed that the polling parties as well as polling officials and the local administration and the police was actually siding with the BJP. So that had been the allegation this time as well in all the 3 by-elections that were held, not just on the Mainpuri Lok Sabha seat as well as Rampur and Katoli assembly seats in Muzaffarnagar as well. And in fact, 2 of the reserved EVMs, which were later told by the poll officials here, were actually caught, quote unquote, as the Samajwadi Party leadership here said, in Mainpuri itself, wherein they created quite a ruckus here, saying that the polling parties and the administration is siding with the BJP, and therefore there is some kind of a bungling that is taking place here in the EVMs as well. Although that matter was settled, no case was registered, and it was clarified by the returning officer as well here that there was nothing amiss that was going on with the EVMs. But that charge definitely has remained, over the last 2-3 weeks, ever since campaigning started here in Mainpuri as well as Rampur and Katoli seats, assembly seats as well. Because Samajwadi Party clearly says, and talking about Rampur, the poll percentage there, the votes cast were less than 34%, and that was something that data was something that was cited by the Samajwadi Party to make this direct allegation against local administration and the government that the government is not allowing their voters to emerge outside their houses and a close go outside. Watch on that developing story as the leads from Mainpuri seats is going to come in, because Samajwadi Party and the BJP are locked horns over there as far as the prestige battle is concerned over the senior leader of Samajwadi Party, Mulayam Singh Yadav's demise, led the seat to fall vacant. But let me go across to my colleague now and shifting focus to Gujarat. Now Swarali is joining us for that matter. Swarali, the early trends that are emanating from Gujarat clearly suggest that there is a lead of the BJP, and there is a vast difference as far as the between the Congress and the BJP's lead. Where is the Aam Aadmi Party? There are no leads as yet for the Aam Aadmi Party. Many leaders in the Congress had claimed that Aam Aadmi Party numbers are being exaggerated by the political pundits.
Yes, so we'll get more better and clear picture post 1 hour of counting, because right now in a lot of places postal ballots are only being counted, and after the EVM machine counting starts, at that point of time we are going to get more clearer picture. Now, if we talk about the Gujarat election as overall, it's a triangular fight which we have been talking about. But if we look at the constant BJP is saying that they have shown that belief that they are going to win more than 150 seats as suggested by PM Narendra Modi himself. That's the same thing exit polls have, resonated, and on the other hand, whatever counts we can see on our screens are also resonating the same thing. Now, if we talk about the Aam Aadmi Party and Congress, this time, as compared to the bipolar traditional fight between BJP and Congress, this time it's going to be a triangular fight. But the thing is that Aam Aadmi Party has divided the Congress's vote, because if we look at the previous election of 2017, Congress became successful to get 77 seats. On the other hand, BJP came down to 99, though they retained the power. But this time, exit polls are saying that they are going to make a history. And also, we talked to Home Minister Harsh Sanghvi last night, and even he has said that we are going to create a history. Now, if we look at the seats of Aam Aadmi Party and Congress, Aam Aadmi has surely divided and dented to the seats of Congress, because this time, even if we look at the exit poll percentage, Aam Aadmi Party is somewhere getting 15% of vote share. Now, Congress has always been stronghold in the rural sections of the India, if you look at the whole picture. But this time, BJP has also targeted rural as well as the urban scape, because PM Modi or all the leaders of BJP have been talking about the basic issues of the rural I'd like to people. interject over there, where the Congress last time around had really put up an honest fight, where several of the Congress leaders were present over there in Gujarat for days on end to build a promising campaign against the BJP. But this time around, we didn't really see the Congress in Gujarat. And when they secured a 77 last time around, the Congress had already claimed a moral victory. And this time around, when the Congress party wasn't really visible at all, everybody was busy with Bharat Jodo Yatra or other such events. Can the Congress really claim that there were other issues because of which they were not visible in Gujarat? Clearly, they did not have their heart in there. So there are two factors in the discussion we are doing right now. If you look at the Congress, they had their muted campaign. They really lagged in campaigning. If you look at their national leader Rahul Gandhi, he just came 2 times in Gujarat, in Rajkot and Surat. Mallikarjun Kharge was the national president, also had just 3 to 4 events across the Gujarat. The Gujarat election is a huge event, but they somewhere fall short of campaigning and reaching out to people. And the other factor, if we look at it, is Samya, that in 2017 Patidar agitation and OBC agitation that took place were major factors influencing 2017's election. Due to the Patidar election, the voters were divided towards the Congress. Hardik Patel was the major face, who was a major face of Patidar Andolan, was with the Congress, and that's why somewhere Congress could, make their presence feel, and they could get the 77 seats. Now, this time, no such Andolan was seen. Even the issues of GST, which are regularly talked about, were not visible that much in the discussion of Gujarat election this year. And that's the reason why Congress's presence is not felt. Even in the campaigning, they have fallen short of it. And the issues which are being raised in the last time's election, major issues were raised about the Patidar Andolan, GST, which were missing this time, and that's the reason. It was instrumental in getting the Congress around 77 seats last time around. Thank you, Swarali. We'll be coming back to you for more updates, but right now we are going to get you Hardik Patel's exclusive interview. He spoke to Times Network and he said that the verdict will decide the next 20 years of Gujarat. Let's take a listen. सर, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि आप अभी आए हैं काउंटिंग सेंटर में, कैसे आशाएं हैं आज के लिए? हमारी आशाएं नहीं है, पूरे गुजरात की आशाएं है कि ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात तय होने वाला है। ये चुनाव आने वाले फ्यूचर को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। और इसी कारण मेरा ये मानना है
कि परिणाम 135 से 145 सीटों के साथ आएगा और एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस टाइम एक पहली बार एक एजिटेटर की तरह घुसे थे, अभी इस टाइम आप एक पॉलिटिशियन की तरह कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी से। पहले आप कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस आप इसमें आपका क्या मानने हैं? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब से वो राजनेता ही होता है, क्योंकि पोलियो का टीका ही शुरू होता है ना तब से। तो एजिटेशन हुआ, फिर राजनीतिक पार्टी आई, लेकिन बेसिकली जो एजेंडा है वो है पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस करता है वो सफल होता है। बीजेपी को एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि बीजेपी लीड कर रहा है 125 से 135 सीट्स में, और ये सब कहा गया है कि जो ओबीसी एंड पटीदार कम्युनिटी में वहाँ पे बीजेपी का एक मैजिक फॉर्मूला सा चल गया है। तो उस पर आप लोग गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 7 करोड़ लोगों का भरोसा है, 50% से अधिक वोट मिल रहा है, तभी तो इतनी सीटें आ रही है ना। तो फिर किसी एक समाज से नहीं, सभी समाज का प्यार और सहयोग है, इसी कारण ये परिणाम आ रहा है। और एक जानना चाहेंगे कि एक भारत में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के जो एग्जिट पोल्स में भी दिखा जा रहा है कि वहां पर उसका इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। क्या इलेक्टोरली वो इफेक्ट नहीं आ रहा है? उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? शादी जो घर में बीवी होती उससे होती है, फिर पड़ोसन के वहां नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार गुजरात का चुनाव है, फिर आप दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो आपका विजन समझ आ जाता है कि आपका विजन गुजरात के लिए है ही नहीं। जहां शादी हुई है वहीं रिश्ता निभाना चाहिए। गुजरात का चुनाव है और आप यात्रा भारत जोड़ो के दूसरे राज्यों में करते, फिर आप ये भरोसा रखते हो कि हमको गुजरात पसंद करेगा, कैसे करेगा? आपका विजन है गुजरात के लिए कि आने वाले 5 साल में गुजरात कैसा होना चाहिए? कोई विजन तैयार किया है कांग्रेस ने? नहीं किया, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, कितना सीट आएंगे इस बार बीजेपी को गुजरात में? 100 आपका एग्जिट पोल है, उसी हिसाब से सीट आएगा। आप टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल से सहमत हैं? यस। Now, every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. Very good morning to all of you. It's a big counting day for the states of Himachal Pradesh and Gujarat. Also, not to forget the counting of votes for by-elections in 6 assembly constituencies in 5 states, including the Mainpuri Lok Sabha seat in Uttar Pradesh. What we will do here is that we'll give you live updates on the trends coming in and have experts decode the numbers for us. Also, Mirror Now reporters are on ground for all the live coverage of events in the major battlegrounds. We'll be getting you first reactions from all the top leaders. I'm Afrida Rahman Ali. Let's get started with the headlines. Early trends in Gujarat give BJP a mammoth lead, already crossed the halfway mark. Cliffhanger in hill state of Himachal Pradesh, BJP and Congress neck and neck as predicted. Irrespective of the results, big day for AAP. If it manages 6% votes in any of these 2 states, it will become a national party, making it India's 8th. Dimple Yadav steals a march in family bastion of Mainpuri. The Lok Sabha seat was vacated after her father-in-law Mulayam Singh Yadav's death. Just hours after AAP's big Delhi win, big charge by Manish Sisodia alleges BJP trying to poach its councillors. BJP hits back, says party believes in its own strength.
As tension simmers at the Maharashtra-Karnataka border, politics peak. Top Agadi leaders to meet at NCP MLA Ajit Pawar's residence. No respite for Delhi-Mumbai residents. They continue to breathe poison. Air quality in poor category in both the cities. And top of the hour at 9 a.m. Here's some breaking news coming in on the big Gujarat verdict. BJP candidate leading in Morbi. Remember, Morbi is important in this election after that horrific bridge collapse that killed over 130 people. The party, the BJP, in fact, had fielded one of the candidates among the Good Samaritans, those who had saved people in that tragedy, and among them was the candidate that BJP changed the sitting MLA to field a candidate. Now that is important, and here what we are hearing is BJP candidate in Morbi is currently leading. All the early trends are playing out on your screens. In the bottom of your screen, you can take a look at the figures there, and like I said, it's a mammoth lead for the BJP in Gujarat. And in terms of individual constituencies that we are tracking, Morbi is showing a clear lead for the BJP candidate. Well, counting of votes is underway for the mega election finale. The big verdict of BJP-ruled states Gujarat and Himachal Pradesh will be delivered. The BJP has started off with leads in both Gujarat and Himachal Pradesh. In Gujarat, it is off to a flying start. Early trends suggest BJP is leading in 125 out of 182. Those figures are fast changing, of course. If the exit polls hold, the BJP is all set to sweep Gujarat, which is, of course, Prime Minister Narendra Modi's home turf, for the 7th consecutive time. While the contest in Gujarat has traditionally been a two-way fight between the BJP and the Congress, this year it has become a three-cornered contest with AAP also in the fray. Early trends have not put out any leads for AAP yet, but yes, now we can see 6 there leads for the Aam Aadmi Party as well. Let's listen into some inputs coming in. ऐसा है, आज का दिन जश्न का दिन होगा। 2 प्रदेशों में भाजपा की सरकार फिर से दोहराई जाएगी। जब कहा करते थे कि रिवॉल्विंग डोर वाली राजनीति होती है, उत्तराखंड के लिए कहते थे, मणिपुर के लिए कहते थे, उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे, इस तरीके की राजनीति को हमने बदल दिया है। आज गुजरात में एक रिकॉर्ड जीत होगी, रिकॉर्ड मार्जिन से होगी, रिकॉर्ड सीटों पे होगी, और हिमाचल में भी हमारी सरकार फिर बनेगी। ग्राउंड रियलिटी हमारे पक्ष में है। हमारे उम्मीदवारों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और हम आशान्वित हैं कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। बूथ मैनेजमेंट शानदार किया, डोर टू डोर कैंपेन हुआ है और कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ही शानदार सेलेक्ट हुए। इस बार मजबूत लोगों को चुनाव लड़ने के लिए हमने चुना है और ताकत के साथ सभी लोगों ने चुनाव लड़ा है और मैंने तभी कहा परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, वो जीतने के लिए नहीं आई थी, हमें हराने के लिए आई थी, लेकिन बहुत कामयाब नहीं हो पाई। कुछ सीटों पे हो सकता है कुछ वोट ले जाए, लेकिन सीट के नाम पे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। My colleague Swarali joining us live from Surat. Swarali, you've been tracking Surat for quite some time, and there have been so many interesting aspects that you brought out from Surat. One of the biggest talking points has been that this is an area where Aam Aadmi Party can make inroads. We are seeing leads of around 6 to 7 seats. I think it's now come to 4 seats. Like I said, the figures keep changing very quickly. What is it like in Surat? What is the ground sentiment on the counting day? You were telling us earlier that first it will be the ballots, the postal ballots, then the EVM machines will start getting counted. Has the process started yet? Okay, is Swarali able to hear me? Yes, so the picture will be more clear post some time. The picture will be more clear as the EVM counting starts. But let me tell you, this time it's a triangular fight between BJP, Congress and Aam Aadmi Party as compared to the previous bipolar fight between BJP and Congress. Now it is to be seen how the impact of Aam Aadmi Party, which they have made in the people's mind, turns out in a vote.
wherein CM Kejriwal had, shown belief that they are going to get in power. Exit poll says that they'll get more than 15% vote share. Somewhere, if you look at the Aam Aadmi Party's and Congress vote shares, this time Aam Aadmi Party has surely dented the votes of Congress because BJP has retained their traditional vote share in the Gujarat, which is known to be a bastion of BJP. Now, let me tell you, in 2017, and even if you look at the last 3 elections, somewhere BJP seats has decreased and Congress seats has gradually increased. And 2017 major factor for this became the Patidar agitation and also the OBC agitation that took place. Now, at that time, Hardik Patel was with the Congress, and that's why these votes were divided and converted for the Congress, and the BJP went down to 99. Now, if you look at this time's discussion about the election of Gujarat, let me tell you, there were no such agitations, and Hardik Patel and Thakur has joined BJP. On the other hand, Jignesh Mewani has chosen Congress to be a political representative of. Now, that's why, and even if we talk about the GST, it was not a major issue this time. Of course, Morbi was in the discussion, the tragedy which disheartened the people of Gujarat as well as India, but that could not impact the voter turnout in Gujarat. Even if we look at the pace, it was this time it was very, very low, but BJP was successful in getting their traditional vote, because if we look at the overall thing, BJP somewhere lacks in the rural region, but this time PM Narendra Modi and also all the senior leaders of BJP went out to choose the subjects which would relate to the rural Gujarat, and they also went to all the rural pockets of Gujarat. They talked about farmers, they talked about fishermen, as Gujarat has got the longest coastal line. They talked about the water reachability to every village. They talked about the electricity they have been working for the villages. That's why they have reached out to rural areas wherein they were lacking, because it is always said that urban pockets are stronghold of BJP, and Congress performs well in the rural areas. On the other hand, Aam Aadmi Party made its road inside the urban pockets, and they have been reaching out to people. CM Arvind Kejriwal or Punjab CM Bhagwant Mann came and talked about free electricity. They also talked about poor education system. The paper leakages is a major issue tossed by them, and they also claimed that in AAP's ruled states in Punjab and Delhi there are no paper leakages, and they are going to replicate this model in Gujarat. On the issues and the allegations were raised on Gujarat model, right. But on the other hand, BJP... So all of these aspects, Swarali, which you so nicely put out for us, the young vote, the youth vote, the rural-urban divide in Gujarat, all of this will come up in our discussion, and I am now joined by party spokespersons and political analysts on the program. Let's welcome Urvish Kantharia, BJP spokesperson in Gujarat. Joining us also is Meeta Chakraborty, Congress spokesperson, Dr. Irsan Trivedi, political analyst, and Sharad Gupta, senior editor from the Lokmat Group. Very warm welcome to all of you. Very good morning, and good to have you with us here on Mirror Now on our election special broadcast. So, you were hearing my colleague speaking from Surat. Early trends that we are looking at right now, mammoth lead for the BJP in Gujarat, quite along the expected lines. I would imagine, Urvish Kantharia, that, this would only validate what the BJP has been saying, that we are going to lead by a huge margin. But let's have the first reactions from all of you on these trends that you're looking at on our screens. First, Urvish Kantharia, please. Yes, it has been fairly reassuring for us to see the early trends now. We have always been maintaining that we will be winning with 2/3 of majority, and it is appearing to be very distinct possibility. The main plank behind this is 4 pillars of the voting psyche as we see. The 4 pillars, number 1 is leadership. Number 2 is our sincerity. Number 3 is our effectiveness. And number 4 is our approach towards contemporary issues. Now, if you see the common element among all 4 pillars, it is emerging very clearly that leadership, especially the quality of leadership,
is coming out with flying colors, and Honorable Prime Minister's visionary leadership, backed by appropriate mission and action, have really resulted into this kind of early trends. So leadership is our prime plank, and we believe that all other factors are polarized to this aspect of leadership. And that has been observed since last 27 years. And this time also, it is not really a matter of surprise. You know, you put out those 4 points very nicely. Let's have a reaction from Meeta Chakrabarti. And I think this is right up your alley when we're talking about leadership. That is where the Congress seemed to be missing in action in Gujarat. And, you know, I've heard so much about how it was a deliberate strategy not to have Bharat Jodo Yatra go through Gujarat. But the fact of the matter is, and you heard Mr. Kantharia say that you need that macro as well as the micro approach. And the BJP got it right in both these aspects. I mean, look at the number of changes made in candidates. I'm told that even those disgruntled groups, small disgruntled groups were placated so that no chances taken. No anti-incumbency factor. This looks like pro-incumbency to me, Meeta Chakrabarti. Okay, firstly, good morning to you, to all my fellow panelists and to all your viewers. Firstly, congratulations to BJP for a decisive mandate in Gujarat, if we have to go by the early trends. Secondly, yes, obviously I'm going purely based on the early trends that have been projected here. It is a day of self-reflection. We do need to reflect on our gap areas, and we definitely need to do some course correction. Number 3, in Gujarat, I have to, while maintaining that, yes, it's a defeat for the Congress party in the state of Gujarat, I will have to make this point that in the past couple of months, we have seen a lot of media hype about how AAP is the real challenger to the ruling BJP government in the state of Gujarat, as how AAP is close to replacing BJP, is going to give a contest to BJP, and is definitely the number 2 party in the state. That is how it was being projected. A lot of media space has been given to AAP. Now, today, the voters of Gujarat has shown that AAP is purely hype, mainly hype, and low on substance. Yes, we have done badly. I think when we started this election, we were about 60 to 61 MLAs. We have lost, we have come down to something around 35 to 40, but we are still the principal opposition. The people of Gujarat had been confused, mainly by a section of media and by the hype that was created by AAP, which had possibly led to some split of opposition votes. Obviously, we need to closely analyze how the vote shares had been split in different areas of Gujarat. But this entire media hype that was created around AAP was definitely had affected us. That is busted. And today we definitely need to call that out, because yes, we are the principal opposition and we continue to remain the principal opposition party in the state of Gujarat. In the next election, definitely we will have to work harder to provide a better political alternative to the people of Gujarat. Okay, I'm going to take that point forward to the other 2 experts. It's a very interesting point. The fact that the AAP figures were so hugely exaggerated. Of course, these are early trends. I have to keep reminding our viewers. I'm now going first to our reporter on ground who've been waiting for us. Rishabh is with us. Rishabh, if you can take us through what's happening on ground at the moment, because this is turning out to be a very interesting result day, especially when we look at the figures coming out of Congress and AAP in Gujarat. Over to you, Rishabh. Well, if you see right now, the figures are in accordance with the exit poll. You know, Congress is something around 30 to 35 seats, while BJP has crossed the 130 mark, and they are looking very comfortable right now. What's very interesting is that we at Times Now and Times Network, we gave 11 seats to AAP. They are leading right now on 9 seats. So it is in accordance with AAP. We are here at Chief Minister's residence, Bhupendra Singh Patel, and he's expected to move out from here and go to Sri Kamlam in Gandhinagar, the BJP headquarters of Gujarat. As of now, things are still very slow because, there's not much of hiccup. What
is very interesting is that the Congress sources, very highly placed sources within Congress, has confirmed to us that they will take the winning MLA to Rajasthan in Jaipur tonight itself because they fear horse trading. When we ask them that the outcome or the exit poll doesn't suggest that anyone will need horse trading, the reply was, remember what Lalu Prasad Yadav used to say, Jin niklega. Congress still believe they can create upset here and they can prove exit poll wrong. So it remains to be seen how things unfold. We are just 1.5 hours into the counting. A lot of counting of votes is still remaining. So we'll have to wait there. BJP is confident, BJP is calm, while Congress is planning, if the need be, how to ensure that they have all their MLAs intact. Absolutely, Rishabh, and you know, these there are going to be quite a few important takeaways from the results that we are looking at. And as promised, let me have the other two experts join us in the discussion right now. Dr. Irsan Trivedi, picking from where we left last time on the figures that we are looking at on our screens, as of now, it does appear like AAP's numbers were hugely exaggerated. They have not performed as per the hype, as Meeta Chakrabarti puts it, were given to Aam Aadmi Party. First of all, I mean, see, all the parties, BJP, whether it is Congress, whether it is Aam Aadmi Party, they had one particular, set goal in the mind, or they have one milestone to achieve. For the BJP, they were looking after 149 track, that is, which was done by Madhav Singh Solanki time, and they wanted to crash it, and they worked so hard accordingly. Meanwhile, whatever the problems which were raised, which happened in Gujarat, the Congress probably didn't, they couldn't, raise the questions as they were doing in the past. Last election was based on a hunch, that is Hardik Patel, Alpesh Thakur, and Jignesh Mewani. And where Hardik and Alpesh Thakur now in BJP. Jignesh is remaining in Congress, but he's leading, but it is not making so many other effect. And this election was based on Ram, that is Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and Narendra Modi sir. So where is Rahul Gandhi? That affected Congress in this particular election, where he is just doing Bharat Jodo Yatra and all that, where he just came in Gujarat, and I think probably he just had one or two. He delivered in this meetings and whatever rallies and all that. I guess for Aam Aadmi Party, I'm thinking that whatever they have gained or they are going to gain, it will help in a way that Gujarat will be the state to make them the national party, because if they are getting more than 6% of vote share, and of course 7 MLA is not a small amount. Of course, if they are keeping that up to this 7 number, so even if they are getting 1 MLA, or even if they are getting more than 6% of the vote share, it is an entry of Aam Aadmi Party into Gujarat, and of course it has damaged Congress more than BJP. But definitely in the few upcoming years, they will work hard and they will, make the results upside down. Reason for AAP to be disappointed, since they're coming from zero. This clearly is, getting a toe in, to say the least. Sharad Gupta, do you agree? And the reason for AAP not doing so well is the simultaneous elections of MCD, Delhi Municipal Council, for which they had to channelize most of their energies in Delhi than in Himachal or Gujarat. In fact, they had abandoned Himachal and focused mainly on Gujarat and Delhi, mostly on Delhi. So that is one reason why AAP could not perform as much as they were expected. Rather, they had expected. And one reason they could not perform well in Gujarat is most of their leaders, they were in Delhi, and in Gujarat they were just state leaders, and sometimes Mr. Kejriwal or the Punjab Chief Minister, he went there and campaigned. So they could not campaign as well as they wanted to because of simultaneous holding of the two elections. And
No, I as far think they as still Himachal is campaigned a concerned, lot, Mr. Gupta. I think they still did much more than what Congress did. And look at the figures that the Congress has managed to garner. In fact, in Himachal, now, as of now, the figures that we are getting show that Congress party has inched ahead of the BJP. Meeta Chakrabarti, that should make you happy. Bill, can you please, I'm unable to see the figures on your Yeah, screen. it's Can you now, please as repeat? of now, I'm reading off the screen as well because, things are changing by the minute. As Yeah. of now, the Congress party is leading in 35 seats in Himachal Pradesh as opposed to 31 for the BJP. So there we are seeing Congress surging ahead of the BJP. It's a state that you're hoping to win, isn't it? Absolutely. Our internal survey reports, whatever surveys we have done before the election as well as post the election, had shown that we are ahead in the state of Himachal Pradesh. So the early trends did come as a surprise to me. I'll be very honest there. And I'm hoping that we maintain the trend and we continue to expand the trend and we are in a comfortable position to form the government in Himachal Pradesh. So yes, definitely that's a heartening news, and we'll see how it works out. But coming back to the state of Gujarat, yes, the people of Gujarat had decisively communicated that they look towards Indian National Congress to provide a political alternative in the state of Gujarat. And the reason why I made this point again about the media perception that was being created, it was never said that in the media that we are treating AAP party with kids' gloves. It was often, if you go back 2 months before, I'm not talking about the exit poll reports, the entire perception, the entire media space was divided between BJP and AAP. And I think I'm that sorry, was Meeta extremely Chakrabarti, to be exaggerated. fair, that is because your leaders were missing in action in Gujarat. Until the manifesto release, I did not see any big rallies conducted by any top Congress leaders. How do you blame the media for not covering Congress in Gujarat? I am not blaming the media. I'm talking about the different opinion polls and the different programs that were being conducted, and the entire media hype that was being created. No, you made that point earlier. My humble submission is that yes, you did say that the numbers that were predicted for AAP, many thought they will. Now listen, again here, it's too early to say. They might still hit a double digit, and even that would be respectable for AAP. Like we just heard, Irsan Trivedi also say that anything if they hit a double digit, it'll be. But let me tell you, Meeta Chakrabarti coming from 77, and here is a party coming from 0. How do you even compare the two? You were supposed to build on those gains, which you have failed probably. I started by saying that if we concede that if these early trends are anything to go by, we congratulate the ruling party in Gujarat. But we obviously have to wait and see how it turns out eventually. So my first statement was, yes, there has to be a self-correction or we have to do some self-reflection there as why we have not been able to provide a political alternative. But we have to wait and see the final results, the final tallies before we actually comment on that. The second point was that we think that AAP numbers and the entire media presence that was given to AAP was highly exaggerated. And I think a point that you will even partially accept. And yes, and that possibly had led to some splitting of opposition votes. Yes, splitting of opposition votes, Urvish Kantharia, it was a very convenient game for BJP, let's face it. I mean, you were perhaps only too happy to have AAP as well in the fray because you knew that that is going to fragment the anti-BJP vote and you will, have some sort of a walkover. But at this stage, it is also important to ask, the BJP has very consciously, and if I remember correctly, the Union Home Minister said, the contest is between BJP and Congress. Not willing to give the sort of legitimacy to Aam Aadmi Party. Was the BJP always wary that you do not, in a way, do not want Aam Aadmi Party to come, to emerge as the main challenger? And if these figures are to go by, it has turned out that Congress continues to be the main opponent in Gujarat. Well, the main dimension of this election is performance versus propaganda. Now, if you look at it, what has happened on the ground, it is the performance which has driven the mindset of the voter.
One side, there is a BJP with 27 years of development record and excellent quality of leadership. And on the other side, you see propaganda, which was absolutely missing the performance aspect. So we have always been believing that Aam Aadmi Party may be a force to reckon with, but it is not really a serious factor. We have always been maintaining that Congress is our main opponent in Gujarat. And the way they have been approaching the electoral mindset, they have been going door to door and they have been going to group meetings. But the difference is between micros and macros. Congress probably tried to lead their micros well, but as far as the macros were concerned, I would just like to submit that since 2002, there has been hardly any visibility of Congress leadership in Gujarat, even during the elections. So the macro aspect was totally missing, whereas BJP was performance and leadership. With this, we have been able to sail through on expected lines. Be created undoubtedly if for the 7th term the BJP wins the state. It'll match the record of the left party in West Bengal. So clearly if the election commission announces the final results as the BJP winning the state of Gujarat, that will be a historic mandate. Taking from what you just mentioned about the fact that here is a state that the BJP has consistently won. The suspense was more about who the runners-up would be. And there was a very clear divide in opinion here that it is possible for AAP to emerge as the runners-up, as the second winner. But that has not happened, Dr. Irsan Trivedi, from the early trends. Yes, but what actually I'm looking for the trend in Gujarat. Bharatiya Janata Party has crossed 150 plus in a leading part, and Congress is around 20 plus, and Aam Aadmi Party is on around 8. I think definitely if this is the win of BJP, rather than it is a loss of Congress. Bharatiya Janata Party has 27 years of legacy and they have worked in a way, and for that Congress tried best. 2017 was probably the golden period of Congress where they were able to fetch 77 seats, but unfortunately after that 17 MLA they shifted their stand from Congress to BJP, and here Aam Aadmi Party is definitely a third factor where they have made they have definitely made some damage to Congress, because it is what we are seeing that BJP has maintained, or rather they have gained more. The votes of Congress that has been divided majorly in BJP and partly into Aam Aadmi Party. So maybe I'm thinking this election as BJP's victory, but Congress loss is more. This is what I'm. Himachal will also be an interesting conversation. Unfortunately, I'm out of time. As of now, we are going into a break, but when we return, we should probably focus on Himachal as well. Do stay on with us. Thanks very much for joining us in this conversation. Let's take a short break. We'll be right back. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. There was a transformer blast. No arrests have been made.
On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. In the country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? To me, news is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. Morning, hello and welcome. You're watching Mirror Now, and it's the big verdict day when we get you the mega political potboiler, the counting in on at Gujarat and Himachal Pradesh. But first up, let's get you what's making headlines this hour. Early trends in Gujarat give BJP a mammoth lead, already crossed the halfway mark. Cliffhanger in the hill state of Himachal Pradesh, BJP and Congress almost neck to neck as predicted. Irrespective of the results, big day for Aam Aadmi Party. If it manages 6% votes in any of these two states, it will become a national party, India's 8th. Dimple Yadav steals a march in family bastion Mainpuri. The Lok Sabha seat fell vacant after her father-in-law Mulayam Singh Yadav's death. Opposition corners government in parliament on governor's issue, gives notices in both houses of parliament, rakes up Maharashtra governor's Shivaji remark and Tamil Nadu governor's role and responsibility. And the big story that we are tracking at this point in time is the results that are coming in. Gradually, the leads are coming in for the Himachal and Gujarat elections for that matter. And I am also looking at these numbers which are there on your TV screens right now, where BJP stands at 31 and the Congress as 35 in the state of Himachal Pradesh, while the BJP has scored a massive lead from the state of Gujarat. But let me go across to my colleague who are also joining us to get us more details on the story. And the big stories that we are getting you, the leads that we are getting you are coming in from the state of Gujarat,
where the BJP has clearly steered ahead of the Congress party and the BJP, and there is a wide gap, a difference that can clearly be seen where the counting of votes is still underway for the mega election finale. The big verdict for the BJP ruled states of Gujarat and Himachal Pradesh will be delivered soon, but the BJP has already started off with impressive leads in Gujarat. In Gujarat, it's off to a flying start. An early trend suggests that the BJP is leading in 125 seats out of 182 assembly seats in Gujarat. If the exit polls hold, the BJP is all set to sweep Gujarat once again. And this is going to be the 7th consecutive time, for that matter, at the Prime Minister's home turf. While the contest in Gujarat has traditionally been a two-way fight between the BJP and the Congress, this time around it's a three-cornered contest between the Aam Aadmi Party also in the fray. And those numbers are also on your screen as we are updating it minute by minute. In Gujarat, the BJP leads with 141 seats, with a massive margin that has emanated between the BJP and the Congress party, while the Aam Aadmi Party is still trying to play catch-up. But the Congress party seems to be falling far behind from the halfway mark, as the BJP has already tried to circumvent that. They are ahead of the halfway mark, and they are already exuding confidence, saying that they are set for the oath-taking ceremony, although the Aam Aadmi Party seems to be a non-starter, being limited to single digits in Gujarat. Those are the visuals on your screen from the counting center, where the BJP has come up with an impressive lead of over the halfway mark at this point in time. And the Aam Aadmi Party is definitely limited to a single digit. The Congress party is trying to play catch-up, but there is a massive margin between both the parties. Well, as you can see, those visuals are from on your screens are from several counting places in Gujarat, and the counting is underway. The EVMs are going to be opened up shortly, and that is where the Congress and the Aam Aadmi Party is also believing that it could probably change the trends. But the BJP has already soared ahead of the halfway mark, and it looks that it is comfortable, set for a 7th consecutive term at the Prime Minister's home turf in Gujarat. Remember, earlier it was only the Congress party and the BJP in the fray, but now, of course, the Aam Aadmi Party, being the third entrant, has really changed the game around. But the BJP still musters up the number against both the Congress and the Aam Aadmi Party. And those are the visuals on your screen, visuals of celebration by the BJP Karyakartas and party workers and leaders who have assembled in large numbers. They were already very confident that they are going to secure a victory once again in Gujarat, because both the Congress and the Aam Aadmi Party couldn't really pose that sort of an opposition to the BJP, which is the citadel for the BJP, the Prime Minister's home turf and the Home Minister's home turf. And we saw how several senior leaders, union ministers, chief ministers had all descended in the state of Gujarat for massive campaigns that was witnessed in Gujarat, which wasn't really a match to what was witnessed from the Congress party's end. The Prime Minister alone held some over 30 such election rallies in Gujarat, which also many of them got into a controversy with the Aam Aadmi Party and the Congress, saying that it's a case of a violation of the Model Code of Conduct on several occasions. But the BJP stayed on with their confidence, maintaining that they are set to form the government in Gujarat for 7 consecutive terms. And live visuals we are getting you from Gandhinagar in Gujarat, where you can see celebrations have already begun. Celebrations are underway. Party Karyakartas and the party workers are all there, jubilant and excited over BJP's impressive performance for 7th consecutive term, which really raises the question on whether at all the Congress party is serious to pose a competition to the BJP. Last time around, the Congress party secured 77 seats while the BJP formed the government. This time around, the Congress party is hoping that they will at least cross the 60-seat mark. We have to wait and see how that goes, although the BJP is claiming that they are going to set a new record and breach its last year's seat numbers as well.
Now, there seems to be no end to the turf war between the BJP and the Aam Aadmi Party, where the Delhi Deputy Chief Minister and the Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia has alleged that the BJP is trying to poach the newly elected Aam Aadmi Party councillor. Remember, it was only yesterday that the Aam Aadmi Party secured victory in MCD polls, and an impressive one at that. And now the Deputy Chief Minister of Aam Aadmi Party, Delhi, is claiming that the BJP is trying to poach Aam Aadmi Party councillor. Delhi BJP chief Adesh Gupta has hit back, saying that the BJP believes in democracy and its own strength. Yesterday, Manish Sisodia had alleged that Aam Aadmi Party councillors were receiving calls from the BJP right after the civic body poll results were announced, and there seems to be no end to the war of words between the BJP and the Aam Aadmi Party. Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia has alleged that the BJP is trying to poach newly elected Aam Aadmi Party councillor. I am joined by my colleague Niyamika from the Aam Aadmi Party office to get us more details. Niyamika, this seems to be like a fresh allegation that the Aam Aadmi Party is levelling against the BJP. Yesterday, it was an impressive performance by the Aam Aadmi Party at the MCD. And now, of course, Manish Sisodia is claiming that the BJP is trying to poach their newly elected councillor. What exactly is the Aam Aadmi Party saying, and has there been any word coming in from the BJP? Well, certainly, as just a day after the MCD election results were being announced, in which the Aam Aadmi Party has gained victory, now the Deputy Chief Minister Manish Sisodia has alleged that the BJP is basically trying to poach the newly elected councillor. As Manish Sisodia has also tweeted over the matter, if I can quote him, he has said that BJP's game has started. Phone calls started coming to our newly elected councillors. None of our councillors will be sold. We have told all of them that if they get a phone call or come to meet them, record them. So that is the kind of statement which has been given by the Deputy Chief Minister Manish Sisodia, as the Aam Aadmi Party has been claiming this from a very long time, that the BJP is trying to poach their leaders. Earlier also they had claimed that many of the MLAs of the Aam Aadmi Party were being had got a call from the BJP, as the BJP is trying to topple the Delhi government. And now when the MCD elections are being announced, now Manish Sisodia has also claimed that they are trying to poach the newly elected councillors. But the Aam Aadmi Party is saying that our leaders are not going to fall into the trap of the BJP, which they are planning to do, because the BJP was also claiming after these elections were announced that the mayor will be off from the BJP, and that is why the Manish Sisodia is also claiming that they are trying to poach the Aam Aadmi Party's elected councillors. But it is yet to be seen that whether they have got any proof regarding this matter, or they are just alleging it against the BJP. Well, thank you, Niyamika, for getting us all those details, and we'll keep a close watch on that developing story, as the war of words between the BJP and the Aam Aadmi Party is far from over. And we're getting you the big focus back on the Gujarat elections, because the counting of votes is underway for the mega election finale. The big verdict of the BJP-ruled states of Gujarat and Himachal Pradesh will be delivered very soon. The BJP has started off with leads in Gujarat and in Himachal Pradesh. In Gujarat, it is off to a flying start. Early trends suggest BJP leading in 125 out of 182 assembly seats in Gujarat. If the exit polls hold, the BJP is all set to sweep the state of Gujarat, the Prime Minister Narendra Modi's home turf, for the 7th consecutive time. While the contest in Gujarat has traditionally been a two-way fight between the BJP and the Congress, this year it became a three-cornered contest with the Aam Aadmi Party's entry in the poll fray. And I'm joined by my colleague Swarali to get us more details. Swarali, clearly the Aam Aadmi Party is almost on a non-starter, limited to a single digit, but the BJP has already projected an impressive lead, almost crossing the halfway mark over there, and the Congress is falling far behind, but a massive margin. What is the sense on the ground over there? It seems that the celebrations have already begun. Yes,
So right now I'm standing in front of Home Minister Harsh Sanghvi's home, and let me tell you, the mood of enthusiasm can be seen in the city of Surat. But let me tell you, Satyaben Gamit from the Mandvi constituency of Aam Aadmi Party is leading right now. Even now, all the picture will be clear in some time. But you know, as we have been looking after the exit poll data and now the final result counting data, it's very, very clear that BJP is going to have a huge victory in the state of Gujarat. Now, if you look at the dynamics of Gujarat election this year, it's called to be a triangular fight between BJP, Congress and Aam Aadmi Party as compared to the traditional bipolar fight between BJP and Congress. The reason behind it is the Aam Aadmi Party's presence and the way they have been campaigning across Gujarat, reaching out to people with the issues of education system, health system of Gujarat, and promising freebies like electricity guarantee card and a lot of others. Somewhere they have made their space in the minds of people. Now it is to be seen how will the votes turn out on ground. That's not visible actually, but if you look at the divide, Aam Aadmi Party has dented votes of Congress, because if we look at the previous election of 2017, Congress became successful to get 77 votes, wherein BJP came down to 99, though they retained power. And even if you look at the last 3 elections, somewhere Congress has been increasing its votes. On the other hand, BJP is coming down. But if you look at this year's dynamics and whatever the data is saying, BJP is going to break the record. That's what exit poll has been telling us. Now it is also seen in the data of the counting. And somewhere Aam Aadmi Party has totally dented the vote share of Congress, because in 2017, due to Patidar and OBC protest agitation, the Congress party the vote maintains was that the Aam Aadmi diverted Party to wasn't Congress's there in Gujarat to win elections, but only to dent the vote bank of the Congress party. Thank you, Smurali, for getting us those details. But stay with us. We'll be coming back to you to get the pulse from the ground. But in the meanwhile, we also have some guests joining us to discuss threadbare the entire elections leads that are coming in right now. My guest, Urvish Kantharia, is joining us from the BJP. And we also have Meeta Chakraborty from the Congress party. And Dr. Irsan Trivedi, who's a political analyst, is also joining us. A very good morning to all of you, sir. Thank you for joining us on this mega verdict day that we are tracking over here on Mirror Now. But my first question across to you, Urvish Kantharia. Mr. Kantharia, you are all set to form the government for the 7th term, it appears, as the lead suggests, in the state of Gujarat. Are you looking forward to breaching your last time's record? Are you looking at larger numbers? Because the margin of votes between the Congress and the BJP, the number of seats for that matter, is massive. And the Aam Aadmi Party, for that matter, is still limited at a single digit. If I can read out the numbers to you as we are flashing on the screen from the state of Gujarat, it appears that the BJP is at 143, the Congress 29, and the Aam Aadmi Party as 9, as the early leads suggest. Yes, we are consolidating our position to a great level, unprecedented level. And primarily the reasons behind this is our plank on development. Especially 2 factors have contributed to this resounding success. 1 is water and 2 is dairy. I would like to emphasize on 2 points as they really matter for the whole of the nation. We have been able to take the water to the voter, and that has made the difference in our agrarian economy, in our industrial economy, in our civic lives, and that is seen in the reflection today. Secondly, the dairy sector. Our motto, as we all know, is Sabka Saath, Sabka Vikas. And the cooperative sector of Gujarat is a mainstay of this motto. Now we have been able to take the dairy movement, the cooperative dairy movement, forward to even the tribals. So tribals have become the dairy players. So their economic planks have changed drastically. All these 2 factors, water and dairy, have put together
Okay, Mr. given a Kantharia, we tremendous... get your point where you're mentioning two major aspects that may have contributed to the BJP's stellar performance. One is the water and the other one is dairy. But let me take a question across to Meeta Chakraborty, who's joining us from the Congress Party. Ms. Chakraborty, look at the numbers. The Congress Party stands at 25 as the early counting projections go, and the BJP stands at 144. Like I asked even yesterday when the MCD polls results were out, there seems to be no fire in the belly for the Congress Party to put up an honest fight, to put up a contest, to challenge the supremacy of the BJP in Gujarat. Where was the Congress? Everybody was busy at Bharat Jodo Yatra. Okay, as I mentioned in the earlier show as well, while accepting that, yes, we do need to work on the gap areas and we do need to do some self-reflection and focus on the gap areas. The victory of the BJP, if we have to go by these early trends, can be largely contributed or attributed to the factor of opposition votes getting split. It's a fact that AAP has not been able to convert too many seats, but it seems like, and obviously we will have a closer look at the vote share, that the opposition votes, the people who were looking for a political alternative to the current ruling BJP government, had been split to some extent between the Congress and the AAP party. And that has resulted in this outstanding early trend lead for the BJP party. That's number one. Number two, there are two states that had gone into election. We see that in Himachal Pradesh, we are giving a very close fight to the ruling BJP government. But Ms. Chakraborty, I'd like to interject over there BJP, because you are definitely maintaining that it's the Aam Aadmi Party's intervention, that the fact that Aam Aadmi Party is a new player in the game over there in Gujarat, that's the reason why the votes got split. But what about your own leaders? Rahul Gandhi came down for 2 days worth of token campaigns for that matter. Mallikarjun Kharge, the Congress president, came down for 2 days worth of token campaign. Clearly, if the top leaders of the Congress party is not going to be visible and be seen, hitting the ground running and show some sense of seriousness. Okay, can you can't really blame the Aam Aadmi Party alone. You have to be visible yourself. We Let are me take not that question blaming across any the political analyst who's party. joining us, Irsan Trivedi. Mr. Trivedi, how do you see when Ms. Chakraborty blames the Aam Aadmi Party but is not taking accountability for the Congress party being absent or not being in the election mode? Yes, I would like to give the credit to three things. Number one is Narendra Modi. Narendra Modi, in spite of, the BJP government was forced to change their chief ministers 3 times in some past 5 years. It is Narendra Modi who, actually did a lot of work to save the hometown. And I must give credit to Narendra Modi, sir, for first thing. Second thing, I would like to give credit to, Aam Aadmi Party. See, in last, since independence, BJP and Congress are the two parties which were contesting the elections, and accordingly, many a party they came in between, they came and went. But this time, Aam Aadmi Party entered from outer state. Which is probably the first time in a way that they conducted and they fought. They steal the if you show can and hear they me, steal well, the the Congress vote party, of when they're Congress. not really visible to pose a fight to challenge the supremacy of the BJP in Gujarat, can they just blame the Aam Aadmi Party? Where was Rahul Gandhi? Where were the senior leaders? They were all busy with Bharat Jodo Yatra. Mr. Gupta, if you could hear me, that question was meant for you. Is it for me? Oh. Yes, Mr. Gupta, please go ahead with your views on it. In fact, I just looked at the vote share of different parties, and you'll be surprised to know that BJP has secured more than 53% votes in Gujarat this time. That's as per Election Commission's website. And even in Himachal, they have got 45% votes as compared to 41% of, rather 41.6% of Congress. So in a way, BJP has managed to secure its turf both in Himachal and Gujarat. And as Mr. Trivedi was saying,
all credit to BJP. It has always contested every election very earnestly, and in every election, basically BJP contests in the name of Prime Minister, and Prime Minister Narendra Modi himself takes every election very seriously. He has been campaigning in Gujarat. He campaigned in Himachal also, and even in Delhi municipal elections. And it has to be a sense of accountability that the Congress party has to take, rather than just blaming the Aam Aadmi Party for that matter. I thank all my guests for joining us at this point in time on our special coverage of the big verdict day. And here on Mirror Now, we'll be getting you the poll pulse from the ground and minute-by-minute update as the counting progresses. That's all we have for you in this edition. More news and updates lined up on the other side. Keep watching Mirror Now. Powered by ArcelorMittal Nippon. Every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror Now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. Was a transformer blast. No arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, and more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. The country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on The Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? About one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो। We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You've read the headline, now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror Now, you first. Every day we wake up to new possibilities. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now.
Hi everyone, good morning. It is counting day, and as far as Gujarat is concerned, the picture is absolutely clear. The BJP is well on its way to forming a government in the state for a record 7th time. Another record set to be broken. In 2002, after the riots, the BJP had won 127 seats. That record, we are being told, will be broken today as well, because that is what the early trends are telling us. And not that early, actually. Counting has been on for 2 hours. The picture is absolutely clear in Gujarat, but the picture is absolutely not clear in Himachal Pradesh. The race, as was predicted, is neck to neck. So that is where the most delicious battle is being played out. Before we go to our guests, before we go to our reporters on the ground, a quick check of the big headlines that have come to us from the battleground states of Gujarat and Himachal Pradesh. The BJP is headed towards a record-breaking win in Gujarat. It has already crossed the halfway mark and the 121-seat record that was set in 2002. But the real cliffhanger is in the hill state of Himachal Pradesh. The BJP and the Congress are almost neck to neck as predicted. Irrespective of the results, it's going to be a big day for the Aam Aadmi Party. If it manages 6% votes in any of these 2 states, it will become a national party, India's 8th. And the other by-polls underway. Dimple Yadav steals a march in family bastion Mainpuri in Uttar Pradesh. The Lok Sabha seat was vacated after her father-in-law Mulayam Singh Yadav's death. After 2 hours of counting, the picture is clear in Gujarat. The BJP has crossed the halfway mark in leads. As per the Election Commission website, the BJP has taken a lead in over 120 seats. The Congress is trailing far behind. In Himachal Pradesh, the other state where results are trickling in, that state is seeing a very, very close contest. It is neck to neck, not almost neck to neck, quite literally it is neck to neck. Himachal Pradesh 31-34, for the moment the Congress leading, but this keeps changing every 20 seconds. Gujarat, the picture is clear, leads in for all 182 seats there. You have the BJP with a huge margin, not just leading but winning the state 151. 127, as I said, was the record that was set in 2002. So that record has been smashed as well. A 7th consecutive win for the BJP in Gujarat, 19 seats for the Congress party. Last time they had won 77. So that's a massive dip. It seems that the Aam Aadmi Party will do decently in Gujarat. 8 seats so far being predicted for them. So that's good news for them. The mood in Gujarat, as you can imagine, is fairly upbeat, at least as far as the BJP headquarters are concerned. Just take a look at those pictures that are coming to us from Gandhinagar. That's typical celebration that you see outside a party office. Lots of cameras and people will just gather in front of these television cameras and start dancing, irrespective of whether they are good dancers or not. Let me go across to Abhishek, who is joining us from Gandhinagar. Hi Abhishek, good morning. It's certainly a good morning as far as the BJP is concerned in Gujarat, their headquarters, and we are seeing pictures from there. I'm going to request our producer to put those pictures on our screens once again. Celebrations are already underway, but what most of our viewers, I don't know whether they know this or not, but last night itself, the BJP had decided, Abhishek, when the swearing-in ceremony and the oath-taking ceremony is going to take place. They were that confident. Tayari sari thi. Yes, definitely. You know, in fact, we were sitting along with the state president C.R. Patil and we are present out his home, and we asked him to give us a bite, and he is so confident that, you know, he said to us that we will be crossing 162 and, you know, breaking all our previous records. And this time we will be making 3 important records, that one of the highest seats, one of the highest vote share. In fact, you know, he said that at 12:30 he will be taking a press conference and he will be not speaking at right now. And this is something, you know, the predictions of exit poll are coming out to be true. In fact,
more number of seats are coming in the favor of the BJP, a huge margin, and we can see a clear loss to the Congress. And definitely around 8 to 10 leads have been predicted for the Aam Aadmi Party is something they are satisfied with, and inching towards their national party mark that they wanted to. And in fact, let me make it more precise, the pro-incumbency that BJP has put forward, right from overhauling the entire Rupani cabinet, changing 40 MLAs, sitting MLAs have been replaced by new faces. In fact, the caste combination, giving tickets to OBCs, Dalit, as well as tribal community, SC, NT, and the Patidar face. In fact, Alpesh Thakur, Hardik Patel in the party, giving ticket to them. All that has come into the favor of them. In fact, definitely we cannot ignore the Modi factor in the state of Gujarat, the Gujarat Asmita, and the people connect that Prime Minister Modi has in this home state is the biggest factor. But how the 27-year incumbency was changed into pro-incumbency by the BJP is something that is their strategy was, and that has worked out well. In fact, they will be breaking all the records is something that has been predicted. How much the record will be broken, how much number is something that we will have to wait and watch out for. But C.R. Patil, while speaking to us off record, has clearly said that they will cross 162 mark. And that is something we will have to wait and watch out for. And these are the visuals of celebration. People are excited. Party workers are excited on the BJP headquarters, Shri Kamalam. And this is the celebration which has already begun in the state office. Back to you. Well, they were prepared for this. They were prepared for this, and they are prepared for this in Delhi as well, I can tell you that. All the halwais are already there. Laddus were being made from last night only. So the BJP has been prepared for this one. Himachal Pradesh is, of course, a completely different story. That is where the real battle is brewing. And you will not be able to say until, I think, 1:30, even 2 o'clock, who is winning Himachal Pradesh. Is it the BJP or is it the Congress party? Now, it was supposed to be a triangular race, but that's not how it's turned out to be in Himachal Pradesh. Look at the numbers, 31 and 33 in Himachal Pradesh. This is going to go down the wires, as it were. It's a small state. Their frequencies are small, which means the results will come in early. The picture will be clear, but given how close this is, as I said, we'll have to wait and watch for that one. Just to focus a bit on Gujarat before we go to Himachal Pradesh, we have Hiren Kotak, who's the BJP spokesperson, who is joining us from Gujarat. Neeraj Mishra is the Congress spokesperson joining us on the broadcast. Parvinder Singh Sethi ji is a political analyst but speaks on behalf of the Aam Aadmi Party, because the Aam Aadmi Party doesn't send a guest to the Times Network, even on a day that was a good day for them yesterday. So I have no idea how that works. Anyhow, it is what it is, Parvinder ji. And Sharad Gupta is a senior editor of Lokmat. He is joining us on the broadcast as well. Hiren Kotak ji, बधाई हो, many congratulations. गुजरात तो आप निकाल के ले गए and बड़ी आसानी से निकाल के ले गए, as was expected. But it's the doing of one and one man alone, because you change your cabinet, you change your chief minister. It seems even if Gujarat doesn't have a chief minister, the BJP will win the state because of Narendra Modi. बिल्कुल, क्यों नहीं। जब ग्रोथ डेवलपमेंट हमने नरेंद्र मोदी जी से सीखा है और जो हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आज गुजरात मॉडल जो है वो भारत मॉडल बनने जा रहा है। ये स्थिति में नरेंद्र मोदी जी के लिए तो हमें बिल्कुल 2 हाथ जोड़ के नमन करने होंगे। उनका करिश्मा यहाँ चल रहा है। और मुझे आज जब मैं अपने कलिंग को आपके स्क्रीन पर देख रहा हूँ, कमलम हमारे जो प्रदेश कार्यालय पे जिस तरह से डांस करते हुए, और उनको जिस तरह से आप बता रही थी कि डांस करना आए ना आए, लेकिन डांस आए ना आए, लेकिन उनके मन का, उनके हृदय का जो उत्साह है वो बराबर दिख रहा है। आज मुझे किशोरदा की वो गाने की 2 लाइन याद आ रही है, खुशी इतनी कि मन में न समाई, पलक बंद कर लूं कहीं छलक न जाए। हम विकास और इस राज्य की उन्नति के लिए डटे हुए कार्यकर है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे कार्यकर देव दुर्लभ है, और वो कार्यकरों का हम 2 हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम उन सब कार्यकरों करते हैं। जहां जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां वो कार्यकर पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात रही कि अगर हम इस मतदाताओं का अगर शुक्रिया अदा न करें तो भी बहुत बड़ी गलती होगी। इन मतदाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बाहर निकलकर वोट किया है। इस राज्य के विकास और इस राज्य की उन्नति के लिए उन्होंने हमारे हाथ मजबूत किए हैं।
ना इस देश की तिजोरी पर, इस राज्य की तिजोरी पर पंजा पड़ने दिया, ना झाड़ू फिरने दिया। As we speak, the AAP Gujarat chief is trailing. Gopal Italia is trailing from Katagram. Sethi साहब, मतलब ये तो देखिए ट्रेंड्स हैं, कुछ भी होगा आगे, we don't know, but I'm just, you know, the fact is that that's the picture on the screens, and there were a lot of, as they say, Hawaii that happened in Gujarat as far as the Aam Aadmi Party is concerned. A lot of castles in the air. Have they come crashing down, or do you think these numbers that we are flashing on our screens are a good show for the Aam Aadmi Party? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, यंग पार्टी है और अपना हर जगह पे प्रयास कर रही है। देखिए यहाँ दिल्ली के अंदर 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा रही थी, लेकिन जब गुजरात के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ रहा है तो उन्होंने फटाफट एमसीडी चुनाव डिक्लेयर कर दिए। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी 300 रैलियां करते हैं, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने भी 10 स्टेट्स के सीएम हैं, पूरा तंत्र लगा हुआ गुजरात के अंदर। गुजरात के चुनाव को देश का चुनाव बना दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर उनकी साख लगी हुई थी कि अगर मैं अपने प्रदेश के अंदर मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो मेरी छवि धूमिल होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट करा है कि हमारा गुजरात के अंदर फेलियर है। जब वो 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री क्यों बदला जाता है? जब आप उसका रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते तो दूसरा मुख्यमंत्री आता है। 3 मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर बदल दिए जाते हैं। गुजरात ड्राई स्टेट होने के बाद वहां पे हजारों करोड़ रुपए इलीगल शराब, जहरीली शराब का काम होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 100 से ऊपर लोग मर जाते। क्रेडिट टू द बीजेपी ना, दैट दे चेंज 3 चीफ मिनिस्टर्स, दे चेंज द एंटायर कैबिनेट a year before the election and they still win with this margin. Which other party can do this? Pull it off, आप बताइए। तो this is to the credit of the BJP. रिपोर्ट कार्ड लेके जाते तो अब उन्होंने उस चीज को वॉश आउट कर दिया। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट आया है उसको तो थोड़ी बधाई दे दीजिए। डेफिनेटली मैं इस बात की उनको बधाई देता हूँ और बधाई के पात्र हैं। और इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा ऑरा है, लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर आप एक गरीब आदमी का, एक मजदूर का, एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। चुनाव एक स्ट्रेटेजी है, चुनाव लड़ना भी एक स्ट्रेटेजी है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा तंत्र, बहुत सारी चीजें लगती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां के आदिवासियों के बारे में आपने क्या करा। मोरबी के अंदर 150 लोगों की जानें चले जाती हैं उनके जो, लेकिन मोरबी में 3 सीट आपको पता है ना किसको जा रही है? बीजेपी को जा रही है। लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। डिस्पाइट 140 पीपल, नहीं, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। 150 लोगों की मौत हो जाती है। मैं बता रहा हूं ना, ये आजकल जो चुनाव है वो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा तंत्र, बहुत सारी स्ट्रेटेजी और बहुत सारा ऊपर नीचे करके जीता जाता है। कोई आदमी कहे कि मैं आकर एमसीडी ऐसे ही जीता। नहीं, एमसीडी में हमने काम करा है, हमने काम करा है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आपने ऐसे ही जीता है। नहीं, हमने आंदोलन से निकली हुई पार्टी, नई पार्टी है। उसके पास इतने तंत्र नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली में, पानी में, रोजगार में। आप ये देखिए ना, आप शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए। जो आम आदमी पार्टी है सिर्फ मुद्दों की बात करती है, इश्यूज की बात करती है, समस्या की बात करती है, समाधान की बात करती है। लेकिन यहाँ पे जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम, थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल मतलब गड़बड़ हो गई थी एज फार एज गुजरात इज कंसर्न। क्या जाके बोला था अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी गणेश का फोटो लगा देते हैं। सजेशन दिया था। नहीं, वो सजेशन क्यों दिया था? वो सजेशन प्रधानमंत्री जी को दिया था। और वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व ना काम नहीं करता, या तो हार्डकोर हिंदुत्व है या नहीं। हिंदुत्व बीच में कुछ काम नहीं करता। जो उनका आइडियोलॉजिकल पुल है, आप लोगों का नैरेटिव डेवलपमेंट नहीं, जो हिंदू, तो आप उस पे खेले, मुझे लगता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट। नहीं, जो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने ये डिसाइड करना था कि इसके ऊपर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते। उन्होंने तो एक बात कही दिवाली के दिन, मुझे ये ख्याल आया कि देश की इकोनॉमी में अगर हमें ब्लेसिंग मिल जाए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की, तो ये इस बात में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने थोपा, उनके पास तो कोई पावर नहीं है कि वो छाप दे। I don't even know whether by the way that was a serious suggestion or he was just pulling the BJP's leg. I'm fairly certain he was pulling the BJP's leg on that one. But Neeraj Mishra जी, क्या बोला जाए? Look at the numbers that are coming in. हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं बाद में बात करूंगी. Give me 2 minutes and I'll speak about Himachal Pradesh where things are looking good for the Congress party. But look at the Gujarat numbers, 17. And I can't even call it early lead because it's 10:15 now. So the ballot boxes were opened 2 hours 15
minutes ago. The BJP is at 156, which means easily has crossed the halfway mark, easily has beaten the 2002 record of 127, and has managed to do better than ever before. Because if these seats actually translate into vote shares, they have increased their vote share by a huge margin as well. So Shreya, before commenting on Gujarat, I'm just loving the banter and the fun which you are having inside the studio. So when it comes to Gujarat, it's actually too early to call the shot. I don't know why people take elections so seriously. Yes. I don't know why it is a serious business, but you need to have fun as well. Like it's no. You know what is a serious matter? A brain surgery is a serious matter because it's a matter of life and death. Elections are not a matter of life and death. Shreya, it's a day that all of you should watch the results and feel proud and happy at how your democracy works. Yes. That is the true spirit of democracy. We have put forward our agendas, and whatever the mandate any party will get, it should be celebrated. Coming back to Gujarat, Shreya, it is too early to call the shots because only 2 rounds of EVM counting has happened. And as you were saying that Himachal is a smaller state, the constituency is small, Gujarat is a larger state, and the constituency is big. So the margins which we are seeing of the trend which we are getting is around 2,000, 2,500, 3,000 votes. Difference is between number 1 and number 2. So with every polling booth, these results can change. And we are confident that we put forwarded the agendas of the people, and people of Gujarat have given their love to us. And this will reciprocate in the final picture which will come. So the issues of the farmers, of women, of students, all these issues were put forward by the Congress party. And I think it is well received. Let us wait for at least 3-4 hours more. By 3 o'clock, we'll have a clearer picture which side this election is going. You know, they say umeed pe dunya kayam hai, but this is a bit too much umeed as far as Gujarat is concerned, sir, because I think Gujarat is absolutely clear. Himachal Pradesh, yes, it's a cliffhanger, but before I get to Himachal Pradesh, the news from Uttar Pradesh, I know that we are counting votes for 2 big states in this country, Himachal Pradesh and Himachal Pradesh and Gujarat, but let's not forget that there are 5 by-elections also. 6 by-elections actually spread across 5 states. The most important is Mainpuri. That seat was vacated by Mulayam Singh Yadav of the Samajwadi Party, the patriarch of the Samajwadi Party. It's a Samajwadi Party bastion as well. This is a prestige battle between the Samajwadi Party and the BJP. But it seems, with the numbers coming in, Dimple Yadav, the daughter-in-law of Mulayam Singh Yadav, is leading by 24,000 votes, which means she's easily winning it. Let's shift our focus now to Himachal Pradesh as we take a look at the numbers that are coming into us from Mainpuri. In Himachal Pradesh, as predicted, it's a cliffhanger that is playing out. We have a strong battle between the Congress and the BJP that was predicted. I'm going to go by the Election Commission figures because one needs to be careful when it comes to Himachal Pradesh. The Election Commission figures are telling us that the battle is neck to neck. In fact, if you see the numbers that we are flashing as well, it was 32-32 a moment ago. It's now 30-34, which means this can go anywhere. Himachal Pradesh's Chief Minister Jairam Thakur is leading in his constituency, Siraj. The BJP is hoping to, of course, buck the 37-year-old trend where an incumbent government gets voted out at the end of each term. Himachal Pradesh, much like Himachal Pradesh, much like Uttarakhand in the past, doesn't vote back a government. But that jinx, that rule, that tradition, that rivaz was broken by the BJP in Uttarakhand, to some extent in Uttar Pradesh as well. Can they do it in Himachal Pradesh? Now, most exit polls have, Parvinderji, given a bit of an edge to the BJP. Most exit polls have given a bit of an edge to the BJP, except one, which is the India Today poll that had gone with the Congress party. Yeah. But you can't say what is happening. You simply cannot say what is happening in the state of Himachal Pradesh. आप देखिए ना जितने exit polls थे वो almost same. आप देखिए आपका तो खाता नहीं खुल रहा है. आपका नहीं मतलब आम आदमी पार्टी का. आम आदमी का पार्टी. नहीं देखिए खाता तो नहीं खुल रहा है हिमाचल के अंदर. लेकिन देखिए आप छोटी पार्टी है, यंग पार्टी है,
वो प्रयास कर रही है, सही नियत से प्रयास कर रही है, अपनी बातें लेके जा रही है, अपना मॉडल लेके जा रही है, इश्यूज की बात कर रही है, समस्याओं की बात कर रही है, समाधान की बात कर रही है। वो ये कहते हैं कि हम मजदूर का, गरीब आदमी का हाथ पकड़ेंगे, उसको फ्री बिजली, फ्री पानी, जो सोशल सिक्योरिटी पूरे संसार के अंदर दी जाती है कि वो देखिए, हम बिजली का जो है वो 200 यूनिट है। 200 यूनिट कौन कंज्यूम करता है? आपके घर में अगर एसी चलता तो आपका बिल वही आएगा जो एक्चुअल बिल है। लेकिन जो गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से खाना कमाता है, जो मजदूर आदमी है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, गरीब आदमी के बारे में सोचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, अपने व्यापारी दोस्तों का ख्याल रखती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि चाहे सत्ता किसी के पास भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो गरीब आदमी का, देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के आदमी का ध्यान रखे और तभी देश प्रोग्रेस करेगा। ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि कितना हंगामा हुआ जब मनीष सिसोदिया के घर पे रेड्स हुई, सत्येंद्र जैन जेल गए कि नहीं, इनकी हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन है, बीजेपी हमको दबाना चाहती है, फलाना ढमकाना। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है हिमाचल प्रदेश में, आप देख लीजिए कितना अच्छा कर रही है। आरोपी नंबर 1 चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी तो बोला था कि हम हिमाचल जीतने वाले हैं, इसलिए हमारे सारे नेताओं को जेल भेज रही है बीजेपी। आज सुनिए, रुकिए, बीजेपी की बात कर रहे हैं। सेटबैक तो है, हिमाचल प्रदेश में सेटबैक तो है। Aishwarya is joining us from the BJP headquarters. I know we are oscillating between Gujarat and Himachal Pradesh, but that's how this election is playing out. If it's an election in 2 states, we'll go to both states. Aishwarya, you are at the BJP headquarters in Gujarat, in Gandhinagar. Go ahead. I believe celebrations already underway. Aapne laddu kha liya ya nahi kha liya? Because that's one thing that happens. They'll see a camera and they'll come and give you a laddu just as you're doing your live. Well, the celebrations are begin over here, and certainly the breakfast has also been organized, Fafda Jalebi by the BJP after the early trends that are predicting that the BJP will surely be winning in Gujarat. They are eyeing to a historic victory. And let me show you the visuals around from Shri Kamlam. The workers of the Bharatiya Janata Party have gathered over here, and Modi Modi chants are all across. That could be heard, from Shri Kamlam. We are expecting the Chief Minister C.R. Patil to soon arrive, and there you can also hear from the background. Crackers have started over here at Shri Kamlam. Certainly, they are overjoyed of the victory over here. Joining with me is also Yamal Vyas, the chief spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Sir, you were looking for this huge margin, as you were telling me yesterday as well, that BJP will be crossing 150 mark, and the trends are suggesting. How far it will go, and what sort of celebrations are we looking at? Yeah, we knew that we'll get about 3/4 of the seats and 60% of the vote. And it seems that we are getting more than 3/4 of the seats. And the people of Gujarat have blessed us in a big way, and we hope to fulfill all their aspirations for us in the coming 5 years. From where these seats have been pulled is because what we are seeing is that Congress has completely come down from 77 to 1920, which the predictions are suggesting. Have you thought of that? Congress had nothing positive to offer to the people of Gujarat. They had a completely negative outlook, and the campaign was also based on negativity, which the people of Gujarat have fully rejected. Fully neglected them. And what sort of celebrations, sir? Because this is huge. 150 plus is a big figure that BJP has set for. Now, what sort of celebration? How grand the oath taking ceremony will be? Now the workers will start coming here in a big way. Our party president and our chief minister will also be here in the afternoon, and then we'll decide on how to celebrate further. Like it was being to us on the other side as well, you can see that how the BJP workers are chanting Modi Modi slogans, as they are completely believing that this is huge and historic according to them. कितनी बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी। ये मोदी साहब की जीत है, गुजरात की जीत है, भारत की जीत है। Yeah, Aishwarya, I'll come back to you in a minute. Please give me a minute here, because Mukesh Agnihotri, who's a senior Congress leader from Himachal Pradesh, is joining us. He's the leader of opposition in Himachal Pradesh. He's also a possible chief ministerial candidate. Mukesh Agnihotri, thank you very much for your time here on Mirror Now. I hope you can hear me.
Question is, yes, you can hear me. Question is, क्या होने वाला है हिमाचल प्रदेश में? 31, 33, कभी आप आगे, कभी बीजेपी आगे, कभी बीजेपी आगे, कभी आप पीछे. This was predicted, but which way do you think it's going to go? नहीं, देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार बनने जा रही है और जो हमारे लोग जीत रहे हैं हमने काउंट कर लिया है. हमारी सरकार बननी निश्चित है. चैनल्स में एक मैं देख रहा हूं कुछ ये चल रहा है कि किसी भी ढंग से कांग्रेस को 35 पे ना दिखाया जाए. बहुत जल्दी ये ना बोला जाए कि हिमाचल जीत गई है कांग्रेस. मेजॉरिटी में मैं ये देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरे उससे बताना चाहता हूं कि हिमाचल निश्चित तौर पे कांग्रेस की झोली में है और हमारे जो लोगों की लीड्स का अंतर आप देख लें, बहुत बढ़िया अंतर है. कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर हमने स्वीप कर दिया है, सोलन स्वीप कर दिया, शिमला स्वीप कर दिया है. इन्होंने ये प्रधानमंत्री जी को लेके आए, सबको लेके आए, लेकिन अंततः जो है इस सरकार को जाना है. लेकिन मैं देखिए, मैं तो बाकी ट्रेंड्स छोड़िए, मैं तो इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स देख रही हूँ. इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स में भी नेक टू नेक हैं. तो अभी जो लड्डू है दोनों हाथों में, वो ये जो 4 अदर्स दिखा रहे हैं ना अग्निहोत्री साहब, मुझे लगता है लड्डू इनके हाथ में है. कुछ बातचीत चल रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से या नहीं? देखिए, इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारी अपने बहुमत की सरकार बन रही है. इलेक्शन कमीशन थोड़ा पीछे चलता है क्योंकि पूरे वेरीफाई होने के बाद वो बोलते हैं, लेकिन जो स्टेट का रुझान है उसमें हम बहुत आगे हो चुके हैं और हमारी सरकार बननी निश्चित है. और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे 5 साल लड़ी गई है एक नॉन परफॉर्मर सरकार से, जिसने हिमाचल को जो है 75,000 करोड़ के दलदल में धकेल दिया, जिसने जो है चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, जिसने जो है नौकरियां बेची, जहां पे माफिया राज रहा, जहां महंगाई ने जो है लोगों की कमर तोड़ दी. एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है. दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार. उसके बावजूद अगर हमने परफॉर्म किया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान की कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत है ये. चलिए ये बताइए कि चीफ मिनिस्टेरियल फेस सोच लिया है आप लोगों ने, क्योंकि वहां भी इनफाइटिंग है. खैर हिमाचल प्रदेश में हर पार्टी में इनफाइटिंग है, बीजेपी में भी इनफाइटिंग है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने मन बना लिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर का मुद्दा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पार्टी को पावर में लाना है. हमारा हमेशा से ये रहा है, हमने सबको साथ में लेके विधानसभा के भीतर और बाहर ऐसी सशक्त लड़ाई लड़ी है कि इन्होंने सारे हिंदुस्तान की भाजपा बुला ली, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेल कर रहे हैं. नहीं, ये बताइए तो, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अग्निहोत्री साहब कि अगर आपके टॉप लीडर्स हिमाचल प्रदेश में अपनी शक्ल दिखा देते, यानी कि राहुल गांधी, तो शायद जो आप बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्क्रीट एब्सोल्यूट लीड है वो हो ही जाती. Is the fact that this is such a close fight because your leaders simply showed no interest in the election in Himachal Pradesh? नहीं, देखिए, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है पूरे देश से नफरत और डर का माहौल हटाने के लिए. लेकिन प्रियंका जी ने पूरा समय दिया, बहुत रैलियां की, हमारे इश्यूज को वो जन जन तक लेके गई. हम तो प्रियंका गांधी जी के बहुत आभारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को लीड किया हिमाचल प्रदेश में, और उससे जो है आज ये माहौल बना है. और इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 1-2 घंटे की और खुशी हो सकती है, इससे ज्यादा है. अंततः इनको निराशा हाथ लगेगी. सरकार उनकी खुशी तो खैर अग्निहोत्री जी, उनकी खुशी तो खैर वो लोग गुजरात में बना रहे हैं. अभी हिमाचल प्रदेश में तो nobody is beginning to also celebrate because you don't know which way it is going to go. But yes, it could very well go to the Congress party or it could go to the BJP. And as I am saying, what will be critical now in such a close race, and up to ho gaye, 2.5 hours, it's already 2.5 hours to counting. So what is clear is that those 5 independents who are winning in Himachal Pradesh have laddus in both their hands. And I have a feeling you have already, had a conversation with them, and the BJP has already had a conversation with them. Agnihotri ji, ये इतना तो बता दीजिए, बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है?
देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वी विल लाफ लास्ट, अंततः जीत हमारी है। और जो you'll have the last laugh. जी, और ये हमारे साथी हैं, सब हमारे पास ही आएंगे। I will congratulate you. I will congratulate you and give you a call once the results are out. So we'll leave it there for the moment. Mr. Agnihotri, thank you very much. The Congress absolutely confident there of winning Himachal Pradesh. Despite the numbers on our screens, they are saying they have done their calculation. Himachal Pradesh is a small state, which is why it is easy to sort of put the numbers together and see who's winning. And they have done their calculation and they are absolutely clear that they will win with a majority. Will that happen? We just don't know. In fact, no one knows right now. We'll just go by what the Election Commission is telling us. The Election Commission is right now telling us that this is going to be a neck-to-neck fight. Neeraj Mishra, you continue to be with us from the Congress party. I wonder where Hiren Kotak, the BJP spokesperson, has gone. Can I just tell my producers to patch him back again? But as we do that, Neeraj Mishra, where is this confidence coming from? इतना confident इन figures को देख के तो नहीं होना चाहिए. No, we have a system of surveys and we have a network from where all the details come to us and we compile it. And as of now, we are leading on 43 seats, the current data which is there. There are two interesting things, Shreya. The postal ballot, which came out at the counting happened at around 8:30 or 9, Congress had a lead of 9 seats in the postal ballots. So we were saying this throughout our campaign that after 1991 election, this was the only election in the country where the government employees were voting against the government, and that showed in the postal ballot results. So all these factors which we had factored in have worked in our favor. One more thing which is interesting, that why did Aam Aadmi Party run from Himachal Pradesh? So Himachal is a bordering state to Punjab, and if you remember correctly, when in Solan the teachers had protested during Arvind Kejriwal's rally, and Kejriwal had to say that ye log to bhade ke tattu hain. He forgot that people from Punjab and Himachal has a relation of roti and beti. These people go to work in Himachal and people from Himachal come to work in Punjab. So whatever false and propagandist narrative which Kejriwal was trying to build in Himachal, it could not stand. That is why he ran to a far distant state in Gujarat. So final nail in the coffin was when he started abusing people of Punjab, and the kind of atmosphere which is there in Punjab, it is actually reflecting in why Aam Aadmi Party is zero in Himachal Pradesh. Okay, but you know, the fact is that as of now, if you look at the if you look at the Gujarat elections, as of now, they have opened their account and they are at 8, which is not bad for a new party. And for all you know, if the Congress doesn't end up doing very well, doesn't end up doing very well in Gujarat, it means that, well, the AAP could just emerge as the principal opposition party. Wo is baar nahi hoga, but they are well on their way to do it. Let's quickly look at the numbers once again. Just take a look at all the numbers that are coming in. Just if it's one comment 16 I would like to the Congress, if it's 16 to the Congress, it's minus 48 from last time. Minus 48 in Gujarat. That is falling on your, that's completely falling flat on your face. Shreya, two things. First, the narrative which was built by Arvind Kejriwal. He kept coming on your channels and signing papers saying Congress will get less than 5 seats and Aam Aadmi is going to have 50 plus seats. No, he doesn't come on our channel. Narrative, okay, he does not come on your channel. On the other 1100 crore media advertising propaganda machinery which he has. So on that, whenever he came, he was having this narrative that Congress will be the third party in Gujarat. So his narrative is falling flat. Second thing which is there, that people of Gujarat have voted for the Congress party. I am telling you why. Because this is a large election. The difference in votes is very small, and with every booth the numbers will change. The idea on which Congress party was contesting this election is there is a discontent between women because of price rises, in students because of paper leak, incidents like Morbi, incidents like the illicit liquor scam. There have been reports of drugs on Adani Sports. All these issues were there, and Congress
party actually raised it. And one more thing we should note, that before this B team of BJP went to Gujarat in 2021, when Vijay Rupani was kicked out of his office, the entire cabinet was changed. Aam Aadmi Party was nowhere to be seen. So there was an incumbency factor for the government, and which the Congress party was raising. So this will reflect in the results as well. Let us wait and watch till 3 o'clock. After 3 o'clock, we will have a clearer picture of where Gujarat is going. Gujarat is going one way. I think after 3 o'clock, we'll have a clearer picture of where Himachal is going. Gujarat has already gone where it had to go. Himachal's final result will be out by 1 o'clock. Shreya, we won't have to wait till 3. We'll have the final result by 1. You know what my fear is? Given how close this race is, the final result may come, but you may not know by the end of the day who is going to form the Sarkar. If the race is as close as the numbers that are coming to us. I hope it does not happen like MCD. That are coming to us. I hope it does not happen like MCD, that the party which has won is not taking a claim for the mayor, and the party which has lost is taking claim. I hope it does not go that way. ये देखो, this is misinformation. नहीं ये तो मिसइंफॉर्मेशन है सेठी जी, ये तो मिसइंफॉर्मेशन है। नीरज जी अभी तो आपने जीत दर्ज नहीं करी। धीरे धीरे पूरे देश से कांग्रेस साफ होती चलेगी। पंजाब में आम आदमी ने कांग्रेस को पीछे कर दिया। आपके बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर चले गए। मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है, आप मेरी बात भी सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए। एमसीडी के अंदर आप साफ हो गए, गुजरात के अंदर आप साफ हो गए। अगर हिमाचल के अंदर आपकी सरकार आती है, अभी रिजल्ट तो आने दीजिए। आप पे पहले ही इतना घमंड है, आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देश की इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश से साफ हो गई। आम आदमी तो अभी स्ट्रगल कर रही है, नई पार्टी है, यंग पार्टी है, वो अपने इश्यूज को लेके, अपने मॉडल को लेके जा रही है और उसको कई जगह पे सफलताएं मिल रही हैं। जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी ने ये स्थान ग्रहण किया, ये इतिहास है। पूरे देश में नहीं, पूरे संसार के अंदर इतनी जल्दी जो पार्टी राइज करी है वो आम आदमी पार्टी है, जो इश्यूज के ऊपर काम करती है। आपको थोड़ा सा संतुलन में रहना चाहिए। अभी आप हिमाचल जीत जाइएगा, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अभी उसका भी पक्का नहीं है। अभी पक्का नहीं है, अभी नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है। But here's the question. Yeah. Let me add a supplementary question, and then you can respond to Parminder ji. Fact is that look what happens in Delhi. The Aam Aadmi Party comes in Delhi. What happens? It becomes the principal opposition. Congress ka safa chat. We've seen that, right? We've seen the same thing happen in Punjab as well. Yeah. The Congress should be afraid right now of the Aam Aadmi Party, irrespective of how they do in Gujarat. Forget Himachal Pradesh. Himachal Pradesh में शायद उनका खाता भी नहीं खुले। बीजेपी भी ये कह रही थी कि भी हमें नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। बीजेपी की इच्छा पूरी हो गई। एमसीडी चुनाव के बाद बोल लिया। ये तो कल वाली स्पीच हो गई जो रटी थी। अच्छा चलो। श्रेया, what I always say is, सर आपके पास तो हिमाचल है, वो भी अभी नेक टू नेक फाइट है। अभी रिजल्ट आने दीजिए, फिर बोलिएगा। सेठी साहब सुनिए ना, देखिए इलेक्शन रिजल्ट की खूबसूरती है कि वो विनम्रता सिखाती है, जीतने वाले को भी और हारने वाले को भी। तो आप भी विनम्र हो जाइए, हम भी विनम्र हो जाते हैं। हिमाचल में हम मेरी बात को कर रहे हैं, गुजरात में हम आपको वहां से बाहर खदेड़ के भेज रहे हैं। तो देखिए हम लोग विनम्रता से बात करते हैं। भाई दिल्ली में आप जीते हैं, आपको बधाई है। गुजरात में सर आप देखिए ना रिजल्ट, गुजरात में आप 77 3 बजे बात करेंगे सेठी साहब। 77 जो केजरीवाल ने लिखा था कि 16 से आप कम रहेगी, आपको 5 से कम दिखाएंगे और इस आंकड़े को 70 प्लस होते हुए दिखा देंगे आपको। 3 बजे तक रुकिए, आप और मैं फिर डिबेट करेंगे यहीं पे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, श्रेया, we need to understand the issues of the people of Delhi also still remain. दिल्ली के लोगों के मुद्दे भी जो हैं वो आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। आज भी यमुना गंदी है जो केजरीवाल साहब साफ कर रहे थे, आज भी कूड़े के पहाड़ हैं जो बीजेपी ठीक कर रही थी। अरे कल ही तो जीते हैं। बट द इश्यूज आर देयर नो। पहले इनको मेयर बनाने दीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ में also they wanted to make the mayor. श्रेया, चंडीगढ़ में भी मेयर बना रहे थे, which couldn't happen. सूरत में भी मेयर बना रहे थे, which could not happen.
तो वो ए और बी टीम आपस में डिसाइड तो करे कि पहले मेयर किसका बनेगा। कमिंग बैक टू फिर हिमाचल और आपके गुजरात पे, आई थिंक आपको बी टीम क्यों बोला जाता है? आपको पंजाब में खदेड़ दिया, दिल्ली में बीजेपी को खदेड़ दिया, वो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, आप कहते हैं पंजाब में आज चुनाव हो जाए तो आप और बहुत सारी असदुद्दीन ओवैसी को भी बी टीम बोला जाता है। देखिए हमारी कोई टीम नहीं है, हम पहले नकार चुके हैं कांग्रेस को, एक बार अलायंस करने के बाद नकार चुके हैं, उसके बाद हमने कोई कोऑर्डिनेशन ना करा है, ना भविष्य में करेंगे। अच्छा, give me a minute, gentlemen, just give me a minute, have a glass of water each. Let me go to Himachal Pradesh. I believe वहाँ बर्फ पड़ रही है. Let me go to Himachal Pradesh. This is where our correspondent Gaurav is. Gaurav, where are you? What is Pratibha Singh saying? Have you managed to have a chat with her? She's a possible CM face for the Congress party. बिल्कुल, देखिए संभावित चेहरा है मुख्यमंत्री की, और हमारी सुबह एक छोटा सा कन्वर्सेशन जरूर हुआ था प्रतिभा सिंह जी से, और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि तकरीबन 40-41 सीटों के आंकड़े के पास जो है वो कांग्रेस यहां पर पहुंचेगी। और आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं पैन करके, यहां पर कांग्रेस के तमाम समर्थक और खास कर करके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को मानने वाले और पूरे हिमाचल में मानने वाले लोगों का एक पूरी लंबी फहरिस्त है, उनके समर्थकों की एक सूची है। लेकिन अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, 68 सीटों का ट्रेंड जो आया है, वो इलेक्शन कमीशन के अगर हिसाब से चलें तो 33 पर कांग्रेस लीड कर रही है, 31 पर भाजपा लीड कर रही है, और 4 से 5 जो निर्दलीय थे, जिसमें से रेबल की बात करें, 4-5 रेबल जो है बीजेपी के, वो भी लीड कर रहे हैं, उनका भी अहम रोल हो सकता है। हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या लग रहा है अभी? बहुत न खुशी है न दुख है, मैच फंसा हुआ सा नजर आ रहा है। नहीं, देखिए कोई मैच फंसा हुआ नहीं है। कांग्रेस, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि 40 और 42 के बीच जो हमारी सीटें आ रही हैं, और कांग्रेस जो है बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो क्या वो आंकड़ा छू पाएंगे जिसमें क्लियर मेजोरिटी? अभी तो ऐसा लग रहा है त्रिशंकु ना हो जाए और जो निर्दलीय जीत रहे हैं उनकी भूमिका अहम हो जाए। देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है, एक ट्रेंड चले हैं, अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। तो जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, कांग्रेस लीड कर रही है, और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाएगी। बिल्कुल, तो मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं, ये विजुअल्स हैं, और प्रतिभा सिंह जो हैं वो इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं। हमारी सुबह के वक्त उनसे जरूर बात हुई थी जब तकरीबन 8:30 के आसपास कुछ पोस्टल बैलेट्स के ट्रेंड आने शुरू हुए थे। उसके बाद अंदर से मैसेज दिया गया है कि जब क्लियर ट्रेंड्स आएंगे और जब कांग्रेस सरकार में मेजोरिटी बनाती हुई दिखेगी तो बात करते हुए जरूर आएंगे। यही वजह है कि अभी जितने भी समर्थक या कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सभी नजरें गड़ाए हुए हैं, कोई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, कोई अलग अलग टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर, और जाहिर तौर पर इन्हें इंतजार है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या जो पिछले बार का नतीजा था 2017 का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 44 के आंकड़े तक पहुंची थी, क्या उसी आंकड़े को कांग्रेस छुएगी या फिर किसी तरह का बदलाव होगा? अभी कह पाना बहुत जल्द है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा एज में दिखाई दे रही है और उन्हें उम्मीद है कि वो क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जिस मैजिक फिगर की बात होती है 35 की, वहां पर अभी जो है कांग्रेस पहुंचती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जो निर्दलीय खास करके जिन्हें हम कह रहे हैं रेबल कैंडिडेट्स हैं, जो कि बीजेपी के, उनमें से 4 जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं रेबल, वो लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो सीधा मतलब कि बीजेपी को पहुंचा है, अगर वो रेबल नहीं होते। तो इस तरह की तमाम जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई हैं। वहीं जो सीनियर ऑब्जर्वर्स जो है कांग्रेस ने तय किए थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हो या हरियाणा के फॉर्मर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो लोग जो है नजर रखे हुए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और इसके अलावा मंगल पांडे जो है वो सीएम जयराम ठाकुर के आवास पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परिस्थितियों पर नजर रखी है। और अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत रहे हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। दोनों पार्टियों में से कौन कदम बढ़ा पाता है, पहले कौन उनको पाले में ला पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगली महत्वपूर्ण चीज है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर कहीं भी बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आई है। तो कुल मिलाकर इस हिली स्टेट में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल में भी फिलहाल जनता ने नकार दिया है। चलिए, Shivam Chabra, thank you very much. Thank you for joining us, Gaurav. Shivam Chabra, you're a BJP spokesperson. It seems the rebels may cost you the Himachal Pradesh election. By the sound of it, we are still not certain. It's still neck to neck, but at least that is the indication that we are getting.
Let the results come out, and I think I'm hopeful, still hopeful that we'll make the government by our own. We'll still get the mandate what is needed, and we'll hit the magic number. But as far as the rebels is concerned, yes, I do agree that that might have costed us. I mean, almost a dozen seats in that case. If that would have been sorted initially, I think should not have been a problem this round. But I think I'm still hopeful that we'll hit the magic number. You're still hopeful you'll hit the magic number, but on what basis? Because the figure right now is giving the Congress party a lead, a clear lead. I mean, you know, we can never say a clear lead when it comes to Himachal. We always knew this was going to be a neck-to-neck election. This will go down to the wire. That's exactly what it's going down to be. But it seems that the BJP is at 29 right now and the Congress is at 34. You have 5 independents who are leading. Are you in touch with these independents? Because there's a good chance that if you or the Congress wants to form a government in Himachal Pradesh, you will have to bring them in your fold. This is what I'm trying to say. Himachal is an interesting state to watch out for, and it has been always been like this, I would say. So just let's wait for the final result tally to come in before we make any preconceived or maybe a premature kind of narration to it. Let's just wait for the final tally. But because this 34, 29, 33, 34 is continuously happening for past almost 1.5 hours now. So let's just wait. Let's just wait. So you're being cautious. It's interesting. It's interesting that the BJP that always plays on the front foot. It's interesting. It's interesting that the BJP that always plays on the front foot today is not playing on the front foot. And the Congress party seems extremely confident that they are winning Himachal Pradesh. No. What are they basing this confidence on? Have you managed to understand that? No. You are. No, please don't read too much. At the start of the discussion itself, I said we will form the government with full mandate. We'll hit the magic number. It's nothing too conscious about. It is just that I don't want to, preconceive a lot of things because it's what all the trend shows is very neck to neck. So I don't want to make too much of claims. But yes, what I can perceive is my ground report says we'll certainly hit the magic number. Okay, Shivam, I hope you can stay with us because I'm going to stay with Himachal for a bit because frankly, that's where the fight is on. Gujarat, the fight is absolutely clear. We know who is going to be sworn in on the 10th or the 12th of December. Dates we pehle hi set ho gayi thi. But Himachal Pradesh, no one knows what is happening. Gurpreet is in Himachal. I believe he's outside Pratibha Singh's residence. Gurpreet, please go ahead. Well, yes, of course, if we can see, I'll request my VJ to show there is a big screen and we have seen that most of the Congress leaders as well as the supporter, they are gluing to this screen at this point of time. The fingers are crossed, but if we can look at the number, they are already leading from the 34 and they are very confident they are going to form the government because they feel that OPS scheme has played a magic for the Congress party and that could be one of the reasons why the BJP was not able to lead various seats. One of the supporter from the Congress, he's with us. We will talk to him to understand how do they feel because if I'll request before going to talk to him, I'll request to show this Pratibha Singh and Vikramaditya Singh. They are sitting inside, some of the leaders. A lot of political activities is happening here. They are discussing the strategy, political strategy with all the leaders who are going inside and meeting these leaders and big tall netas of this Himachal Pradesh. And Pratibha Singh is a Congress chief at this point of time. We have seen that observers from the central leadership, they have already come. Former Chief Minister of Haryana, Bhupinder Hooda, as well as the Mr. Baghel, Chief Minister, he has already landed here in Chandigarh and Rajiv Shukla is already sitting there. They are also keeping eye on the trends and once they are going to be sure, they will be able to come here and after that the next strategy will be chalked out. But before going to the conclusion, because we have seen the 4 independents are also leading and what we have learned from the sources also, these independent, most of the independents are
BJP rebels. So BJP is also trying to chalk out a strategy to just woo these independent. If they are going to reach that mark, they are going to form the government in the state. But as of now, we have seen the Congress leaders and Congress supporters, they are very charged. They are feeling there is a tradition. One time the people gives a chance to Congress, and one times they are going to give chance to BJP, and they feel that this tradition will definitely repeat. So now talk to this Congress supporter who is standing with us. So क्या लगता है? Now we have seen that 34 from 34 seats you people are leading, Congress is leading. क्या लग रहा है? पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं. अभी तो ट्रेंड चल रहे हैं. आपको विद इन 1 आवर की जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी. पर अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस भी बड़ा रोल अब तक जो दिख रहा है ट्रेंड्स में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिपेंडेंस कहीं बीजेपी की तरफ ना चले जाए. आर यू गोइंग, कांग्रेस कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना रही है कि इंडिपेंडेंस से भी टच में हो रही है? जरूरत के हिसाब से सब हर पार्टी करती है, मगर हम पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार बना रहे हैं, 40+ सीटें हम लेंगे, किसी की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. तो क्या लगता है, क्योंकि ओपीएस स्कीम हमने देखा है कि लगातार ओपीएस स्कीम थी जो वो उसको बार बार कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया, तो क्या लगता है कि लोगों के मन में कोई है ऐसी बात? कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसियां थी वो प्रदेश के हित में, जो भी फैसले थे प्रदेश के हित में, और ओपीएस को जो मुद्दा है वो हम भी मानते हैं सबको जरूरत थी, उसकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिल रहा है. तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. वी विल टॉक टू मोर सपोर्टर्स हु आर स्टैंडिंग हियर. तो जैसे ट्रेंड आने चाहिए थे, एंटी इनकम्बेंसी जैसे आनी चाहिए थी वैसे आ नहीं रही ट्रेंड्स में. अगर देखें तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कमजोरी रही है और जहाँ कांग्रेस को लोग प्रेफर नहीं कर रहे? नहीं, कमी कोई नहीं रही है. कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाएगी और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को ही आगे लाया है. तो अभी अगर ट्रेंड देखें तो इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं. 30 बीजेपी आगे चल रही है, 34 कांग्रेस चल रही है और 4 इंडिपेंडेंट चल रहे हैं. तो कहीं लगता है कि आगे उम्मीद है इंडिपेंडेंट्स का रोल रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में. इंडिपेंडेंट्स का रोल तो क्या क्लियर मेजोरिटी की होप है? So I think everyone agrees, even voices that are coming from the Congress party in Himachal Pradesh agree, although the BJP is not agreeing to it, but even voices coming from Himachal Pradesh are agreeing that yes, it is neck to neck, but they are saying we will form a government, but these 3 others or 4 others in Himachal Pradesh, the independents who have a lead right now, they will be critical, crucial in who rules Himachal Pradesh next. Will it be the BJP? Will it be the Congress party? Will Himachal Pradesh stick to Rivas, that is tradition of voting out governments after every 5 years, or is that jinx going to be broken? Is that tradition going to be broken? Again, as I said, it's about 11 o'clock, it's 10:53. The picture in Himachal Pradesh is still not clear. The picture will be clear, I think, by 1 o'clock, and even by 1 o'clock, if these trends hold as they are right now, and I'm going strictly by the Election Commission website numbers that are coming in, if these trends hold, then as I said, these independents will become very, very important. To Shivam, who is the BJP spokesperson on the panel, if the BJP, we understand now that the 12+ rebels have cost the BJP dearly, right? Because they all seem to be leading in their seats. Will it be a mandate against the Agniveer scheme? Because we know in states like Uttarakhand, we know in states like Himachal Pradesh, every family sends a Fauji, whether it's to the Army, Navy or the Air Force or the Coast Guard. If the BJP ends up not forming a government in Himachal Pradesh, will that be a verdict against the Agniveer scheme as well? Because that was also a mudda apart from the old pension scheme. No, I don't think that it's going to be a mandate against the BJP in any ways, for that matter. As far as the issues you are raising, about the Agniveer and all, I see that has already been sorted. I don't think that that was actually an election issue for anybody, for that matter. So I don't think that makes a lot of difference to what the results are going to be like. Yes, because it was a Himachal Pradesh specific and centric election. Certain pockets where I would say there could have been anti-incumbency against the incumbent government could have been a possibility of probably, the trends what we are right now seeing. But I'm still, as I say,
and I say it with full conviction, that, I still hope that we hit the magic number. We are still hopeful. My ground report says that we are leading on almost 3 seats following 32. So let's see. Let's just hope for the best. For the best, but the Prime Minister has campaigned very extensively in Himachal Pradesh. We know he's the winning card as far as Gujarat is concerned. Maybe he didn't even need to hold a single rally and the BJP would have won Gujarat. But Himachal Pradesh, a lot of effort. The BJP has made a lot of effort in Himachal Pradesh. The Prime Minister has campaigned there multiple times. He showed up at the Kullu Dashera as well. Those pictures were across on our television screens. So for the BJP to lose this one will be an embarrassment. But as I said, who knows kya hone wala hai. Let's wait and watch till 1 o'clock. I hope you'll be patched again, Shivam, at 1 o'clock so that we can have an extensive chat on why Himachal went the way it did, or whether it has gone anyways. Because if it's 50-50, tab kya hoga? Then to things will stretch, I think, till tomorrow, day after, day after. Because Sarkar banane ke chakkar mein, I think, it will be, all the efforts will be there. But we'll leave it there for the moment, gentlemen. Thank you very much for joining us. Shivam, Neeraj, Parvinder ji and Sharad Gupta ji, thank you very much for joining us, being here with Mirror Now on this very important day. Thank you. Now, every day we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror Now. You first. Your issues are my stories, and that is news to me. Resident doctors out on the street. We expose the lies, uncover the truth, and demand accountability, all for a better tomorrow. With a transformer blast, no arrests have been made. On Mirror Now, we take the road less traveled, fight all odds, risk everything, only to highlight your plight. I am Neha Hebale, reporting for Mirror Now. You first. I've been watching it since its first day. Mirror Now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. In the country's change headquarters, Mirror Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on the Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? Is about one bold, strong voice that breaks silence. बोलो आपकी जान की रक्षा करते आप उनको मरवाने के लिए लेके आते हो. We go extra mile to give voice to stories that otherwise go untold. This tunnel is being constructed with the connivance of Pakistani army. We believe in asking straight, direct and pointed questions to people in corridors of power. I am Pradeep Datta reporting for Mirror Now. You first. News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter. You are on top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. Very good morning to all of you. It's been a fascinating day of counting where you have the final picture slowly emerging in Gujarat and Himachal Pradesh. Not time to call out the final results yet, but of course things have firmed up substantially. In Gujarat, new records being set by the BJP. In Himachal Pradesh, the suspense is still on.
In the Mainpuri Lok Sabha seat also, remember, Dimple Yadav, the last we checked, was taking a clear lead. That's a Lok Sabha by-poll that we'll bring you updates on. We have our correspondents on ground to get us live coverage from major centers and a panel of experts and analysts, also party spokespersons, to talk us through the figures. I'm Afrida Rahman Ali. Let's get started with the headlines. Early trends in Gujarat show a complete domination by the BJP. Leads in over 150 seats, on the way to script their biggest ever victory. Aam Aadmi Party fails to impress in Gujarat, fails to get leads even in double digits so far. The Congress will have the last laugh in Himachal Pradesh. From what it looks like as of now, its possible chief ministerial face Mukesh Agnihotri speaks exclusively to Mirror Now as BJP and Congress lock horns. Crucial by-poll results today. BJP trails in 5 out of 6 states. Samajwadi Party's Dimple Yadav looks to retain the family bastion of Mainpuri. Early trends show BJP candidate in the site of Gujarat bridge collapse Morbi leading Kantilal Amrutia had worked tirelessly to rescue victims. The Delhi High Court grants bail to former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey in the ED case linked to NSE co-location scam. All right, first let's put our focus on Gujarat. The BJP, the ruling BJP in the state, is set to script history yet again with a sweeping performance. Early trends show BJP has raced towards its best ever results in Gujarat. The Aam Aadmi Party, cutting into Congress votes, failed to get leads even in double digits as of now. But yes, first reactions coming in already on these trends. Let's listen in. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो गुजरात मॉडल है तो लगातार पीपल एंडोर्स कर रहे हैं. पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग द मॉडल ऑफ गुजरात लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम ऑलमोस्ट 2000-2001. इसलिए मुझे लगता है जो गुजरात मॉडल हम देश के सामने भी रख रहे हैं वो भी एक्सेप्ट हो रहा है. एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है. नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे. ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है. सर, क्या ऐसा कारण है कि 27 साल से लोगों ने भरोसा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है. देखिए, हमने तो चुनाव के पहले भी कहा था, वोटिंग के बाद भी कहा है और रिजल्ट जब आने लगा है तब भी हम आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात करीबन 90 से कांग्रेस यहाँ नहीं है, उसको 32 साल हो गया. और किसी एक पार्टी को 7वीं बार उसी पार्टी को सत्ता में लाना, ये जनता का विश्वास संपादन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सद्भाग्य है. खास करके मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से मॉडल बना, ये मोदी जी का गुजरात है. ये गुजरात और मोदी जी के बीच में 27 साल से कोई नहीं आया है. विकास ये गुजरात का मॉडल है. गुजरात की जो जनता है, जनता को अभी और आगे बढ़ना है. नरेंद्र और भूपेंद्र का डबल इंजन सरकार, जो साहब बोलते थे खुद, उस प्रकार से ये डबल इंजन सरकार को प्रचंड बहुमत मिलेगा. मोदी जी ने यहाँ कर्फ्यू मुक्त गुजरात दिया है, शांति दी है, तो लोगों को भरोसा है. ये भरोसे की भाजपा सरकार है. प्रचंड जीत होगी, इतनी ज्यादा सीटें आएगी जो इतिहास रचेगी. Let's look at the opposite camp as well. The Congress office in Gujarat wears a deserted look. This even as the Grand Old Party falls to its lowest ever numbers in the state. Take a look at this ground report by my colleague Makarand.
चुनाव का परिणाम सामने है। एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश कल तक नजर आ रहा था, आज लगभग खत्म हो गया है। यहां पर कुछ मीडिया कर्मी, कुछ पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता बिल्कुल नदारद है। ये कांग्रेस दफ्तर है और यहाँ पर आपको खाली सीढ़ियां, खाली दरवाजे ही नजर आएंगे, कुछ मीडिया कर्मी नजर आएंगे और बाकी सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी दफ्तर में उत्साह का माहौल है, जोश का माहौल है। बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर राजीव गांधी भवन है, इसके बाहर ये घड़ी लगाई गई थी जिसका काउंटडाउन अभी चल रहा है। घड़ी टिक टिक कर रही है, काउंटडाउन खत्म हो रहा है। ये काउंटडाउन इसलिए था कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार 27 साल बाद बनेगी, लेकिन इस घड़ी के खत्म होते होते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। BJP is galloping towards an absolute majority in the Gujarat Assembly elections and could even end up bettering his best ever performance in the state since the 2002 Assembly elections when it won 127 seats. It could, in fact, bypass that figure as well. The party's lead currently is over 150 seats, means that it's set to achieve the highest ever majority in Gujarat while retaining the state for the record 7th time. The highest seat tally ever in the state's assembly elections is 141, which the Congress had managed to reach way back in 1980. In fact, this is in stark contrast to the party's fortunes today in 2022, where it has clawed its way to double digits as per the leads. So let me go across to Abhishek joining us from the BJP headquarters. Let me first get in a word from Abhishek. Abhishek, hi, good morning. You were reporting, from amidst all the celebrations, and I can still see the BJP karyakartas behind you waving their flags, and of course it is a joyous moment for them. But in terms of what has gone in favor of the BJP, I am sure you would have all the lowdown to give us on why such a historic victory in a way for the BJP. I think we can at least in Gujarat call out a victory for BJP very safely at the moment. Abhishek. These are the visuals on your screen. The party workers were waiting for this movement to come here and celebrate. And at this point of time, BJP is leading in more than 150 seats. And these are the visuals of celebration happening right at the BJP headquarters in Gandhinagar. And this is the celebration. People are enjoying and they are, celebrating the huge lead by 150, which is currently more than 150 seats. In fact, the question which you asked, I would like to tell you how the anti-incumbency of 27 years was turned into pro-incumbency by the BJP. They entirely rehauled the entire cabinet of Rupani. The entire cabinet was changed. In fact, the equation, right from the caste equation of Dalit, OBC, SC, ST, this time all were accommodated. In fact, the problems that the BJP faced in 2017 of, the partidar agitation was almost, negated at this given point of time. And the way the, sitting MLAs, 40 sitting MLAs were changed, tickets were given to other people. In fact, more than all the caste equation was informed and taken into account. And this is the celebration and people are enjoying. And that's the reason this can be sensed. In fact, last but not the least, the Modi factor is something that is the most important for the people of Gujarat. Celebration का माहौल है सर, क्या कहेंगे? Celebration का माहौल है. पूरे गुजरात में सेलिब्रेशन का माहौल है. भाजपा अपना एक नया इतिहास बनाने जा रही है. सब रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है. हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कोई स्टेट के अंदर किसी पार्टी की सत्ता रही है तो भाजपा ने कर दिखाया है. साथ में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें का भी रिकॉर्ड, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा सीट लेने का रिकॉर्ड भी भाजपा 150 से ज्यादा सीटें आ रही है. क्या 150 से ज्यादा सीटें आ रही है, क्या कहेंगे? 150 से ज्यादा सीट इसीलिए आ रही है कि ये गुजरात की जनता ने कांग्रेस के आतंकवाद और तुष्टीकरण की नीति और ये आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ी और खालिस्तान विरोधी, खालिस्तान तरफी नीति को भगा दिया है. The mood you can sense out here,
People are enjoying and they're telling that more than 150 seats are coming, and people of Gujarat has rejected the freebies offered by Aam Aadmi Party, and Congress is trailing very badly. Back to you. Also now the biggest talking point here is that the AAP factor was overstated. It has dented the Congress, hasn't dented the BJP. Abhishek, thanks for joining us. Let me introduce here on the program, joining me is Mr. Sandeep Ghosh, who's an author and a political analyst as well. Very good morning, Mr. Ghosh. Looking at the figures, what are your thoughts at the moment? I believe two talking points clearly emerging. One, of course, that AAP has not performed as it was supposed to or touted to in Gujarat. The Congress, on the other hand, has 20 seats, not a great score as of now. But then at the same time, what is being said about Gujarat is who is going to be number two. That picture is clearly emerging. From Himachal, a very close contest. Over to you, Mr. Ghosh. See, AAP performing as per the hype is one factor. But if you see it realistically, for a party which is a new entrant, which is totally an outsider, I would say this is a reasonable performance. When you compare it, because Arvind Kejriwal always speaks in hyperbole, and how he sort of tried to build up, get a share of voice, and therefore, as they say, with due apologies, you sit in Bombay, so if I can say this, the Delhi media gets very excited about anything AAP does. So there is a sense of, disappointment there, or an anticlimax out there. But overall, if you see, if they manage to still get 14-15% of votes, I don't know what is the final vote share count will come. Nobody was giving them very high number of seats. So to that extent, they have, I think, done fairly well. And that should be the bigger concern for Congress. And I think it is very, very superficial or specious to say that AAP cut into the Congress vote and therefore BJP has done well. Add up the two vote shares. But together, the vote share, in fact, has fallen from what it was with Congress alone earlier in the previous elections. AAP's own strategy did not work, because what they were trying to sell in terms of the Delhi model, people in Gujarat totally rejected, because Narendra Modi has a very, very different standing out there. And if you try to pull him down and then offer certain so-called freebies, which to a large extent, a lot of Gujaratis would see as an affront, that they have to be offered those sort of freebies. The Gujarati mindset is that if you give them 10 rupees, they try to make 1,000 rupees of it investing in business. So they're not really looking at doles for sustenance. So a lot of the other attacks which they had done I've noted the points you've made. I'll come back to you. I am joined by Mr. Devu Singh Chauhan, Minister of State for Communications and Member of Parliament from Gujarat. Mr. Chauhan, इस वक्त जो numbers हमारे सामने हैं, एक तो ये कि गुजरात में BJP has got a clear mandate, a decisive one at that. What are the factors you would attribute to this kind of a huge historic win for the BJP in Gujarat? Yes, due to our honorable Prime Ministers and our workers of party have been done a tremendous hard work. We got this result, and on the other side you can see the leaderless organization without organizational capacity. Congress is going to lose day by day his ground on this Gujarat. Mr. Chauhan, yes, I understand it's a moment for celebrations for the BJP. And this is, after all, the Prime Minister's home turf. It's the home turf of the Home Minister as well. The way the party leadership put its weight behind the campaign, it was unprecedented in a way to see that there was not just the top leadership,
managing an overall campaign. But even at the ground level, we saw that, a lot of changes were made. The entire cabinet was overhauled. The chief ministerial candidate was changed. In terms of ticket distribution, sitting MLAs were changed. What was it going on in the mind of the top leadership of the BJP when all this was happening? We are always changing the new faces in government as well as in organization. As you know, before we go in election, we have changed the government, those who are having a experienced person, but the people of Gujarat is wanted new faces who is having new direction, new vision with as per the requirement of Gujarat. So, and we have changed also a organizational structure also. We try to involve the more youth in organizational activity so that the youth having a strength to reach each and every corner of the Gujarat, and youth can develop a better Gujarat. And, as a member of parliament from Gujarat, I am sure this kind of a victory in Gujarat bolsters the image of Prime Minister Modi, bolsters the prospects of the BJP in other states. What is the particular advantage you think that the party will have from here on? यहाँ से अब आगे की जो elections है, जो लोकसभा के चुनाव है, उस पे आपको लगता है इसका एक भारी असर रहेगा? आने वाले समय में जिस तरीके से हम रिकॉर्ड ब्रेक ये सीट्स के साथ जीते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक वोट शेयर हमारा है, तो उसका सीधा फायदा लोकसभा में मिलेगा। मैं तो ये मानता हूं कि 26 लोकसभा में आज तक जो भी लीड्स रिकॉर्ड लीड्स है, वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के हम पूरा क्लीन स्वीप गुजरात में करेंगे। जी, okay, thanks very much, Devu Singh Chauhan, a member of parliament from Gujarat, joining us here on the program. Shukriya and बहुत-बहुत बधाई हो आपको for the initial leads. As per the leads, it's a massive victory for the BJP. Thanks for joining us. Okay, I am now also joined by Bihari Lal, Vice President of Himachal Pradesh, BJP. A quick word from Mr. Bihari Lal. Yes, आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी जिस तरह के हम numbers देख रहे हैं? I am also going to introduce our other guests, but quick word from Mr. Bihari Lal first. हमें आप परिणामों से दिख ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। नहीं, हिमाचल में तो उस तरह का लीड्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अगर हमारे स्क्रीन फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस 35 पे है और बीजेपी 30 पे है। तो किस हिसाब से आपने कहा कि आप सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में? मैं इलेक्शन कमीशन की साइट पे देख रहा हूँ, सामने उस पे 33 है, 33 और अदर 4 पे है। जी, तो ठीक है, आपके चैनल का शायद कोई एक आधा गैप हो सकता है, पर कांटे की टक्कर दिख रही है अभी। जी, कांटे की टक्कर दिख रही है। That is the buzzword right now from Himachal. Bihari Lal ji, shukriya. Let me introduce, joining us here on the program, Mr. Rakesh Goswami, BJP spokesperson, Anshula Vijit, spokesperson of the Congress Party, Huda Zariwala, political analyst, and Sandeep Ghosh continues to be with us. Anshul, for the Congress Party in Himachal, I'm sure there is a lot of nervousness right now. Our screens are showing a lead as of now, 35 vis-a-vis 30 for the BJP, but 3 others, the independents, what we understand might have to play a very crucial role. What is your understanding, Anshul? No, Preeta, we are definitely forming a government in Himachal, that there be no doubt. There was a lot of resentment on the ground, and we ran a very, very positive campaign. But it's been a mixed morning for us. Himachal is a very good story. We're going to get there in the end. It's not a neck-and-neck battle. All sources from the ground have told us that we are going to form a government there. In Gujarat, well, I know that seems to be the biggest story for for everyone. I think that
Well, there's a different kind of strategy that we adopted in Gujarat, which was a micro strategy of going door-to-door campaigning, of mohalla meetings, of nukkad sabhas. That doesn't seem to have worked, at least from the kind of seats and the kind of trends we are getting. It seems unlikely we are going to overcome them. And it seems like a massive verdict in favor of the BJP. I can attribute this kind of outcome, for us, it's a gruesome sort of outcome of the exit polls that turned into a reality, is that they ran a very, very highly high-pitched campaign, and very often, in fact, almost always, a polarizing campaign. I mean, every single weapon from the arsenal of Hindutva was invoked to run this campaign. And, this is no disrespect to any kind of the people of their verdict, but it seemed to have found traction. Whenever you play with sentiments, it does find traction. So it seemed to have worked there at this particular point in time. The Congress campaign was a positive one, but it didn't seem to get the message across, despite the high levels of disenchantment and resentment on the ground in Gujarat. There is the Vikas. What the BJP keeps talking about is the model of development is a distorted model of development, because if you see the figures of multi-dimensional poverty, 40%. Gujarat, may not probably agree with you, because now we are seeing over 50% of the constituencies, the BJP has a very clear lead. And for you to say that there is a resentment and disenchantment against BJP in Gujarat today is not the right day, probably. I will come back to you, but and I started with Himachal, we went to Gujarat, but let's listen into some important reactions coming in before I go to Rakesh Goswami. ऐसा है, आज का दिन जश्न का दिन होगा। 2 प्रदेशों में भाजपा की सरकार फिर से दोहराई जाएगी। जब कहा करते थे कि रिवॉल्विंग डोर वाली राजनीति होती है, उत्तराखंड के लिए कहते थे, मणिपुर के लिए कहते थे, उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे, इस तरीके की राजनीति को हमने बदल दिया है। आज गुजरात में एक रिकॉर्ड जीत होगी, रिकॉर्ड मार्जिन से होगी, रिकॉर्ड सीटों पे होगी, और हिमाचल में भी हमारी सरकार फिर बनेगी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि आप अभी आए हैं काउंटिंग सेंटर में, कैसे आशाएं हैं आज के लिए? हमारी आशाएं नहीं है, पूरे गुजरात की आशाएं है कि ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात तय होने वाला है। ये चुनाव आने वाले फ्यूचर को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। और इसी कारण मेरा ये मानना है कि परिणाम 135 से 145 सीटों के साथ आएगा और एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस टाइम पहली बार एक एजिटेटर की तरह घुसे थे, अभी इस टाइम आप एक पॉलिटिशियन की तरह कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी से। पहले आप कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस, आप इसमें आपका क्या मानने हैं? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब से वो राजनेता ही होता है, क्योंकि पोलियो का टीका ही शुरू होता है ना तब से। तो एजिटेशन हुआ, फिर राजनीतिक पार्टी आई, लेकिन बेसिकली जो एजेंडा है वो है पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस करता है वो सफल होता है। Yeah. So, yes, there has been a lot of shifting of loyalties of the youth leaders, and we will talk about that as well. I will come to Mr. Goswami, but first, Huda Zariwala, about the AAP factor. Now the buzz is that, AAP was overstated, the figures were exaggerated in Gujarat, you were not able to cover the kind of territory you were hoping to, but yet there is other side that says, well, this is a respectable figure coming from zero. What do you think about AAP's performance in Gujarat? Good morning. Thank you for having me on the show. Such an exciting day, a nervous day. Aam Aadmi Party is certainly happy about the fact that we have finally managed to create inroads in a state like BJP, which is traditionally, considered the gur of Prime Minister Modi ji, of BJP. So Aam Aadmi Party has definitely managed to, create that space in the hearts and minds of the people. Of course, the people's mandate has to be accepted with complete humility. But that being said, we are in a position to actually say that Aam Aadmi Party is truly a national party now, considering the, the monumental win, if I may say, with the MPD election yesterday, and now, finally creating
a significant presence in Gujarat, where wherein BJP would consider only the Congress as their main opposition. Now they have the Aam Aadmi Party to actually be on the lookout for. So definitely this is a huge win for Aam Aadmi Party. We are extremely happy with the kind of results and successes that we have got. Yes, obviously a better win, a better seat share could have been accepted. But that being said, this is huge for Aam Aadmi Party. I mean, a state like Gujarat, which is definitely far away from the likes of Delhi or Punjab, the north of India, the western part of India votes on a completely different pattern. And also another significant point to notice is that the tribal population, the Adivasi population, has actually placed their faith on Aam Aadmi Party, which was because Aam Aadmi Party is usually seen as an urban party of sorts. So this again is something to take into due cognizance. Okay, Huda Zariwala, I take your point. You're saying we've got a foot in the state of Gujarat, which is of course the Prime Minister's home turf. Rakesh ji, थोड़ा सा तो वो हुआ ही है आम आदमी पार्टी के वजह से, in the sense that BJP was, it seemed at least, that initially it didn't want to take a chance with Aam Aadmi Party in the fray, coming from the fact that they had massive victories in Delhi and in Punjab. Is that the reason why the BJP went all out in their campaign? And now that what Ms. Zariwala is saying, that we've got our foot in, maybe in the next election, they might turn out to be the major challenger, Rakesh Goswami. It's a beginner's luck. And always the opposition is always a Congress party. So our fight is always with the Congress, not with the other parties. And Congress, the grand old party, going to be a grand old NGO now, henceforth in Gujarat. And what Gujarat has endorsed for, it is development. Gujarat has endorsed for love for the PM. Gujarat has endorsed for the safety. This is all you can see on your dashboard. How people have voted for BJP. This is a landslide victory for us. We have broke all the records of the past. What else we want? And this is the biggest day for everybody in the BJP Karyalaya. इसकी तरफ से जो reactions है वो भी सुन लेते हैं. Let's listen in to the first reactions coming in from the Congress party, and I'll go back to the discussion. कितनी सीट वो आंकड़ा कहना मैं नहीं समझता हूं कि ठीक होगा, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है. अब तो हम सबको, आपको भी, हमको भी इंतजार करना होगा कि आखिर में परिणाम किस तरह से आते हैं. रहा सवाल कि हमारा भरोसा क्या है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, कांग्रेस के हक में परिणाम आएंगे. कई प्रांतों में हमारे अच्छे परिणाम आए, कहीं पर हमारे अच्छे परिणाम नहीं भी आए. हमारा ये प्रयास है कि जहां अच्छे परिणाम आए वहां और स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है. जहां परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए या अच्छे नहीं आए, वहां पर हम हमारा संगठन कैसा बेहतर कर सकते हैं, लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसा बनाकर रख सकते हैं, उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं. अभी देखो, मत गिनती चालू है और हम पहले से ही आशावादी हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है. जिस तरह से हमने लोगों के मुद्दे गुजरात में उठाए, महंगाई का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, व्यापारी का मुद्दा था, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा था, ये सब मुद्दे को लेके कांग्रेस ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है. नतीजे चालू हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. रोड मैप, ये तमाम चीजों में आप सबसे आगे रहे हैं. राजस्थान में यात्रा चल रही है, सरकार है यहाँ पर. कहा जा रहा है कि सबसे ऐतिहासिक भीड़ और लोगों का हुजूम जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है. आपको देख रही है और ये अपेक्षा थी, उससे कहीं बेहतर हम लोग को समर्थन मिल रहा है और सभी राज्यों में एक से एक बढ़कर समर्थन मिल रहा है. लेकिन आज दो राज्यों के नतीजे भी सामने आने हैं, गुजरात और हिमाचल के. अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, हिमाचल में बीजेपी कभी आगे कभी कांग्रेस आगे, इस तरह की स्थिति हुई. चुनावी हमारी भारत जोड़ो यात्रा ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन को वोटों में तोड़ना उचित नहीं है. ये देश की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है.
लेकिन आपने भी कई चुनाव देखे हैं, इन दोनों चुनाव के नतीजों को किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि एक उम्मीद कांग्रेस को थी कि हिमाचल में सरकार बन सकती, लेकिन वहां भी बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक किया, मसल, मनी, मशीन, ये 3 हथियारों से वे नतीजे अपने पक्ष में करते हैं। बेशुमार पैसा। But Mr. Digvijay Singh was speaking to my colleague Ranjita, talking about the Congress party's prospects. Anshul Abhijit, given the fact that, so much is being said about how the party ran a lackluster campaign in Gujarat, it did not really put the kind of, it wasn't really invested in the state, coming from a figure of 77, where it had a 42% vote share in the last election. The party could have built on those gains. Are you upset that that didn't happen in Gujarat? A lackluster campaign. It was a different kind of campaign. It was a micro strategy that was at work, going from house to house, mohalla meetings, there were nukkad sabhas. We weren't screaming and shouting from the rooftops. It wasn't that kind of campaign. Okay. It didn't pay dividends. Yes, I understand it. It didn't. I mean, we have to reimagine our politics in the state going from here. But the other point that you made, the point about resentment on the ground and the paradox that exists between resentment and voting patterns, as you well know, there can be a non-linear relationship between resentment and the way votes go. It doesn't have to follow an exactly linear pattern, a kind of a causal pattern. It doesn't exist that way in many, many elections. It might happen, but in the case of Gujarat, there were other sentiments that overtook and surmounted the kind of resentment that we saw on the ground, and it was palpable. Because after the pandemic, the mismanagement of the pandemic, the indictment by the High Court, I mean, I can cite a number of things. By the indictment by the center of the state government. Why was the state government removed? They were so happy about efficient administration. Why were 30 MLAs or 40 MLAs of the BJP replaced? Why were turncoats from the Congress party chosen as candidates for the BJP? I mean, these are questions which you also have to answer, which, gives to the fact that, yes, there was particular kind of an indictment of the management of the state, and therefore that was there on the ground. It didn't translate into votes because of a number of other reasons, which was there a highly high-pitched, polarizing campaign, is the point I'm trying to make. Okay, fair point. Sandeep Ghosh, do you agree, do you buy that? The fact that Anshul Abhijit here is making a point saying there was resentment, but certain other factors overpowered it? In a way, in a very simplistic way, of course. I mean, everyone can see that with the presence of AAP, the anti-BJP vote have split even in constituencies where there's a substantial Muslim vote. From what I last checked, I could see that BJP has got an advantage and won those seats as well, which by any calculation one can understand that it is because of the vote split, anti-BJP vote split between AAP and Congress. Sandeep Ghosh. See, if you were to say, the vote split theory, if it holds, would have helped if BJP had not increased its vote share. And its vote share had either remained static or fallen, and there was a vote split. BJP, as you see, is getting historically record high of vote share as well as number of seats. So I don't think that vote split theory really holds. I'm just saying that what it does have as its vote bank, it's already there. In addition, the fact that it has got these kind of figures is being attributed to the fact that the presence of AAP has dented Congress's votes. It may have, but despite that, it has not, there's additional votes, BJP, incremental votes BJP has got. Congress got last time 41% or so. So if the, that vote was simply split and BJP remained static, you could have said that. But what has happened today is BJP's vote share has also gone up from its earlier 46, 47%. So where did those incremental votes come from? It came from, that's the positive voting is how I would see. Okay. And despite, I agree with Anshul, there has to be after 27 years, certain amount of resentment, certain amount of anti-incumbency and everything may not have been as hunky-dory on the ground level. But then people look at, yes, I have my problems, but who's there? Who can solve my problems better? And that's where the vote of confidence for Modi comes in. They say if Modi is the prime minister in